भी स्टार्ट कर दिया, फिर बस गेम मिल जाए आज हमें। मिल जाएगा। अरे बेंजाउर में सुबह ईयू में खेल रहे थे भाई, ईयू में बॉट आ रहे थे ऑफ ऑल प्लेसेस। यू में सुबह नहीं आने चाहिए। आने नहीं चाहिए थे और आ रहे में फर्क है ना। यस। क्या यू बोलता में है बहुत बेंजा? अच्छा खेल वही रहे तो। थे। उफ रिपिंग बॉयज। राउटिंग उनका भी पिंग खराब ही है। यस बेंजा गू। ओ भाई 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 भाई। हाँ भाई रेंजर, चल निकल यहाँ से। क्या था वो? नहीं नहीं, मैं रेंजर को मार के आया हूँ भाई, ऐसे थोड़ी है। मैं था वो। मेरे को कौन उड़ाया? तेरे को मैंने उड़ाया, उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने रेंजर को नहीं उड़ाया। भाई कौन क्या ही चोरी कर रहा है नसीब है। मेरा? भाई यार क्या हो रहा है यार, और बिल्कुल ना गलत बेंजा। टाइम पे बूस्ट खत्म हुआ। ओ नहीं ओ नहीं 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 नहीं। बहुत बढ़िया। पीछे गए। नाइस। नो। भाई कैसे लेके गया ये? दिस हाइपिंग शिट दो। ये हटाया कैसे हो? अरे वो पिंग पिंग डिफरेंस हुआ है और कुछ नहीं है। पीछे जा रही है क्या? नहीं ऊपर ही है। वही देखा मैंने अभी। ओके। हटी नहीं हटी, हट गए ना। जा 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 जा, जा। भाई उड़ा ही दिया मेरे को। ब्रो साइड वाला, तेरा साइड वाला था ना जो असली गोली था। देख रहा है ब्रो कितनी प्यारी सेंटर करके दी मैंने। यस। Now we're by. भाई इजी लैग। ओ इसने मस्त भाई। घुमाया। भाई लोग ये देख यही gravity वाला है देख लेते तेरा हैं वाला। भाई मेरी गाड़ी खा बेंजा गया वाला ये, ये। भाई मेरी गाड़ी खा गया ये। मी नॉट इवन किडिंग, ये मेरी गाड़ी खा गया भाई। मेरे को पता नहीं था दिस ब्लैक होल एक्चुअली वर्क्स। अभी इतना महंगा है ओके। वो। ओ आई मिस्ड। बेंजा और नहीं। बेंजा कुत्ते। यार मैं क्लियर करने का ट्राई कर रहा था तो बीच में आ गया। हट, घंटे का क्लियर कर रहा था तू। मैं गोल के ऊपर मार के निकाल देता। इसकी माँ की। वो बॉल छोड़ के दीवार इसका। जा बेंजा मार। सॉरी अमंग। इट्स ओके। ये जा 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 जा, जा। इसने हटा दिया पहले। यार ये गलत उछा लिया तुमने। ओके सागर तेरा है। नहीं बेंजा कुत्ते सीधा आ भी नहीं पा रहे।
मैं टच किया बॉल को, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ, सीधा आ भी नहीं पा रहे और बस बॉल आई छूनी है। शॉट, आई शॉट। हटाई मैंने बॉल, सीधी तूने जा रही है अब। भाई मेरे को बंदा मारने आया था, मैंने बंदे को जुक कर दिया। दैट बॉय गॉट जुक। सो भाई दोनों रह गए बंदा। क्या अरे यार मेरे को लगा ही था मेरे पास बूस्ट कम है और इसने वो कांड कर दिया। यार ये बंदा ना इनका लैग हो गया है मेरे सामने, नहीं तो मैं कर देता ये। भाई वो बंदा बच कैसे गया, खींचा कैसे नहीं उसके अंदर। कोई नहीं सागर, इट्स वार्म अप गेम्स। वो अच्छा शिट पीछे निकल हैपेंस। गए वो दोनों। मैं ऑनलाइन नहीं दिखा, नहीं तो ऑनलाइन नहीं दिख रहा, तेरा गेम अटका हुआ है। निकल साला। ए तीनों मिस कर दे। नहीं मैंने टच करी बट वो बॉल थोड़ी सी ज्यादा एकदम राइट साइड को थी। एंड आई मेस्ड अप फक। एंड यू स्कोर नहीं गोल। जा तो रही था ब्रो, मैंने थोड़ा नहीं एंगल नहीं बदल नहीं दिया। नहीं, जा मैं रहा नहीं था सेव नहीं कर बेंजा, रहा था। बेंजा जा मैं रहा था, सेव भी चुप कर रहा रहे, था। चुप रहे। देख जा रहा था, देख कौन देख से तेरे एंगल पीछे, से जा रहा था? जा रहा था, तेरे पीछे लेफ्ट मैं भी वॉल लग के जाता है यार, सेव तुम करता ऐसे हूँ। करते हो यार। नहीं नहीं हेलो ब्रो। नहीं, दो तो हमने ही ऑन गोल दिए उनको। ठीक है भाई। इजी भाई, ले गया भाई। ये लेजी बॉल सेटअप करके दिया था बट सागर हकते हुए। साले मैंने कुछ नहीं आगा बॉल पे, सामने बंदे ने पकड़ी है बॉल, पता है नहीं पकड़ करनी है। सेंटर है। वाओ। देख बेंदा, जो एक गोल है ना वो भी हम का है, तू चुपचाप बैठे रहे। ठीक है ओके। वार्म अप गेम था ना, वार्म अप गेम की तरह रहे तू। यस। नहीं जा रहा था, नाइस गोल। जा रहा था। नहीं जा रहा कैसा था। शास। हाँ प्रतिम याद है ब्रो मेरे को, बीट बॉक्स करता है तू लौंडे, याद है मेरे को। बंदा बॉल की जगह बंदा मार के आ गया क्या। बहुत ज्यादा तेज है, ये नहीं होता। अरे जाओ जाओ जाओ, तुम लोग का है। बंदा ने जो मारा है। बंदा भी लाइक, रुक तू आगे ही जा, यहाँ पे क्या करेगा ब्रो। सिंगल, मैं पता है वही सोचूं, मैं सिंगल जंप में इतना ऊपर कैसे आ गया, पीछे से पता चला बेंजा भैया है। ओह ये मैंने मिस किया क्या लैग है भाई, ये गंदा लैग क्या था सब हो भाई। रही है, ये क्या सब हो रही है। भाई गोल जा रहा अरे है। यार मेरे को नहीं रहना गया, चाहिए नहीं था। गया, नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया भाई। आउट। भाई मेरे सर के ऊपर से बॉल भाई लेके हाउ। कुत्ता। मेरी हाइट छोटी है, फायदा उठा रहे हैं लोग। हेलो वाओ। नाइस। व्हाट इज दिस ये शिट पावरफुल कैसे लगता? सीधा गोल, थोड़ी थोड़ी सी तो मेहनत करो ब्रो। क्या ही चल रहा है भाई, लैग अलग ही खींच रहा है भाई लैग। ठीक है भाई, लैग लैग हेल्प भी कर सकता है वही। लैग हेल्प। ये क्या सवाल लगाया तूने। मेरी टाइम ही है, मेरा देख मेरी पिंग टाइम ही है। बराबर है। राउटिंग का इश्यू है। बेंजा का मेरे से 17 पिंग, वो 10 पिंग ही ज्यादा आ रहा है, बेंजा 17 भी नहीं आ रहा। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ी ना होता है मेरे टाइम में, तो इतना ही कभी होता है।
होता है ब्रो, होता है, मैंने तो सब देख लिया ब्रो। ये फोर्टनाइट का सर्वर है, जबरदस्ती खिलाया जा रहा है इसे। हाँ? सॉरी मैं वही सॉरी देख रहा हूँ क्या हो रहा सॉरी, है, मैं वही मैं देख रहा हटा हूँ। रहा था, मैं हटा रहा था, बट मैं जा लैगो रहा के था अंदर आ इसलिए। गई है, लैगो के अंदर आ गई, नहीं कितने नहीं, मारी मेरा तो अंदर ही। पिंग ही बराबर है, नहीं नहीं, मेरे पास भले भले ऑप्शन नहीं था। इस गेम में वो भी होता है ना, क्या कहते हैं, पिंग नॉर्मल दिखता है बट हरकतें होती हैं, देखा मैंने होते हुए, तो आई हैव नो इश्यूज। हेलो, व्हाट इज दिस बिहेवियर? जा पीछे बॉल। भाई बंदे ने कर लिया मेरे को। यार सागर धक्का बेंजो, मत दे। बेंजो तू धक्का कुत्ते, दिया तू मेरे को, आया, तू तू धक्का आया, दिया, तू आया, तू तू धक्का दिया आया, मेरे तू को, पीछे से उड़ तू के आया धक्का मेरे पे। दिया मेरे। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे आगे था। तू देखियो अभी। सागर। बॉल मारना भी होता है। नहीं नहीं, बेंजो तो मेरे से भिड़ने आ रहा है ना। कोई बीटने नहीं आ रहा है भाई ओ तेरे से। ओपना ओपन है। ये अब देखो उनका ओपन है। क्या बेंजा, बॉल पूरी लेके जाना वहां तक। मैं बंदे को हटा रहा हूँ। नहीं प्रतिम ब्रो, नहीं बोलता मैं ऐसे, चिंता ना कर तू। अमोक। पास दे रहा है। यप। भाई पीछे वाह, क्यों? नो। मैं पीछे नहीं दिया था यार, मैं अंदर डाल रहा था पर एंगल गलत लग गया। बॉल पीछे जा रही है, नाइस। उसने और जोर से कोई नहीं कोई नहीं, गलत एंगल पे जा रही थी यार, बॉल दीवार छोड़ जाती है ना तो इशू हो जाता है। हट 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 हट। चल, नहीं आई, अच्छा ओवर, मैंने छुई भी नहीं। अरे छोड़ देता। अरे मेरे को अल्लाह लगा मेरे लिए निकालने में स्ट्रेट था। ज्यादा। अच्छा, जा बे, ओ यार बॉल, इतनी बॉल बाउंस हो जाती है ना। अबे यार ये लोग की गाड़ी क्यों बीच में आती है, मारते हो। है ना वो, मैं भी ये सेंटर किया सोचता मैंने। हूँ, सीधे शॉट क्यों नहीं जाने देते मेरा। अरे यार बॉल ना एकदम ही आ गए, मैं जब मारता तो भी रुक जाते। यार ये बंदा वापस आ गया। नॉइस अमो। आउच। ओह व्हाट अ नॉइस गोल। कूल। गोल। नाइस गोल ब्रो, नाइस ये गोल। बंदे ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, फूट गया लेकिन ब्लॉक कर दिया। एंड बॉल हवा में उड़ते हुए लग कर जाते देखते हुए। नाइस। क्या ही कर सकते हैं, लैग लैग है वो भाई, कुछ भी होता है भाई। जा। ओ कहीं नहीं आ गया, बंदे ने काउंटर एक्ट कर दिया। ओ ये बंदा उड़ने लगा। ठीक है भाई, गलती मार रहा है, भाई उड़ने दे मेरे एयरप्लेन को, क्या है एयरप्लेन मोड कर रहा है। ब्रो, बट ये तो नो फ्लाई जोन था। हेलो हेलो, मैं ज्यादा, मैं उड़ गया हूँ फ्रेंड्स। अभी इसे धक्का मार दिया मेरे को। कुत्ता कुत्ता। क्या नाइस मिस कर ट्राई। रहा हूँ मैं भी। वाह, पीछे गई। बराबर है बराबर है। अरे मतलब वही, मैंने पीछे गई से अच्छा मतलब था गोल की तरफ गई नीचे। गोल। ओके। बेंजा को मार मार के लेके गया मैं गोल करने। बेंजा जाता हुआ नहीं दिख रहा था मेरे को। मैच छोड़ दिया भाई ने। मैच छोड़ दिया। सब गए। भाई 7 सेकंड फॉरफिट किया है। 7 सेकंड। अब हैकर को खिलाओगे तो और क्या होगा। लो भाई हैकर आ गया, भाई हैकर आ गया। हैकर आ गए ब्रोस। ए वीरू तू बैठ, तू अभी तेरे को इनवाइट नहीं कर रहा मैं, तू बैठ। तो तू बैठा नहीं बैठ। में खेल रहा है।
हाँ तो मतलब यहीं पे बैठ के खेल, डिस्कॉर्ड म्यूट करना है म्यूट कर ले, बट यहीं पे बैठ, नहीं आज देख, कस्टम खेलेंगे, बहुत हो गया। मैंने दोनों, ओए अमुक तेरा तो कनेक्ट हो रहा था ना, एशिया ईस्ट, ओ ये मिडिल ईस्ट। मेरा, हाँ मेरे में ऐसा है, वो राउटिंग का इशू है बस। चल देखते हैं अभी कितना आ रहा है। अरे यूरोप लगा के भी देखते ऐसा ही होगा अभी, मतलब मेरी टाइम पे भी वही होता है कि कभी हम मेरा पिंग गलत बेंजा होता और है, मैं कभी तेरा। यूरोप खेल, बेंजा मैं वीरू सुबह यूरोप खेल रहे थे, सही चल रहा था। वीरू का भाई मिडिल यूरोप, ईस्ट सबसे से सही रहा बेटर, था, वन मिडिल वन मिडिल 31 पिंग दे रहा था। मिडिल ईस्ट पे ज्यादा पिंग आ रहा था यूरोप से। भाई यूरोप पे 131 पिंग दे रहा था, याद है? हाँ हाँ, हाँ। तेरा उतना ही देगा, तू वहां पे रहता ना, ये तो गुजरात। तो तू क्या इंडिया के बाहर रहता है? अरे भाई मैं दिल्ली रहता हूँ, पनौती है। ये पनौती पार्ट 2 रख दो भाई इसका नाम कोई, मेरे अलावा दोनों का पिंग बर्बाद आ रहा है। जी जी वीरू। अबे हमो एक काम करना, तेरे कंट्रोल्स मतलब क्या कैमरा सेटिंग्स बंद ना, कितने मेरे डिफॉल्ट है बस, एफओवी बढ़ा है मैंने, फुल किया है। कोई फुल है? हेलो? हाँ हाँ सब हाँ। एफओवी फुल में खेलते हैं ये गेम। अबे मेरे को साले भी, इसका मतलब भी पता है तेरे को? हाँ बहुत अबे वाइड दिखता पता है भी है गेम। तो ज्यादा दिखता है, भाई। देखो अच्छा है। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बॉल उड़ती हुई आई है फ्रेंड। क्योंकि भी मैं रीड नहीं कर पा रहा बॉल ठीक से, मैं पता है। बेंजा की वजह पेपर। से बॉल उड़ती हुई आई है फ्रेंड। हेलो बेंजा, थैंक्स। या वेलकम। इजी ट्रेटर। नहीं नहीं नहीं, ट्रेटर ने बॉल उसको ही लगाया लास्ट टच। नहीं नहीं, उसको नहीं लगा है, ये तेरी सोच को लगा है। तो भाई खुद ये से क्या ही भी मार उसने रहा है देखा ब्रो। है। अमुक टेक बूस्ट। भाई मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब सब 10 टाइम्स फास्ट भाई हो रहा है बंदा मेरे मेरे को स्क्रीन मार पे। रहा है भाई। You only playing to kill me. ओए मैं तो क्या हो रहा है? मैं गोल मारने वाला था, मैंने इसलिए हटा दिया खुद को रास्ते से, क्योंकि बॉल एकदम से थोड़ा सा और स्पीड पकड़ गई थी। जा बिंदा। ओ अमुक था पीछे। अबे स्विफ्टनेस से क्या होता है? पता नहीं, पर मैं कुछ किया नहीं उधर। एपिक सेव। अबे क्या हुआ भाई? मेरे को इजी लगा लैग मेरे साथ ही भाई, हुआ। इजी लैग भाई। मेरे को लगा सिर्फ मेरे स्क्रीन पे हुआ। भाई लैग दे गया भाई इनको, सीधा गोल था मेरा। वो क्या कर रहा है? बे यार। यार ज्यादा टेढ़ा एंगल हो गया। यार मेरा पिंग तो सही आ रहा है, सर्वर ही खराब है। हेलो रोक दे। चल ठीक है, उसने लास्ट सेकंड में छू दिया ना, उसका ही नाम आएगा। अमोक से लगी क्या बॉल कि उसने चढ़ के मारा था? अमोक से मुझे लगा था पता फिर नहीं चल इसने। रहा है, मुझे कुछ समझा नहीं वहाँ पे क्या हुआ। लीव कर मैं बस देंगे चला ये, रहा हूँ। लीव कर देंगे ये वाला। यूरोप पे हाँ चलेगा सीधे। चलो। अमोक तो हाँ। यूरोप खेलता है, चलो। मेरा R6 यूरोप R6 का, में खेलता है। नहीं नहीं, पर ट्राई कर सकते ना क्या आता है। रास्ते में पकड़ लिया साले ने। मेरे में सब फास्ट। अच्छा ये दिखा ही नहीं मेरे को। हाँ मेरे को भी नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा तुमको? वो बंदा। बंदा। ठीक है बंदा। नाइस शॉट। नोइस। भाई उनके तो बंदों ने गेम छोड़ दिया।
क्या हो गया भाई? आगे। इतना तो अभी तो जीत रहे हैं वो लोग। क्या हो गया? कैसे लीव कर गए एक गोल पे ही? क्या पता। ओके शास, वही जाओ आगे। जा रहे थे ब्रो, वही तो हम बिग ब्रेन कर रहे थे कि अब हम सीधे बंदा ही मार के आएंगे सामने। जा बिंदा 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 उस, अरे यार बॉल चोरी कर लिया मुंह के सामने से। सागर नहीं, भाई सागर नहीं। मैंने नहीं मारा, उस बंदे ने मारा है। नाइस, बट यू स्टिल मिस्ड। वो थोड़ा जल्द बहुत पीछे से आया था, पावर ज्यादा था। डाल दे। अरे यार। दोबारा आई क्या? दोबारा नहीं आई? दोनों टॉप। ने मिस किया है नहीं भाई। मैंने टच किया, बट वही मैं ऑलरेडी इसके मिस पे बेस्ड ये है। ले, ये ले, सेंटर है। नहीं बढ़िया नहीं बॉल है वो भी। पहुंचेगी नहीं। नहीं नहीं पहुंचेगी नहीं, रख ली जाएगी रास्ते में। पीछे जा रहा है मैं। आफ्टर स्ट्रीम मेरा डिस्कॉर्ड मैसेज देख लेना। क्यों भाई, क्या हो गया? हेलो, तुम्हारा डिस्कॉर्ड मैसेज देखने लायक क्या हो गया? मुबारक हो सिड्स। ओए कैसे गया ये? ये लाइक होते हुए आ गया। सिड्स क्या मैं हाँ। ताऊ बनने वाला हूँ क्या सिड? हाँ सिड्स, बधाई हो। बता दे भाई सिड्स। भाई मैं तो एआई मुंबई लाइक में ही क्यों रहता कर हूँ, रहा है? पार्टी चाहिए। मैं उसको 0 पिंग। सिड्स होगा क्या उससे? जरा ये भी बता दो। नाइस हम। थैंक यू। यार रह गया थोड़े से ओए में। निकल कैसे गया? ये चलो वैसे भी लीव करना है सर। अपन ये हैकर के साथ नहीं खेल रहे। अरे हैकर को अभी बुलाते हैं, अभी बंदे हो जाए ना 5-6 तो फिर सीधे कस्टम में बुलाते हैं हैकर को अपने। कन्नू प्रो कपिंग करना। कर ले, मेरे को कोई इशू थोड़ी है करने से। यूरोप के लिए कौन सा है? यूरोप, खाली यूरोप ना? यूरोप हाँ। यूरोप यूरोप। 3v3। साले हैकर तू है और मेरे को बोलता है हैकर। ठीक है भाई, हो गया मेरा अच्छा। ये मैं नाम नहीं लिया बट तू हैकर खुद को बुला लिया, ठीक है। मैं ही बैठा हूँ, ठीक है, और कोई नहीं है। है ना? और कौन है? प्रीतम है, ठीक है। बस बस हो गई बात, कंफर्म हो गई। अच्छा गेम में कौन बैठा है वो बोल ना। गेम में हम लोग। चटको बे, हो गया तुम्हारा। ये सेम जापान जितना ही पिंग है, सही है। जापान जितना। जापान से कम आ रही है हम लोग, एक बार दोबारा थे। मेरा उतना ही आता है जापान से। क्या मजाक कर रहे भाई थे? उड़ रहा है, जापान भाई उड़ से रहा है, भाई उड़ रहा है। भाई तू किधर कैसे? का है? अमोक। मुंबई। आमची मुंबई। नाइस। कोई ना। हेलो, आऊंगा तो। प्लीज स्टॉप बीटिंग मी। सबसे हेलो, बड़े लोगों को बनौती आ बुलाने गई है के खाना लिए। खा के? यस भैया, हम खाना खा के आ गए भैया। बड़े क्या लोगों पिंगे को सामने बुलाता वालों हूँ। का? ठीक ठाक है। पर ईयू ट्रायहार्ड है बहुत। अबे यूके और यूएस बैड है भाई, बहुत गंदाला। यूएस ट्रायहार्ड डम्ब नहीं है भाई। यूएस डम्ब है। भाई यूएस भाई पर ट्रायहार्ड नहीं है। यूके में तुम देख हायर रैंक पे जाएगा ना तभी पता चलेगा। फट भाई मेरे अबे को इसने पता है। उड़े यार, मैं गोली डाल उड़ते हैं दूंगा। भाई, जमीन पे कब बेंजा रहते हैं यार, मुझे तू पता नहीं है। पागल है यार। इतने घटिया क्या शॉट किया मार मैंने? आता है ना तू। तू बॉल कॉल उड़ाई कर साले ना। तूने। बॉल उड़ा दी तूने। अबे बेंजा एक बात बता, कॉल करने की बात कर रहा है तू, ठीक है? अब के तालुक में फोन करने बैठेगा तुमको। अरे इसने यार। मेरे को फोन किया। ए भाई 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 भाई। नहीं नहीं अभी नहीं जा रहा, अभी नहीं जा रहा, चिंता ना करो भाई, अब जा रही है। और मैं बहुत जल्दी मोमेंटम लेके आ गया।
हेलो गोल और ये बढ़िया गोल सागर। बंदा Easy मारते हुए assist। गोल करते हुए। बेन्ना ने कितनी देर पहले बॉल छीनी थी और तब भी कह रहा है इसे assist ठीक है भाई। नाइस शॉट। हेलो आ गया, कन्नू भी आ गया। हेलो कन्नू, हेलो हेलो ये गेम के बाद कस्टम्स। लेट्स गो। बंदर को पूछता हूँ। जाने में I think तो अपन 8 हो रोकना, गए। जब वो आ जाएगा यहाँ पे तब रोकेगा क्या? कर फाइनल लिया, में कर लिया, रोक सुन- लिया, सुन, सब कर लिया। जिसको भी पूछना था बंदर से जल्दी पूछ लो। Noise। 5M चालू करके बैठा है वो, स्ट्रीम करने भाग जाएगा 5M नहीं बता नहीं नहीं भागेगा, नहीं भागेगा। पिछले 2 घंटे से 5M पे ही है। पिछले दो मेरे को पता है। 5M पे ही है। ठीक है भाई। अरे उसका कॉल आया था अभी। कॉल करके गालियाँ देता हूँ। 4v4 खेल रहे हो तुम? नहीं नहीं 3v3 3v3 ऑनलाइन। उप्स 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 उप्स, मैंने भाई गलती। पता नहीं, सबसे ज्यादा तो ये एडवर्टाइजमेंट जब किसी को कॉल करते हैं तभी आती है। भाई चला गया क्या? रोक दिया मैंने। नाइस ट्राई सागर। रोक दिया ब्रो, रुक गया ब्रो। डेव्स तू क्या बात कर रहा है? नहीं नहीं, इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। दोबारा खुल गया क्या? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। Nope, you're not getting that one. आगे पीछे गई वो। निकलो। गोल की तरफ जा रही है, प्लीज पकड़ लो रास्ते में और गोल कर दो। वो टच करेगा। अबे ऊपर उड़ा दिया इसने। भाई गोल हो गया, भाई गोल हो गया, भाई गोल हो ऊपर गया। कैसे उड़ गई? वो नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। नाइस बेंजा। सागर और ये भी प्रो हो गए हैं। भाई मैं हट गया, बॉल नहीं हटी। भाई यार मेरे नाम का गोल है भाई, ठीक है भाई। भाई जबरदस्ती मेरे नाम पे गोल डाला गया भाई, तू देख अभी। ठीक है भाई सागर। सामने नहीं से नहीं, कुछ उसको ले मिल गया, भाई, उसको मिल गया। तेरे को टच नहीं हुआ, तेरे को टच नहीं हुआ। सागर भैया हम क्या है, आप सुनते ही नहीं भैया। भाई ये गेम तो हमेशा से मेरे खिलाफ प्लानिंग करते हैं ना कुत्ते। सागर भैया गेम चाहता है बॉल कैम खेलो, आप खेलते ही नहीं। ब्रो मेरे को मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से नहीं खेल पाता है मैं। देश भैया आपने 5 की ले लिया हूँ मैं। जिस भैया क्या क्या चीजें लेते हैं मुंह में, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। माय बैड। हेलो हेलो सागर भैया, हाँ? आप चाहते हो मैं गटर से भी गंदा कर दूं आपकी चैट को? क्यों दिखा रहे हो कि तुम वहां से आए हो? वो मेरे को दिखाने क्या, जब है ही सच। अबे वो वीडियो एडिट कर रहा है, वो नहीं आएगा। भाई वेट भाई व्हाट? नाइस गो। कैसे? देखा मैंने, नाइस गो ब्रो। बॉल कैंप पे देखा मैंने। बेंजा ने बंदे को सीधे बॉल दे दी कि तू एक काम कर, तू मार ले। इट्स योर। देखा मैंने भाई। नाइस असिस्ट यार। सही ना? भाई पहले तो ये पावर स्लाइड की बहुत नाटक है। मैं यहाँ पे दूसरा बंदा रोक रहा हूँ, तुमने सामने वाले को ही गोल दे दिया। It's a part of plan. No, why don't you like my stream करना? Why you do I this? did. I already did. लाइव करो, मैं 6 लाइव हो रखे हैं अभी भी, और उस पे वो 30 मेरी थी भाई। I can do screen share. भाई क्या चालू भाई है? क्या वो चालू है ये? बैक टू बैक जा रहे हैं। अभी 2-0 था। ओ ओ ओ ओ। भाई ओ भाई। लॉन्डन ने अपने रॉकेट्स ऑन कर दिए हैं, उड़ रहा है भाई अब वो। नहीं नहीं, बड़े भाई को कंट्रोल दे बेंजा? दिया आपने। हैकर हाँ साले हैक्स बेचे तेरे उसको। अबे कितने में बेचे? 50 कर। मतलब दूसरे देश के लोगों को बेच रहा है, ठीक है भाई। हम इधर क्या मर गए थे? हम वो भी लाइक मैं तो डॉलर में कमाऊंगा। मैं नहीं भाई बेंजा। भाई 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 मैंने गलत बॉल सेट कर दी। हटाओ 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 यार, ये तो ले लेता है भाई हर बारी। भाई एक बार नहीं हुआ कि
मेरा बहुत बहुत हो गया गंदा ये फेल्ड बंदे अटेम्प्ट ये बंदे को दिखेगा। फोड़ने जा रहा हूँ मैं, बहुत हो गया। वो अमुक ने कोशिश करी थी बट साइड से Yes. टच करके बस स्लो कर पाया। हाय सर, रुक गया भाई कोई एक अच्छे कैमरा सेटिंग्स बता दो इसके भाई। भाई। कोई सेटिंग अच्छी नहीं है, मैंने तो देख ली सारी सेटिंग बदल बदल के। अनिकेत ने भी ट्राई कर लिया कि भाई तू वर्ल्ड कैम खेल ले। अब तो पता है मेरे को कि नहीं खेला जा सकता ब्रो। तेरी बॉल बात नहीं कर रहा मैं। बॉल को तो मार ही रहा है, मेरे को भी लेके जा रहा है। हेलो अमक, मैं बॉल को ऊपर से ले जा रहा था बट अब तूने गलत सेट सागर करवा तू- दी भाई। सागर तू बॉल कैम इसलिए नहीं खेलता क्या, तेरे को सीजर होते हैं? हाँ ब्रो, होते हैं। अब तो समझ गया ना। नहीं मैं नहीं समझा। मतलब होते तो देख, तेरी स्ट्रीम देख के हमें भी हैं, बट स्टिल हम देखते हैं ना। वही वही। हाँ ये तो सही बोला भाई, बॉल कैम में मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। बॉल कैम में तेरे को भी नहीं आता है वीरू भाई? ये नहीं आता भाई उतना मेरे को। देखा, वीरू को भी नहीं आता। ठीक है, अब चुपचाप बैठे रहिए पनौती कहीं का। किसने कहा मैं बॉल कैम तो यूज करता हूँ? अरे मैं पनौती को बोल रहा हूँ ब्रो, पनौती को ब्रो, पनौती को बोला लेफ्ट तेरे करना को। है, मैं बॉल लेफ्ट कैम करना यूज है। हाँ करता हूँ हाँ, भाई। आ जाओ लॉबी में आओ, लॉबी में आओ। उसे भी समझ नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है वो। अभी वो कंफ्यूज है। अच्छा मेरे को बोल रहा है। नहीं इनवाइट नहीं, दे सागर। मैं कह रहा हूँ आ जाओ लॉबी आओ सब, तुम्हारे को सागर लेके पिताजी चलता है इनवाइट मैं। दीजिए। शराब को बुला लूं? अरे शराब को इनवाइट नहीं जा रहा। हैं शराब को? अरे शराब को तो मैंने भी ऐड किया था, मेरे को दिखाई नहीं रहा कि वो ऑनलाइन है। बेटा शराब ने तेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी। डैम शराबी। अबे वीरू आना। वीरू आया? कौन है? कौन नहीं अबे आया? ट्रेनिंग में हो पनौती गए। है, पनौती नहीं आई है। अरे मैं भी आ रहा है भाई, मेरे व्हाट को इज इनवाइट दिस नहीं आया। बिहेवियर यार। हेलो भैया, इनवाइट दे दो दोबारा। भैया बेइज्जती कर तुम्हारा नाम नहीं आ रहा है रहे। इसे। मोबाइल को वाइन पिला दी फ्रेंड्स। ठीक है भाई। तुम्हारा नाम पता नहीं कहाँ पे है बट आ नहीं रहा है यहाँ पे। हेलो कन्नू, तू आ किसी को तो नहीं दिखा पा रहा रहा है, क्या? तेरे को दिखा निपटा रहा दूं है। क्या तेरे को? अब देख रहा हूँ, एक सेकंड। मुझे इनवाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है जूस। भैया एक और बार इनवाइट कन्नू भेजो ना कन्नू तेरे प्लीज। को कन्नू तेरे को आ रहा है क्या इनवाइट? और तू ट्रेनिंग में जाके आना बाहर, आ जाएगा। कन्नू यहाँ पे खुद इनवाइट मांग रहे, कन्नू से इनवाइट मांग रहे। ये देखो नशेड़ी। मतलब कन्नू के हो जाए इनवाइट तो भेज दिया इधर भी। ये भैया ये मारुति का कलर चेंज कराया है यार, वो पीने के लिए अच्छी लग रही थी। आ गई हम ओके आ गई। तो भाई उठने कितने वाले हो लोग गए? हैं। अब हमारे को एक बंदा और चाहिए ना कोई। 8 जन है वो इसी में। वीसी में तो 8 जने हैं बट गेम में क्यों नहीं है? कौन नहीं आया? क्योंकि प्रतीम भाई नहीं आए हैं। प्रतीम भाई आप खेलते हो क्या रॉकेट लीग? ना यार, मैं नहीं खेल पाता। नहीं खेल पाते हो? खेल पाते नहीं हो कि खेलते नहीं हो? खेल क्वेश्चन। नहीं पाता हूँ। अरे हम तो भी नहीं कोई खेल नहीं, पाते आ यार जा ब्रो, रॉकेट। बड़े सारे लोग हैं। भाई मैंने इधर और उठने डिव्स ने वाले तो लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही शुरू किया था। विंडोज डाउनलोड नहीं किया है भाई मैंने। अच्छा, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ तभी तो। हाँ ये एक्चुअल चैलेंज है। तब तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वही। तो देख रहा हूँ स्ट्रीम पे भी तो होना चाहिए कोई। चलो कूल, प्राइवेट मैच ही चालू कर रहा हूँ फिर। ए बंदर को बुला ले। अच्छा वो तो वो कर रहा है ना काम एडिट। कर रहे हैं। एडिटिंग। एशिया ऐसी मैरी टाइम है। ये अमूज उसका नूबजिला को पिंग पूछ ले, अच्छा है। नूबजिला को क्या पूछ कर रहा ले। है बंदर, क्या कर रहा है? वो तो मिडिल ईस्ट पे नहीं जा पाएगा, मैरी टाइम ही है। क्या है बोलो भाई, दोनों फिर बोलो। वही लगा, चैट में बोलो। कुछ भी लगा भाई, कुछ भी लगा दो। वही लगा। मोबाइल को वाइन पिला दी फ्रेंड्स। हेलो नाइस इजी नोट 9 और ड्राइंग कर लो तुम उस पे बैठ के। अब S21 सीधा। अरे बेंजा तेरे से नहीं पूछा जा रहा। अनिकेत बोलना सर्वर वो लोकेशन। एशिया या यूरोप बोल रहा है। भाई मेरे को क्यों नहीं दिख रही अनिकेत की चैट? ये क्या स्कैम है? दिस इज एशिया मेनलैंड। भाई अनिकेत मेनलैंड में बहुत घटिया पिंग आएगा। मैं लगा देता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने बोला है तो। मैं आपकी बात मानेगा अनिकेत भैया। आप बस डोनेट करते रहिएगा, ठीक है? ओके बाय। बिया इजी 260 पिंग, क्या ही बात है। ये उठने वाली एक टीम में नहीं होने चाहिए, ठीक है? इजी अनिकेत मेरे को लेके आया। अनिकेत का खुद का पिंग इतना अच्छा आ रहा है ना, क्या ही बताओ। भाई ये
खतरनाक अनिक- सर्वर कौन लगाया है भाई? कौन अनिकेत ने स्टार्ट है। लगाया ब्रो, अनिकेत ने बोला था एशिया मेनलैंड। प्यारा सर्वर है, ओए होए होए होए। मेरे को कृष्णा से ज्यादा पिघा रहा है। हेलो, गाड़ी चलती चलती हैंड ब्रेक मार गई, इसमें निकला जाएगा, इसमें निकला जाएगा फ्रेंड। मेरे को पता था यही होने वाला है ब्रो। भाई कृष्णा हैज डबल पिंग देन मी, कुछ भी। भाई वीरू की तो देखो 844 हो गया है भाई, मतलब लिटरली गवर्नमेंट इस पे धारा हार्ट बना अटैक आ सकती रहा है है। भाई। हेलो 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 हेलो, मैं किधर किधर घूम रहा हूँ पता नहीं। भाई गोल भाई, अच्छा नहीं हुआ, अनिकेत ने रोक लिया भाई था। पैकेट लॉस। भाई 860 भाई, वीरू भाई अबे एक अनिकेत रिकॉर्ड मेरे हो जाए। आसपास से, भाई अनिकेत मेरे आसपास से भी जा रहा है तो मेरी गाड़ी ठुक जा रही है अबे, मतलब कि योर पिंग इज बैड, दैट्स व्हाई। ब्रो मैंने तो पहले ही बोला था कि ये सर्वर खराब है। अरे 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 भाई भाई ठीक है, अरे बॉल की जगह मुझे मत मारो यार, वैसे भी पिंग खराब है। कन्नो पिटना है क्या तूने? तेरे को उठा ले क्या? Hack- भाई hacker कैसे नहीं down, रुकी? भाई कैसे नहीं रुकी वो? hacker down। भाई ठीक है भाई। भाई तू देख एक बारी भाई। साले वेंजा कितने लोगों को एक साथ हैक किया तूने, मुझे बताएगा? ये भाई मेरे में 3 नोटिस आ रही है, पैकेट लॉस, लेटेंसी, हाई लेटेंसी, और अभी आ रही है भाई साहब अरे रुको डिस्कनेक्टेड। भाई, वो खेलना पड़ेगा। इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया भाई। भाई सर्वर बदलते हैं, सर्वर भाई बदलते मैं हैं तो निकला बदल। भाई। भाई वीरू भाई भाई यार, भाग गया, भाई वीरू भाई भाग गया। भाई बॉल मेरे सर पे आके हट गई भाई, ठीक है भाई। भाई बेंजा यूरोप व्हाई यू लगाते डू हैं, दिस, बेंजा व्हाई यू डू यूरोप दिस। लगाते हैं। नहीं बेंजा को वेंजा यूरोप पे सबके पीसी हैक करके खिलाएंगे, बैठा है साला। मैरीटाइम ही खेलेंगे भाई, उस पे 100 हाँ पिंग में ठीक कम है, से कम ठीक ठीक ठाक है। तो चलता है। मैरिटाइम लगाएंगे। लॉबी चले अबे फिर 100 सारे। पिंग आ रहा है तो यूरोप पे को 130 पिंग ही आएगा। अरे नहीं बट बाकी लोगों को और बुरा आता है ना अबे भाई यूरोप। बहुत लैग है, पता नहीं मैं लॉबी जा भी पाऊंगा या नहीं। इसको देखो भाई। फ्रेंड्स गोल, लेट्स डेव गोल चुराने आ अच्छा, जाता हाँ। है। डेव कह रहा हाइपिंग में भी गोल चोरी होता है। अबे हाँ, लॉबी जाना ना। हाँ हाँ, चलो लॉबी लॉबी। कोई नहीं। वैसे भी स्कोर बराबर हो गया, लॉबी चलता है। यही इसीलिए बोला। ठीक है भाई, आ जाओ, बारो कन्नो। हो गया मैं। आएगा कन्नू आज के दिन। अरे आगे वो लोडिंग पे अटका देता है, तुम ऐसा करते हो यार। भाई ये भूल ही क्या गया। भाई कन्नू, क्या यार 30-70 कन्नू, 30-70 ऐसा दो करता GB है, और ऐसे लगा, हरकत है। शायद टाइम से लोड हो जाए तेरा रॉकेट लीग। भाई मैं विदाउट जीपीयू लोड कर दिया। बड़ी जोर से मारा भाई हमने। अमक भाई गेम में तो मार ही रहा है, ऐसे वॉइस चैट में क्यों मार रहा है भाई? ये गलत बात है। सॉरी ये सॉरी। डेव चल मेरी टीम में आ। हेलो, तुम दोनों को एक टीम में नहीं जाना था, इसका मतलब ये नहीं था हेलो अनिकेत हमारी टीम में आजा प्लीज भाई। नहीं मैं अनिकेत को सागर नाइस टीम भैया। यार अमो किधर भाई यूरोप ही खेलता है भाई, बात ही अमो खत्म किधर, भाई। अमो किधर? मैं तो यूरोप खेलने को तैयार हो गया भाई एक एकदम। सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है। मैं यूरोप खेलेगा भाई। ए शकीरा मेरी बॉल कहाँ लेके जा रही है? यूरोप खेलेगा भाई। My hips don't lie and my चलो shots भाई, don't miss. सागर भाई। बट योर चलो। स्किल डू। My skills don't- भाई 250 पिंग आ रहे, क्या करूंगा मैं इसमें? पहले इधर आओ मेरे पास, कौन धक्का मारा? मैं बोला था इज्जत से यूरोप चलते हैं। जिसने मैं- धक्का मारा वो तो चला गया होगा ना, वो क्यों आएगा तुम्हारे पास? वो भी आएगा। नो अनिकेत। नाइस आ गया। वो देखो उड़ के आ रहा है बे। अबे मैं कहाँ पे जाऊँ? तू मेरे टीम में आ। कम टू द ऑरेंज बॉयज। नहीं ऑरेंज में मत जाइए, उसमें अनिकेत है पहले से। अरे रिवर्स पे उड़ना अलाउड नहीं है। अनिकेत भी लाइक नो अभी डजंट पता नहीं मैटर क्या हो रहा है। अबाउट नो अनिकेत। मेरे को पता है तू धीरे से लेके जाएगा और फिर अंदर डाल लेगा, अच्छे से जानता मैं तेरे को। That's what she said. धीरे से ठीक है भाई। हाय वेंजा। निकल साले। हाय डिव्स, तू क्या कर रहा है ब्रो यहाँ पे? वो देख रहा हूँ कौन धक्का मार रहा है बे? कौन कोई धक्का चोरी मार का रहा है? मौका मिल रहा हो तो कर ले। अमोक रहेगा भाई, किल चोरी करने आया था अमोक भाई बड़ी देर बढ़िया से। शॉट।
बढ़िया शॉट, ओ भाई बढ़िया अमुक ने शॉट, पकड़ा था भाई, अमुक ने पकड़ा था भाई। बढ़िया शॉट। हेलो भाई वीरू, वीरू तेरे और मेरे भाई साथ कुछ तन्नू गलत हो क्या रहा कर है। रहा है वीरू भाई पिंग देख भाई। भाई पिंग गंदा आ रहा है यार, क्या ही करूं। भाई वीरू का तो सुधर गया भाई, मेरा नहीं सुधर रहा। वीरू का तो नहीं सुधर सुधरा गया। मेरा सागर, पैकेट वीरू लॉस है, देख एक पैकेट बार लॉस, टैब दबा के भाई, तेरा सुधर गया, मेरा नहीं सुधर रहा। भाई पैकेट लॉस है भाई उसके साथ साथ। तेरे नेट वाले को उठा कर पे मेरा उसको मेरा जाके। पैकेट लॉस आ रहा है इस टाइम, मेरे को पिंग उठाता सही है। है लेकिन पैकेट लॉस आ रहा है। वेलकम टू माय वर्ल्ड। दीवार से उतर के आया था वो पूछ लेना। भाई यार अनिकेत ने रोक लिया यार। ए सेंटर है, सेंटर है। अरे यार सेंटर में मेरी टीम नहीं है ना, पर कौन धक्का मार रहा है, कौन धक्का मार रहा है ये? अरे बूस्ट और भाई क्या सागर, बस मैं इसीलिए तेरे गोल चुराता हूँ। तू आता जाता मेरा बूस्ट चुराता रहता है ना जो। ठीक है भाई। जैसा कि मैंने बताया था आपको, आपके क्यों चोरी होते हैं गोल। कोई नहीं, तू मान लेगी तो बस छोड़ेगा ना, बस बात खत्म ब्रो। इजी ब्रो। भाई यस ब्रो। बेंजा से पूछा जो मैंने सुबह कितने गोल कराए बेंजा के। ब्रो टॉप सेंटर मैं टैक्टिशियन आया था कितनी बार भी ब्रो। टैक्टिशियन, अरे मेरी कॉम्पी में रैंक खुली है फ्लैट 2। और हेलो भाई बोलने क्यों उड़ाया है? अरे कुत्ते के साथ सॉरी, बूस्ट होने गया फ्लैट था। 1 खुली है, फ्लैट 2 खुली है। चीफ में कुत्ते के साथ बूस्ट होने गया। हेलो हेलो बेंजा, निकलो। तू मेरे को मारने आया था क्या जबरदस्ती? नहीं नहीं, नहीं वीरू वीरू हेलो भाई अनिकेत, ये क्या हो रहा है भाई मेरे? बैड मैनर्स। बाय बाय बाय। नाइस। एक कौन दिया आपने साइड? हाँ अनिकेत, वो कन्नू है, कन्नू है, हेलो कन्नू, हेलो कन्नू, डर लो क्या तेरे को? अनिकेत पीछे खड़ा हुआ था, अनिकेत होता तो जा चुकी दे होती। दे दे सागर दे। उफ उफ हाँ, कितना स्पीड में भाई। ओह भाई, अब भी छूट गोल, गया भाई। ओन गोल, वो टैकल किया उसने ऊपर हवा में, भैया क्या कर रहा है? ओन गोल, बता ओन दे। गोल, ओन गोल, ओन गोल। उफ, ठीक है भाई। What is this यार behavior यार? आराम से छोड़ देता वहाँ पे, हाँ जाने हाँ, देता। अगर ये जाने देता तो वो हो जाती। कोई नहीं था, कोई नहीं था। कोई नहीं था ब्रो, कोई नहीं था, वही तो आता है। उफ, नाइस वीर भाई, लैग काम कर रहा है। वो तो easy था। मैच क्या बहुत देर मारा अपनी टीम वाले ने। मिस हो गया। हेलो डे, भाई सॉरी भाई, भाई सॉरी भाई, अभी बेंजा ने मिस कर दिया। मैं तो पीछे पीछे भाग रहा था बचाने के लिए। तुम अपना बताओ। बेंजा भी लाइक रुक आई जा। एम अमोक, ये क्या था तरीका मारने का? मैं मारा नहीं, तूने मेरे को मारा। पता नहीं, हेलो। पिंग की वजह से दिखा रहेगा। मेरा बूस्ट लाके दे मेरे को सागर, मेरे को नहीं पता। बैंक में जा और बोल कि मेरे पास बूस्ट हुआ करता था। ठीक है सागर। ठीक है वो। सेंटर है बॉल। नमक, मेरी गाड़ी में जो तूने अभी बम्पर तोड़ा है ना, पैसे लूंगा उसके तेरे से। इतनी जोर से मारा पीछे। उफ, नाइस। हट, अरे सागर भाई ठीक है यार। तू खुद ही गया था, मैंने कुछ भी नहीं किया, लिटरली मैंने कुछ नहीं किया। भाई 3 जन वहाँ पे वॉल पे क्या कर रहे हैं? घूम रहे ब्रो। जीटीए में कॉन्सेप्ट सीखा था वॉल राइड का, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं इस गेम में। गलत कंसेप्ट, गलत जगह लगा रहे हो। भाई लैग आ रहा। निकल सागर। मैं तो निकल ही रहा है ब्रो, चिंता मत कर तू। कम ऑन फ्रेंड्स, तुम्हें ओटी 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 करो। उल्टी कर दो। ओटी कर लो फ्रेंड्स, ओटी तो होगा नहीं तुमसे। लिसन टू दिस सॉन्ग। पीछे घूम के सुनाता है। ए भाई यूरोप चल रहे भाई, ये ना हो पाएगा मेरे से। भाई अलग ही पिंग आ रहा है भाई। और मैं खाना आके आता हूँ, तुम लोग खेल लो तब तक। कूल, I'm cool, cool, very cool. यस।
लीव करने लो अभी फिर, अरे, लीव करने लो अभी फिर। सॉरी सॉरी, एक हाँ टीम में निकल होने गया। कृष्णा वाला हो गेम जाएगा। छोड़ना, कृष्णा गेम छोड़ना। क्यों, क्या हो गया? हेलो। नहीं मैं जा रहा हूँ, कृष्णा ने। नहीं, कृष्णा गेम में ऑलरेडी है। अच्छा हो गया। ये कन्नू बाहर है ना, स्लो पीसी। आ गया। खींच भी लिया ब्रो मैंने इसके बाहर आते। आजा डिव्स मेरी टीम में। डिव्स में बेंजा खेलते हैं एक गेम। बेंजा आना। चल यू बंदा ओके। ठीक है भाई, वीरू भाई ठीक है भाई, बोलेंगे। टीम भाई। वीरू भाई, वीरू भाई, वीरू भाई आ गए। वीरू भाई ये भाई इसकी, भाई इसकी 26 पिंग आ रही थी, मेरी ना फट गई भाई। मैं बोला भाई ठीक है भाई। मैं बोला इसकी यहाँ पे सबसे कम आएगी, ठीक है भाई। अब ये गोल रखेगा उड़ उड़ के। गोल खा लिया मैंने। भाई इनके ठीक है भाई, ये कर ले तू। मैंने बॉल इतनी अच्छी बनाई थी। थैंक यू बोल दो प्लीज। थैंक यू फ्रॉम हिज साइड। इनके नो फ्लाई जोन है, उड़ना अलाउड नहीं 2 मीटर से ज्यादा। क्या उड़ क्या भाई, ये कौन था? क्या धक्का मार रहा है। नो बंदा, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस हियर। नो सागर। बहुत नहीं हो रहा। कौन था ये, कौन था ये, किसने मेरे को मारा? ठीक है सागर। कृष्णा हकते भाई हुए। भाई सागर। मैं तो ऐसे ब्रो बेट खेल रहा था ब्रो। मैंने अनिकेत को पकड़ के मारा ब्रो। नाइस। इजी गोल। तुरंत मत। गो दिवस, अटैक दिवस, बाइट। ठीक है भाई। चीज याद आ रही है क्या? हाँ तो रे ब्रो, शेफ नॉट अवेलेबल दो। रीड कर दिया तो इससे नहीं 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 भैया। नो ब्रो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा दे। रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, गोल की तरफ एक बार अच्छा शॉट बनाना। वो भाई ठीक है भाई। वीरू ले गया ब्रो। वीरो भी भाई मैंने अनिकेत को हटा दिया, ये आ गया। ठीक है भाई, ये कर लेते हैं। अनिकेत भैया को तो वापस डिफेंस पे भेज दिया था बंदा ने। हाँ अगर तेरे को अभी तक एरिया लाया क्या? मेरे को सागर बोला मैंने। सागर को तो नहीं आता। नहीं आता ब्रो मेरे को। दूसरा तो मुझे भी नहीं आता। सागर को बॉल क्या नहीं आता यूज करना। वही तो ब्रो। भाई अनिकेत बॉल ले गया बेटा। हो गया भाई, हो गया। बड़ा अच्छा लगा देख के गोल जाता हुआ। बहुत ये देख, उल्टी सी गाड़ी गिर रही है, सागर ने एक बार आके ठोक मार दी। इसी मेरे कृष्णा इजी गोल करते हुए। गोल चुराया गया है फ्रेंड। कृष्णा भाई सुक्स तो रहा Oof, let's go. मतलब सागर क्या करना चाह रहा है भाई गन्नू? साथ साथ चल लेते भाई। नॉइस। ठीक है सागर। सागर को गोल। अबे अनिकेत है वहाँ पे, तेरे को लगता है वो जाने देगा? भाई यार ये क्या बंदो, तू बहुत पनौती करता है। तेरे का कुछ नहीं किया मैं, ठीक है। बॉल क्यों दी तूने? ऊपर चली गई वो। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तू मार क्यों रहा है बॉल को वहां पे? ठीक है, छोड़ बॉल देना। एक काम करो, दोनों बॉल को मत मारो। वही आओ, सामने वालों को मारने देते हैं। गोल पे खड़े रहो।
ले रोक। मेरे को जरूरत नहीं पड़ी रोकने की। अगर सीधे शॉट नहीं मार सकता दूसरों के चुरा पाता है, ऐसे मत बोल भाई डेव। अब रोक। लो भाई सामने बंदा गेम बैठा में हूँ ही है, नहीं लगता है रोकने के मुझे। लिए। बूस्ट मिलेगा लेकिन। हेलो वापस से वेंसा। सागर आके मेरे को टोक रहा है, मेरे को ही टोक रहा है साले। पूरा ग्राउंड खाली है नहीं। गोल मारो गोल मारो गोल मारो। यानी कि को हटाओ बे। भाई हवा में से लेके गया, ये कौन था? वीरू था क्या ये? दे दे दे। अगर कैसे हटो। कलेक्ट करना। मैं गोल साफ करने आया था। भाई ये क्या था? हुआ है ना पर जाने दो। हैकर भाई साला। गोल। अवार्ड नो। ओ भाई ठीक है भाई। हेलो नो इशू। भाई। भाई कुछ भी, भाई कुछ भी। इजी भाई। इजी गोल पोज ओपन था भाई। पता नहीं सागर जीडब्ल्यू को तो भूख थी ना कि मुझे बूस्टर दे दो। बूस्टर वही लाओ तो बूस्टर करता है लाओ। एक हाइपिंग आ रहा है ब्रो, हाइपिंग आ रहा है, मेरे को दिखा नहीं था ब्रो। बूस्टर लाओ बूस्टर लाओ बूस्टर लाओ। ओ फक फक फक। रेलगाड़ी फक फक करके चलने लगी। प्लीज बी लाइक बढ़िया शक्तिमान। बड़ी ही अश्लील रेलगाड़ी है। गैंग ट्रेन। अबे भाई ठोक अनिकेत दो मेरे को एक जगह से दूसरी जगह भैंस के यहाँ। वीरू तेरे को क्या लगता है? वही किया गया है भाई। अनिकेत कैसे ले गया भाई? तू देख ये क्या करके गया, तू एक बार ही देख। मेरे किल भाई। कन्नो अकेली तो खेल रहा है ना तू। तू देख, तू देख, तू देख डेव्स। एब्सोल्यूट मैड। चलो गोल तुम्हारा है भाई, हम तुम्हें ऐसे फ्री में गोल देते हैं, फ्री में। मतलब वो तीनों को भाई कुछ कर डेव्स ही तो ना सीधा रहे भी वो। नहीं मार पाया। भाई वीरू भाई आया था। ये झूठ बोलता है भाई, खाली झूठी तो बोलना आता है कन्नो को। भाई हमेशा से झूठ बोलता है कन्नो। आई एम सरप्राइज्ड कि क्या कन्नो गंदा प्लेयर है? यस। झूठ बोलता हूँ मैं और झूठ बोल रहा है, बोलता देखो हूँ फिर से। नहीं। देखो फिर से झूठ बोल रहा है। बहुत गंदा प्लेयर है मैं। दमन डेव्स के साथ खेलते हुए आगे बढ़ते हुए। ठीक है भाई यार। हेलो वेलकम टू द एक्सक्लूसिव यूनियन टेरिटरी गेम प्ले। भाई वीरू का पिंग देख लो भाई फिर से एक बार। वीरू का पिंग आ रहा है भाई यूनियन टेरिटरी से दूर वाली। नाइस। भाई वीरू का ऐसा पिंग आ रहा है जैसे गया क्या? अभी अभी हैं क्या? ए भाई नो फ्लाई जोन है। नो फ्लाई जोन है, कहाँ उड़ रहा है? भाई। समझता ही नहीं भाई ये लौंडा बात। पिंग तो ऐसे आ रहा है जैसे क्या ही बोलूं। भाई देखो भाई, मतलब इसने देख लिया कि मैं आ रहा हूँ तो इसने बॉल ही उछाल दी भाई। कहता पकड़ डिप्स, क्या कर रहा तुमने भाई? भाई पिंग तो ऐसा आ रहा है वीरू का जैसे 370 इसके घर पे से हटी हो। भाई वे उड़ा दे भाई। लू मेरे को मत उड़ाओ भाई। मैंने अभी बोला था भाई दोबारा भाई। ठीक है भाई। कन्नू मानेगा नहीं क्या तू सीधे तरीके से? हैं क्या करता? मेरे को मेरा गोल चाहिए। नहीं मिलेगा। मत असिस्ट तो मिल गया। मैंने कुछ नहीं किया, सागर को फ्री में उड़ गया वो। नाइस फ्रेंड्स नाइस गेम प्ले। बस अब एक गोल मार Shot दिया। ले लो। Was I eliminated by वीरू भाई? नहीं साकर नहीं साकर। भाई वो कितने फास्ट बॉल मारी थी भाई, इसने भी मारी थी।
फर्स्ट पे फर्स्ट भैंस क्या कैसे ले जाएंगे सर? बढ़िया शॉट। मिस कर दे क्या बोल रहा है? मिस कर दे। सॉरी भाई सागर, अगर तेरे को लगी हो तो, नहीं लगी तो कोई सॉरी नहीं है। नाइस। अबे भाई क्या चल रहा है तुम दोनों का? क्या ही चल रहा है तुम दोनों दोनों ने गेम प्ले, यूनियन टेरिटरी गेम प्ले। का? वीरो हकते हुए अच्छे से। सागर में और वीरू तीनों। भाई पिंग देख ले एक बार मेरी। अच्छा हाँ वो भी है बेचारे। क्यों करता तू बंदा ऐसा? इसका तो सारे सर्वर पे पिंग ठीक नहीं आ रहा, पता बात ये है। अब वो उसके इंटरनेट प्रोवाइडर का कुछ तो गोल गोल कमॉन गोल। बेंजा। क्या बेंजा तेरा उड़ रहा कुत्ता है? ये तो रोक लेता भाई तू बेंजा। यार कोई ना कुछ तो अभी गाड़ी कब हुआ हमें। घंटा कर हुआ ये बता तेरे को। कोई नहीं वो बेंजा। ये कर वो आवे। अरे बताना बताना फिजिक्स के अगले मिशन पे तो ये उड़ रहा है क्या? इलोन मस्क भाई, इलोन मस्क चलाओ मुझे। इलॉन मस्का वाला भाई, मस्का वाला। नहीं ये इलॉन मस्क का नहीं कहता है, ये वो है जेफ बेजोस। ठीक है भाई। भाई एक तो यानी कि इतनी बदतमीजी करता है ना भाई, सच बता रहा हूँ, भला ना होगा ठीक है इनके। भाई कन्नू भाई, सॉरी क्योंकि मैंने पिछले जन्म में तेरे साथ गलत किया हो तो। भाई 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 भाई। हेलो भाई, ठीक है भाई, बच गया, थोड़ा सा बचा थोड़ी देर के लिए। हेलो कुत्ता ये दमन दिवस। बेंजा ना मैं भाई मैं तो दिस राइट तेरा क्लियर गोल दिया था। नहीं, मैंने वो जानबूझ के धीरे इसलिए मारी थी कि रुक जाए वहां से। ए हट कन्नू प्ले भाई और भी शिट। कन्नू ऐसी थोड़ी हट बोला था पेमेंट। तेरा कैलकुलेटेड था पूरा। अरे तीन बंदों का गाड़ी। ब्रो मैंने जूक खेल रहा था, जूक। गोल हो रहा। नहीं होगा किसी के पास बूस्ट नहीं था होगा। भाई कैसे हो गया डबल मर्डर? ठीक है भाई, टीम वर्क। भाई अमंगस खेल गए हम तो यहाँ पे। इधर मत ला। गया भाई, वो साइड से निकल गया। जा डिव्स, बॉल पे जा डिव्स, जा डिव्स। क्या करेगा टीम जाके बिल से यहाँ पे आ। भाई बेंजा ठीक है भाई, वही देखा मैंने भी बेंजा, बेंजा ने थोड़ा बहुत भी नहीं, अच्छा खासा गोल छोड़ रहा है भाई बेंजा। मैं देखा जा रहा था तो मैं छोड़ दिया बॉल। बेंजा पेपाल बता दियो भाई, पहुंच जाएगा पैसा। भाई वीरू भाई का लैग कर गया, वरना वीरू भाई ने शॉट मार दिया। गोल मार दे, खुला खुला। लेट्स गो। भाई मैं गाड़ी पकड़ने लगूंगा। रुक, पहले इंटरनेट वाले को फोन। हैप्पी बर्थडे प्लीज, इसका प्लीज डू इट एक ही शॉट में सीधा। इसका हैप्पी बर्थडे है इंटरनेट वाले का। सामने वाला का मैं मेरे को हैप्पी बर्थडे तो केक खिला दो। नजर हटी। रेडी कर दो, नहीं तो कन्नू को बिठाते हैं हम, 4v4 में चलता है। बेंजा मैं करता हूँ गोलकीपिंग अब। नहीं मैं करता हूँ, खेल बिंदास खेल। देख मैं आगे जाऊंगा तो सागर से पिटूंगा। सागर रोएगा फिर। अरे सागर, अरे टीम के लोन कर दो ना, थोड़ा और मजा आए गेम में।
बेंजा टीम ही ये बदल गया भाई, बेंजा टीम ही बदल गया, देख कृष्णा रहा तू? तुम लोग की टीम में आ गया, कृष्णा तुम लोग की टीम में पहले आ गया यार, ठीक है। कन्नू भैया अच्छा सपोर्ट चाहिए। हेलो हेलो भाई, ठीक है भाई। भाई तू देख भाई अनिकेत भैया ने क्या किया है। देखा मैंने भाई, भाई भाई ने दिखाया तुम कल के लौंडे हो, मैं 4 साल से खेल रहा हूँ। अनिकेत भैया भाई। गोल तूने गलत दिया था तो कैसे देते हैं? ये देख यहाँ पे गोल से बाहर निकाल के फेंक दिया पीछे ऑन गोल, कृष्णा ने ऑन गोल मारा। ऐसे करते हैं यार, तूने लास्ट टाइम गलत किया था ऑन गोल। मैं कह रहा हूँ कन्नू एक काम कर, तू वो कर लीव, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कन्नू और बेंजा तू हमारी टीम में आ वापस। कन्नू तू मेरे को 20 पे अपने 30-70 दे दे, फिर मैं दिखाता हूँ उन कैसे मारते हैं। ओह माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। 30-70 से ज्यादा किल होता है क्या? मेरे तो नहीं है। हैं? भाई वीरू मर गया भाई, वीरू को तो मैं मार भी नहीं रहा था यार, गलत बंदा मर जाता है भाई। क्या हवा में जा वीरू, वीरू जा, वीरू आगे जा, वीरू आगे भाई जा, अनिकेत। वीरू आगे जा। तू बॉल पे बैठ वीरू। अबाउट नो अनिकेत ठीक है भाई। भाई, ये वहां पे फोन हो गया भाई अब, और इसके अलावा क्या बोलूं मैं? भाई तू ना कौन था यार? ये सागर भैया भाई पहले बिल्कुल कन्नू के स्किल लेवल का गोल। इजी ब्रो, तब भी कन्नू ने रोक पाया, देख रहा है तू? खाएगा तू अभी मेरे को बोल रहा आगे बढ़, अब बोल रहे डिफेंड। तू गया नहीं आगे तो मैं गया। मतलब बेंजा, एक तो देख उस बंदे का पिंग ज्यादा आ रहा है, ऊपर से तू बुली कर रहा है, तेरे को मैं बुली बुली क्या करूं? मैं आर बस यू बोला अटैक ह्यूमन के इट्स ऑल? हाँ बस हो गया सागर, हो गया। ये बेंजा ये तू ऐसा ही है या ये डॉलर ने ऐसा बना दिया? डॉलर ने ऐसा बना दिया भाई। गवर्नमेंट बिक गई। कौन भाई कौन? करेंसी बिक गई है फ्रेंड्स। गोल कर दो फ्रेंड्स। आजा बीच में। हेलो प्लीज नो अनिकेत, प्लीज नो। तीनों स्मर्फ उधर ही खड़े हैं। नहीं नहीं भाई सागर ठीक है। अगर बॉल अनिकेत भाई वीरू, भाई मैं वीरू के आसपास भी नहीं था, वीरू खिंच के मारा लिटरली। कन्नू नाइस डिफेंस। I know, I only good at defense. That's it. Not good, little good. अब की बारी वीरू से भिड़ा मैं। भाई Exactly. Are you even human? Are you even human? देख मैं अभी तक अनइंटेंशनली भिड़ रहा था, तो मैंने अब की बारी इंटेंशनली भिड़ दिया। सही बात है भाई, सही बात है। देखो जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं बीफ खाने वाले लोग, वो चुप रहे, नहीं तो गवर्नमेंट में बता दिया जाएगा, फिर तुम्हारे घर के बाहर हाई होएगी। बीच का रह जाएगा फिर ये, यहाँ की सिटीजन गई वहाँ की तो मिली नहीं। वो ये देख लेंगे आपको। सीरियसली बेंजा, हाय वीरू भाई। देख भैया व्हाट यू डूइंग भैया, पियानो सुना रहे हो आप इधर अपना है? हेलो डिव, है ना टाइमिंग पे आया जी। भाई ये लोग क्या सेव कर रहे हैं भाई, कुछ भी। ये चीटिंग है भाई, दिस इज अनफेयर भाई जा डिव। भाई लैग। वीरू ने भी फुल उड़ान भर रखी है। भाई पकड़ के ले गया भाई अनिकेत, पीछे चल पीछे चल पीछे चल। पकड़ के लेके गया। अरे मिस हो गई। बेंजा को मार दे, बेंजा को मार दे। अरे क्या? भाई वीरू नाइस वीरू भाई, नाइस, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। क्या हो गया बॉल भाई? मेरे ऊपर से लैग होते हुए चली गई भाई ये 600 पिंग पे ये कर रहा है भाई, गलत है भाई भाई। बॉल
बॉल मेरे ऊपर लैग होते इलीगल हुए निकल नाइस। गई। हेलो अनिकेत मार के निकल गया। अनिकेत क्या था बदला? रिवेंज विल बी टेकन। हेलो थैंक यू सागर। हेलो वीरू भाई, इतने प्यार से नहीं मारने दूंगा मैं आपको। सागर मुझे हटा दी बॉल, मुझे हटा दे। सागर भी लाइक कन्नू पहले तू हट, फिर हटाऊंगा बॉल। हेलो वीरू भाई। मैं वीरू के सामने जाके गिरा भाई। ओह नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। ओपी गेम प्ले फ्रेंड्स। ओ नहीं, अरे यार बंदा जो कहता हूँ कभी करता ही नहीं है। जा 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 जा। गोल। बच गए। वो थोड़ा लग जाता तब भी। पूछ तो रखता है अनिकेत। अरे भाई ठीक है भाई, बॉल स्कैम कर लो ना तुझे। वो साला हिट नाइस। मैंने तेरे को धर लेगा मैं एक दिन। ठीक है भाई, ठीक है। अगर यू प्ले देयर ने हाँ हाँ रुकना कर। इसको देख। लो इजी विन, इजी विन। नाइस सागर नाइस। मैं बोल रहा है सागर, मैं नहीं बोलता ना तो जाता नहीं होगा। ठीक है भाई कर ली। ठीक है भाई, इजी भाई देख आखिर आखिर में कितना आया। गेम ने असिस्ट नहीं दिया तो भाई तू कम्युनिकेशन का असिस्ट ले रहा है। ठीक है ये अच्छा था वैसे तो। हेलो मेरा रॉकेट जा रहा है। अरे नीचे गिर गया। नाइस सागर भैया, गुड गेम प्ले, अमेजिंग गेम प्ले। मैं पता नहीं क्या हो रहा है भाई सर के साथ। वीरू भाई पता नहीं नशे कर रहा है इसका इंटरनेट। भाई 600 पिंग पे इसने जो गोल सेव किया ना अभी भी चल रही है मेरी उसके लिए। भाई कुछ भी नहीं किया इसने वो वाला गोल सेव। क्या बोलता है टिप्स? हाँ भाई अंधा कल मैं गोल कहता सेव हूँ था मेरे भाई 600 कल- पिंग पे। कल आईएसपी वाले का जाके गला दबा था। बेंजा तू आगे खेल। बोलियो 600 पिंग पे इतना अच्छा खेलना पड़ रहा है। तेरे को पता है मैं अगर 100 पे खेलूंगा कितना अच्छा खेलूंगा। यू प्ले अहेड, मैं पीछे ही रहेगा। ओ अनिकेत अनिकेत रोक, अनिकेत रोक। व्हाट इज दिस? ओ अनिकेत ने रोक दिया। नहीं तो मैं बस ये बोलता व्हाट इज दिस भाई बिहेवियर ठीक है हो गया मेरा। नाइस का व्हाट अप कन्नू? नाइस वन। मैं कन्नू के साथ भी खेलने गया। तो तुमने वीरू भैया को ऐसी टीम में भेज के ना बुली करते हो। वो हाँ, अनिकेत। मैं जबरदस्ती अनिकेत को लेके जा रहा है। हाय कन्नू। आई सागर। भाई नेट ठीक हो जाए फिर मैं लेट्स गो। भाई नो फ्लाई जोन भाई है, तू नो देख फ्लाई तू जोन देख है। तू देख अभी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है सारी कित खिला दो इनके पे भेज दी। भाई हो एक जाता काम देता हूँ मैं, ठीक है? मैं ये सागर को ना खत्म कर दे भाई। डॉलर से मार तू कैसे भी मार, मेरे को मतलब नहीं, ये बंदा मेरे को नहीं चाहिए भाई। बता कितने देगा? भाई कैसे रुक गया? कितने देगा? मैंने अपनी स्क्रीन पे तेरे को हटाया है भाई। तू भाई ठीक है भाई सागर, तू तो था ही नहीं मेरी स्क्रीन में, लेकिन हाँ कौन सी स्क्रीन है आपकी? ये डुअल स्क्रीन वाले ना डिल्यूजनल होते हैं लड़के। ये मेरे पाए रोक दी बॉल भाई ने। हेलो अनिकेत। नहीं भाई ठीक है भाई सागर, बहुत तेज है रे। हाय कन्नू। मी नियर गोल, गोल डज नॉट मैटर, मी प्ले विद कन्नू। अबे यार नाइस नाइस। नो नाइस। तुम अपनी जाओ। दीवार पे क्यों पहले जा रहे हो? बॉल आगे मारो ना। अपनी दीवार पे बजा रखी है बॉल। क्योंकि आगे प्लेयर थे। समझा करो। हेलो डेव, ये क्या कटिंग शॉट था? भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई। भाई अनिकेत यार इतना मत उड़ यार। देख पता है
माने तो मेरी क्या टीम तेरे में को है, लगेगा अरे ये but छोटे this should be not be allowed with like noobs with us, noobs like us. आपको अच्छा लगेगा छोटे छोटे बच्चे रोए, अब अच्छा लगेगा आपको? जस्ट टेल मी। You should और be. ब्रेकफास्ट ही छोटे बच्चों के आंसू के भाई साथ होता बेंजा से गोल करा देता मैं, मजा आता। है। नहीं, ऐसे कैसे? कन्नो सेव कर ले। मैं देख रहा था कन्नू डरेगा। मैं बॉल पे आया ही नहीं, मैं बॉल पे आया ही नहीं, मतलब मैंने कन्नू पे क्या, कन्नू देखा। उफ। भाई क्या उठा के फेंक रहे हैं भाई? भाई हाई टीम में भी मेरे को ठोक दिया। ब्रो तूने रास्ते में आ गया, मैं कन्नू को मारने आया था। इसमें चाटा मारा सागर ने मेरे को लगा। मैं कन्नू के साथ बहुत देर से खेल रहा हूँ, तूने ध्यान नहीं दिया शायद। चलो मैं गोल नहीं मारूंगा। बड़ा सॉरी मुझे दिया। ठीक है भाई। दो बार घुमा दिया। कृष्णा मैंने कुछ भी नहीं किया, बट ठीक है। अरे मैं फिर बड़ा कन्नू, ओ भाई कन्नू रोक ले गया भाई कन्नू, नाइस। बस कन्नो यही चाहिए था। कहाँ भाग रहा है कन्नू, कहाँ भाग रहा है? कन्नू को धरला मैं कह रहा ज्वाइन हूँ। करो, कौन सी टीम ज्वाइन करो? तो अभी कोई टीम ही नहीं ज्वाइन कर सकता, 3v3 है क्योंकि ओके ओके। बैठ थोड़ी देर अभी, एक बंदा और आने दे अब। भाई मैं दो जगह आंखें रख के कर रहा है तू, तो तुम लोगों पे 4 आंखें होनी चाहिए भाई मेरी, मतलब तुम 3 लोगों को और ऊपर से बॉल। गो डिव्स, वेयर इज डिव्स? डिव्स छोड़ गया क्या? अरे कन्नू गया। गया और बॉल भी तो गई। वही तो कन्नू, तभी तो मैं कहूँ शॉट भी नहीं मचा रहा था। वो बेंजा 3 बार ट्राई किया तूने बेंजा। भाई कन्नू पर डबल अटैक घुमाए। बेंजा ने भी मारा क्या आके? हाँ बेंजा आना, तूने आना साले। मेरे पास कहाँ दो भाग गोल रहा है? है, कहाँ मेरे भाग पास रहा है? 2 गोल है बेंजा, देख आ जा तू। ये बेंजा आई स्टिल लिव। मैं घूम रहा है गोल गोल अब। गिटार बजा दिया। हेलो, गिटार किसने लगा रखा है मुझे ये बताओ। है अपने खोपड़ी पे देख। कल एक मैच खेल। नहीं बचता, लीव कर दे फिर वीरू, तेरे को लीव करना पड़ेगा, वो तभी ज्वाइन कर पाएगा। सब लीव कर देते हैं। लेट्स नहीं नहीं अबे चला ब्रेंडेड एक क्या ही बोल। लेट्स गो सवाओ भाई। अब सागर एक काम कर भाई, यार रंबल लगा देना। सुन तुम वीरू लोग भाई एक मैच लीव खेलो करना, ना। लीव कर दे भाई गेम। भाई ऐसा रहना चाहिए ना कि एक दो प्लेयर का वीरू भाई को भगा दिया। हेलो क्या? ब्लॉक्स कर सकते हो आप। अरे मैं आ रहा है, मैं आ रहा है 5 वीरू मिनट बोल में, के पूरा गया कि वो जा रहा है। डाल दिया। चल रंबल लगा दे, रंबल लगा दे। हाँ, और अनिकेत और अमोक के लिए पावर चलना नहीं चाहिए। ये तो राम देखो के लिए भाई, बाहर देखो नहीं चलने। देखो अनिकेत किससे दूसरी टीम वाले में जिसको भी वो आएगा जूता वो बजा देना अनिकेत भैया में। आज दिस जॉइन ऑरेंज। हाय मेहुल। संतरा। अनिकेत हमारी भाई ठीक है भाई, सामने टीम देख तू। ये कन्नू उधर क्यों नहीं जाता है तू कभी? उधर जाना कन्नू। हेलो भाई, हेलो बस बस हो गया भाई, हो गया। बेंजा तू इधर आ, हो गया सब भाई। छोड़ बेंजा तू नहीं, इधर नहीं, आ। नहीं, नहीं, मैं अमोक के साथ खेलेगा। रोकेगा कोई बात नहीं, कोई तकलीफ की बात मैं नहीं है। अमोक के साथ खेलेगा। मैं गोल रोकेगा तू देख। अबे पिछवाड़े पे लात भी तो पड़ेगी ना। अभी जब तेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस फेंक के मारेगा ना मुंह पे,
क्या कर रहे 4 साल का एक्सपीरियंस है। मार दे। अबे किधर मारना है? सागर तू गोल में से क्यों आ रहा था भाई? माइंड fuck कर दिया भाई। ठीक है भाई। fuck कर दी गलत भाई। ये ले। क्या हो रहा है ये भाई, क्या हो रहा है? ये फोड़ा फाड़ी नहीं चलेगी, दिस इज रॉन्ग। फोड़ा फोड़ा फोड़ी तो चलेगी। भैंस के आगे क्या था? साइड प्लीज। ठीक है भाई। ओह टेलीपोर्ट कर दिया क्या? सब बेंजू। हेलो प्लीज नो। चलो ठीक है थैंक यू सागर। सागर दो बार सेव किया है। सागर ने भाई दो बार भाई save ठीक है भाई। अरे यार मेरे को भाई मेरा भाई तेरा हो रहा होगा माइंड फक ठीक है, मेरा मत कर साथ में। सॉरी बेंजा, नेक्स्ट टाइम। भाई कौन बीच में आ गया मेरे? नहीं भाई, नहीं भाई। भाई डिप्स में चुराने आया था ये कुत्ता है कितना भाई तू? अबे भाई मैंने ये बचाया, ये देख लात जो लगी है अनिकेत भैया को। तो कहा दिया उसको। भाई गोल चुराने आया था। ये गोल मिल गया था मुझे। What? कैसे? ठीक है भाई। How the fuck you doing that? That अरे भाई यार ये गोल रोकना गुनाह है अनिकेत, बहुत गलत बात। अनिकेत गुनाह क्यों कर रहा है ब्रो? हेलो हेलो हेलो। स्मॉल किड्स। हेलो अमोक भाई ठीक है भाई। नो अमोक डिप्स भाई मार दे आगे। लॉल। ठीक है भाई कुछ भी मारा है अनिकेत, क्या मारा तूने? समझ क्यों नहीं आया मेरे को, हुआ क्या है यहाँ पे? पावर रेंजर एसपीडी। अच्छा पावर शॉट मारा है। अरे वो Power पावर shot। हुआ था ना। मुझे पिंच लगा था। मेरे को भी बेंच ही लगा, मैं बोला पता नहीं क्या हुआ भाई। अरे वो था ना जो एबिलिटी, क्या कौन सी एबिलिटी है, क्या नाम है इसका? अटैक। पावर वाली। पंच हाँ, वाला। हल्क पंच। did मैंने जमाती मार दो। नाइस। मेरा पिंच स्पाइक हुआ था बहुत गंदा अभी। अरे नहीं अमोक, मैंने अपने लिए फ्रीज कर दी। निकला अंदर पतले घुसा। कर। नाइस नाइस। What? ओए 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 बचा लो। नाइस टीडब्ल्यू। लेट्स गो। भाई मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे सामने कुछ सही नहीं लग रहा है। वो है भाई। चलते हैं भाई। अरे भाई ठीक है भाई हमारी ओ अच्छा शुभम आ गया ब्रो। भैया। अबे यार हमने तो 3v3 सेटअप किया था, ये टीम कैसे ज्वाइन कर गया? व्हाट इज दिस स्कैम? अबे छोड़ छोड़। तो 4v4 बनाया था क्या? 4v4 अबे 4v4 में रंबल खेल सकते हैं और क्या? तो बस, तो वही चलेगा। अपने लिए भी। अबे क्या? अबे जमी भी मेरी स्क्रीन में जमी भी तब आ रही है मोन। जमती जमती चल रही है वॉल पे। भाई सागर भाई 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 जमी भी बॉल चल रही है, देख जमी भी बॉल चल हाँ। रही है। अच्छा स्कैम है इस भाई। भूत ने भैया, पता कौन आया इसने को अंदर ही धक्का दिए। अनिकेत ही था, इसने धक्का दे दिया अंदर मेरे को। ये ठीक है भाई। बैक्स है भाई, जमी भी बॉल चल रही है। ये बेंजाना कुछ करता है ब्रो। देख वीर ने तो पहले बताया था अपने को, हम लोगों ने ना ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, ठीक है भाई। कुत्ता भी कटकी कहता बदनाम था है। एनआरआई हैकर ब्रो, कुत्ता भी कहता था। हम मजाक में छोड़ देते थे। नाइस। Who was क्या that? कर रहा है अनिकेत गो रन फ्लाई। Who was that? बेंजा थैंक यू बेंजा। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें मैंने- बंद करो, आंखें बंद करो। मैं जानबूझ के टच नहीं किया रहा कि गोल ना मारो। ये आके मार दिया। ठीक है भाई। थैंक्स बेंजा, थैंक्स।
गो भाई ये गाड़ी का सामने वाला हिटबॉक्स बड़ा अजीब है भाई। और ये आपका पैर फिसल गया। भाई सबने पावर अप एक साथ फीड दिया भाई। क्या अनिकेत को मारा क्या सबने? सबने बॉल को मारा। यो बेंजा, व्हाट इज दिस स्कैम यू आर डूइंग? This be like I भाई हम क्या भाई हम क्या भगता हुआ जा रहा था। अमोक be like I'm gonna stop this. मोड़ चिपकाने वाला था उसे। होप्स और ड्रीम्स टूट गए मेरे वही पे। हेलो 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 ऐसे थोड़ी कमबैक करना होता है होप्स और ड्रीम टूटने पे। मैं नहीं था बे वो मैं नहीं था। ही यार मैं उसको मैंने उसको मारा वो मैं फूट गया। वो बंदा भाई ये दो बंदों को एक साथ कैसे स्पीड बूस्ट दिया गया है? बंदों को भगा दिया मैंने। बिंदे से दूर रखो बे बॉल। ना ओकू गेट फक्ड। अरे यार All boys in voice chat, Benza wants to do something. Keep that in mind. ये मेरे को उड़ाने आया था खुद उड़ गया। नहीं नहीं भैया, तू मैं तो कुछ तो बोल रहा था, हम तो उसके वैसे पता है ये टीम बैलेंस रह गई। क्या बोलता है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। यार किसी को गेम वेम बनाना हो तो तकेशी का का बना दो एक मिनट। भाई सच्ची भाई। फॉल गाइस वैसा ही था ना। हाँ ऐसे हाँ काफी फॉल है। गाइस। लेकिन उसमें भाई फिर जापानीज वो भी तो होने चाहिए और पीछे से उसकी कमेंट्री भी होनी चाहिए जापानीज। भाई वो तो रेसिस्ट हो जाएगा। तो कोई नहीं दुनिया racist है, हम भी हो जाएंगे। हेलो डेज हो जाएंगे। मतलब यार मतलब ठीक है भाई, ये जिसने भी मारा ना भला नहीं होएगा। भैया मिस कर गए। अनिकेत भैया ओह नाइस। थैंक्स फॉर द बूस्ट। थैंक्स फॉर द फकिंग बूस्ट। ब्रो देखो असिस्ट ओए। आएगा मेरे को, देखो असिस्ट आएगा। मैंने अपने टीम के प्लेयर के लिए बर्फ जमा दी। ये ना इस बूटनिको को मैंने बूस्ट दिया था, ये मेरे को आके ठोका। कितने दिन तक try छुपा कर के रहा रखने वाला था तू? हाय बंदा। हट सागर। सागर यू नो who you have to kill? भाई सबको हटा दिया बॉल पे से। बंदा knows। नाइस है और गए। मेन बंदे उड़ाए तूने। हेलो फ्रेंड दो बंदे उड़ा दी गोल मार दो। कुछ नहीं करती थी। भाई अनिकेत का What the जीत hell? गया भाई। और यार शिट यार सीधा स्ट्रेट गया था गोल वो। भाई गोल। भैंस क्या कम हो Let's गई, go. क्या स्कैम था भाई? अमुक दैट वाज प्योर स्कैम ब्रो। नहीं बोला भाई। नाइस वहां नाइस चल रहा भाई का मारे। अरे लेट्स यार। गो। भाई Let's उठा go. कैसे नहीं भाई कोई बंदा? तुम लोग मेहनत कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दिया। मुक्का भी मार दिया मैंने। मैं क्या कर रहा हूँ खत्म करो। ठीक है भाई, ये यही कर लेते हैं ना, यही कर लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ। अरे ठीक है भाई ठीक है बंदा जरा भागो थोड़ा सा। पीछे जा, पीछे बोल। अरे भाई चलो ठीक है भाई।
बेंजा हल्का सा भी पास हो जाता ना, भी खत्म कर देता मैं बेंजा को। अगर तेरे को देख के फट के 4 होगी थी, मैं देखो तुझे। भाई तुमने गोल किया मारी। नाइस, बची। अबे सागर ठीक है भाई, भागो जरा मोम। क्या उखाड़ा? क्या उखाड़ा? भाई सागर नाइस। यार अरे बहुत बढ़िया सेव भाई। वो पप्पी भाई। भाई नाइस भाई शुभम, एमपिक कर दिया एकदम एमपिक। हेलो भाई, क्या खींचा खाचे हो रहे ब्रो। अरे यार थैंक यू मोम। पहले अनिकेत लेके जा रहा था, फिर डिव्स भी लाइक मेरी है। फिर वो भी लाइक भैया ये लो आपने भी गोल कराया तो मैं भी करा देता हूँ। उधार नहीं रखते वो। ठीक है भाई। हेलो नाइस ट्राई ड्यूस, नाइस ट्राई ड्यूस। मिस हो गया भाई। ठीक है भाई, हटो बेंजा। बर्बाद हो गए भाई बेंजा को तो मैं जो भी कुछ यूज करता हूँ बता देता हूँ यूज करते कि मैंने ओए किया है। लात मारता है, हट जा बेंजा बोलता है। ठीक है भाई, ठीक है ना। भाई ठीक है भाई, ये कहाँ चला गया पंच? नेक्स्ट वन। जस्ट क्या है नो मोग मोग। भाई ठीक है भाई। सागर यार क्या किया मैंने बदतमीजी है यार। भाई, ये क्या स्कैम हुआ है मेरे साथ। ये खोला डाल दे। अबे भाई कौन? अरे भाई अभी क्या भैया इतना गंदा स्कैम। छी 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 छी। इजी हेलो? गोल, इजी गोल। गोलकीपर रेडी नहीं था। भाई ये क्या हुआ क्या यहाँ भाई पे। बेंजा इतनी तेज क्यों भाई? इतनी तेज ले जाने की क्या जरूरत थी? गोलकीपर को तो भैया आपने वो कर दिया, 72 टेलीपोर्ट। माइल्स पर आवर। Which भाई is टेलीपोर्ट not तो good, मेरे को भी किया। bad behavior। मैंने गलत मारा है। निकलो पहली फुर्सत बहुत में। हो रहा है भाई, रुक तू आजा आजा बेंजा, भी ये खेलते हैं। भैंस की आंख तेरी। हाँ निकल फुर। ये करने क्या में बिजी चल था ना रहा है? तू। क्या ये चल करने रहा है? में बिजी था ना। क्या चल रहा है पीछे? तू देख कितना इजी गोल गया, तू देख कितना इजी गोल गया, एक बार ही देख तू। पूरा रास्ता डिप्स घुमाते हुए लेके क्या बॉल को ब्रो। डिप्स ओपी। ये ठीक है। ये नंबर की प्रैक्टिस है मेरी और चीफ की। कल आप चीफ नहीं आया और नाल तबाही मचा देते हम दोनों। क्या कह रहा है, सैड हो गया मैं। भाई मैं और चीफ रंबल में फ्लैट टू फ्लैट वन है मशीन में उनके। शर्म ही नहीं आता, अपने मैग्नेट लगा रखी है। अनिकेत भैया मेरी आंधी में आ जाओ। ठीक है भाई, ये कर लो। ठीक है भाई, मैंने बॉल कितनी देर पहले छुई थी देख। ये भी ठीक है, वो जरा सा इतना सा भाई, ठीक है। ठीक है भाई सागर गोल। देख मैं तो जा रहा था लेने को, वो पूछ लगा दिया था बस थोड़ा सा। देखो देयर वर एक्सटर्नल पावर्स दैट प्ले। उठा दो भाई, बॉल उठा दो भाई। उफ, यार बहुत अच्छी जगह से टच हुई थी, बॉल गोल हो जाता। भाई ये भी गोल कर दिया था। अरे पहले मार देता पंच थोड़ा सा टिकाने से। वन पंच मैन। स्नाइपर है तुम्हारा भाई। लेट्स गो। हेलो बेंजा, एग्जीक्यूशनर बन के कैसा लग रहा है।
यार मेरे को सबवे मंगाना है अरे बट यार ये क्या है? अरे ये क्या बनोटी गंदा स्टेडियम। मैप है यार, ये क्या गंदा मैप है भाई, छी छी। लेट्स गो। लेट्स गो। वेज आप टीम चेंज क्यों कर लिए प्लीज? व्हाट इज दिस बिहेवियर? बेंजा आना भाई, बेंजा ठीक है भाई। बेंजा भी लाइक नहीं, बेंजा जान होगा जान। जा रहा हूं भाई। मैं यहाँ रुक जाओ, गेम सेटिंग बदल देगा मैं अभी, बहुत हो गया तुम देख लोगों का। सागर अब मेरे को ठोकता है, इसलिए सागर की टीम में नहीं खेलना है मेरे को। ठीक है भाई। भाई ठीक है भाई। खुद जमा के वो भी मिस कर दी। कोई इतनी जम गई है बर्फ कि बस क्या ही बोलूं। बर्फ लगी। वो कहाँ 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 कहाँ, हाँ हाँ भाई ठीक है भाई। आजा मुक्त में आजा। पकड़ लो भाई को आना। मैं जानबूझ के आ रहा हूँ। भागो। तुम दोनों गोल पे क्यों खड़े हो? मैं खड़ा अकेला। भाई ठीक है भाई। अरे अरे भाई मैंने तुम्हारे को इतनी सही प्लेसमेंट दी थी, तुमने कैसे रख दी वो? हेलो निकलो। भाई, ठीक है भाई। निकलो। हेलो भाई। बॉल चिपका के गया था, फोड़ ही दिया। लेकिन बॉल तो जाएगी नहीं, तुम भी नहीं जाएगा। वाओ वाओ। भाई क्या ही चल रहा है, कोई मेरे को बता दो क्या चल रहा है। अरे ओह यार जस्ट मिस हुई। आओ मिल गया। अरे यार सॉरी, Let's मैं go. 1 मिनट एफ के डाल रहा हूँ। मैं भी 1 मिनट खाना मंगा रहा हूँ। ठीक है, बेंजा टीम बैलेंस करके रख रहा है। ओके गॉट इट। हाँ ये क्या हो रहा है, मेरा पिंग ज्यादा हो गया क्या, वियर्ड वाला? No. निकल चाहिए था, बेंजा कोर्ट में खड़ा है। क्यों धक्का मार रहा है, क्यों धक्का मार Anyone रहा wants a free kill? Easy. देख रहा बेंजा क्या बचा के रखा मैंने तेरे को। भाई मेरा असिस्ट आना चाहिए था इस पे भाई। सॉरी फ्रेंड, मी वाज थोड़ा सा एफ के। वो 2 गोल पड़ गए थे। एक ही पड़ा है साले, एक तो तू पढ़वा के गया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं उठा तो 0-0 था। जब मैं उठा था 0-0। ठीक है भाई, ये कर लेते हैं। अने क्या तो भाई ये कर लेते हैं ना। ये तो कर ही रहे हैं भाई। पहली बार ही देखा क्या तूने होते हुए? नहीं ये होता है, पहली बार देखा है कि जमी भी बॉल भी नहीं मार पाते हैं। वही ब्रो भाई। चलो भाई। बहुत बढ़िया। जी भाई। इजी ब्रो। अभी थोड़ा टीम वर्क नहीं बैठ रहा है। होगा होगा एक और मैच से टीम से। हेलो बेंदा, तूने बॉल छुई थी? तेरे को तो असिस्ट हाँ। भी नहीं आया? आया बट असिस्ट नहीं आया। असिस्ट आता, तूने नहीं छुई। वो गेम का रिप्ले बग है। एंगल नहीं है वो। भाई आर यू सो जेलस? भाई तेरे को ही नहीं मिला, मैं तो जले से कि तेरे को नहीं मिला पॉइंट। भाई बॉल कहाँ जाती है, लेफ्ट टू राइट टू? भाई बॉल घूम रही है भाई, बॉल कह रही है ऐसी कम तो ऐसी, बहुत हो गया अब। आई एम फेड अप। अब भवंडर मचाएंगे फ्रेंड्स, सब उड़ेंगे। लेट्स गो। थोड़ा कम दो। हाँ जी भवंडर बॉयज आ गए।
यार बूस्ट ही नहीं यार, बूस्ट उठा लेते हैं हम लोग सारे यार। व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? हेलो शुभम। सॉरी। तो साला ये कर थोड़ा सा हट गया ब्रो, हट गया। मेरे को पता था कि तू ये बोलेगा। यार मैं हट बॉल गया कर दो यार, भाई। मेरे पास यार मैं इतने से खाली बैठा, कोई तो बॉल पास करो यार। हेलो व्हाट इज दिस शुभम बॉय डूइंग? हेलो मेरे कन्नू को तो रेडी बॉल रहे, मेरे को लग रहा है तेरे पास ही आ रही है। आने दो ब्रो, मेरे को चाहिए बॉल। ये गलत बात है डेव, दिस इज बैड। गोल ठीक है भाई इजी ब्रो। जो डेव नहीं था, never mind। ये जो भी आया था मेरे पास वो अपने पास ले लेना भाई, जो बोला मैंने। भाई सो नूबी नूबी। ये बेंजा बहुत बोल रहे हैं ना बंदा, खाली जीतने वाली टीम पे खेलता है बंदा, देख रहा हूँ मैं ऐसे। अबे जीतने वाली टीम हरवा देता है कभी कभी तो सही बोल रहा है तू, ऐसा पता है टिप मैंने मुझे देखा है, बहुत देखा है मैंने ये बंदा के साथ। हाँ ये देखो भाई, इसको देखो भाई। उफ, क्या चल रहा है भाई ये? बोल भाई ठीक है भाई। अरे What is this behavior boss? Why would you do that? हट। क्या यार बॉल देते तब तक। मैंने तेरा गोल रोकना था। इन लोग ने एक गोल भी नहीं मारा, ठीक है। क्या ही बोलूं मैं तो मैं। वीडियो आएगा तो 4v4 होगा फिर। Yes. बस मैं जा रहा हूँ, लास्ट मैच है मेरा। Why can ये why you देखो। leave us? टू डू वर्क। We will remember अबे you. ऑरेंज, Khanu. सॉरी ऑरेंज जा रहा हूँ। अरे ऑरेंज my फुल हो गाड़ी। गए, हो गए। अबे ये क्या ऑरेंज कैसे फुल हो जाती है एक बंदे में, बताइए तो मेरे को जरा। अबे फुल हो गई तो मेरे को ऑरेंज ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। अबे तो इधर आना। नहीं अभी नहीं आ आ तो गया, अभी आ गया। क्या अभी आने की तरह हम लोग एक टीम में भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो गए बार भी हम लोग एक ही टीम में थे। भाई बहुत शुभम ज्यादा में हो गया था सामने है। भाई बट तुम लोग चार हो, बट तुम लोग चार हो। अभी चाह रहे हैं, हाँ। वो बंदा ऐसे बनाता तू अभी चिल कर भाई। बनाता हूँ मैं बोल रहा Devs, हूँ मैं डिफेंस करेगा। सुबह की स्ट्रीम देख ले, तेरे को अच्छे मैं तरीके से सामने दिखा आ जाओ। देता हूँ कैसे मैं बनाते हैं ब्लू में सारे जाऊँ क्या? मेडिकल। मैं ब्लू में जाऊँ। तू आगे था मस्त, मैं पीछे बैठा है, फिर खेलते हैं। गोल रोक लो, दिमाग मत खराब करो। तुम आगे से खेलो, मैं रोकेगा। मैं ऐसा बोला कि अगले बार से रोकेगा। अगली बारी के नेक्स्ट टाइम। अभी मैं रेडी नहीं था। नाइस असिस्ट करना। आपसे रोकेगा देख। इजी ट्रेडर करना। भाई इतना सैड लगता है ना, एक तो मेहनत करो और उसके बाद वो ट्रेडर बना देता है गेम जस्ट फॉर टचिंग द बॉल। हेलो हेलो इजी। टॉप राइट है। और नाइस सेव। ये तो बदतमीजी है यार। क्या गोल, बढ़िया गोलकीपिंग। बढ़िया। क्या प्यार से उड़ के आया मैं। कन्नू लाइक स्टॉप राइट दियर। ठीक है भाई कोई नहीं भाई डिफ ने सारे बूस्ट लगा दिए लास्ट में कि मैं गोल नहीं छुड़ा पाया ब्रो। अबे तू कन्नू तेरे शॉट के लिए जाना। ये नहीं आएगा, मेरे को चाहिए नहीं शॉट, लेना ही नहीं मेरे को। भाई तो कन्नू उनको क्यों दे रहा है? कन्नू वो लड़ना नहीं है ना ब्रो। You don't ring घंटी यू नो। क्या घंटी क्या ऐसे घुस इतनी जाता घरों में चोर है क्या करना हूँ हेलो हिलो। निकलो। ओए कौन निकाला? अभी चिपकी क्यों नहीं सागर घुस जा घुस जा घुस जा घुस जा घुस जा घुस जा रिवर्स से बाहर क्यों आ रहा है
देखता तू कन्नू क्या कर रहा है गोल के को अंदर? धक्का मारना गोल के पड़ा। अंदर क्या कर रहा है? मारना। तो के अंदर ले गया वो shit, ठीक है। मैं धक्का दे देता हूँ। एक कन्नू क्या कर रहा भाई है? सागर तुम टीम बदलते रहो इधर। भाई रियल टाइम कंट्री करनी पड़ती है, फिर भी हक देता है सागर। नाइस। हेलो स्टॉप ट्राइंग टू हिट मी टीम। अरे सागर भैया क्या हो गया बोलो, क्या हो गया? गूगल होम मिनी किसी काम का है? किसी काम का नहीं है साला। नहीं इंग्लिश आनी चाहिए उसके लिए। 500 रुपये वाला भी नहीं, 500 में मिला तब भी नहीं। हाँ तब अच्छा है, तब तो लिटरली बहुत अच्छा है फिर। गुल्लू इंग्लिश आनी चाहिए भाई। हेलो सच्ची भाई वैसे आनी तो चाहिए। आई वुड ऑल्सो से। देख गवार को बड़ी चीज़ देंगे, बड़ी चीज़ देंगे। अबे 500 में मिल रहा तो बहुत अच्छा है भाई, 500 में मिल रहा है, मेरे को भी दिलवा दे। नहीं किया मेरे को भी दिलवा दे यार। तो क्यों नहीं अब पता अच्छे नहीं से देगा। कैसा लेना पहले फ्लिपकार्ट में। वो अमोक तो मेरी टीम का है, मैं क्यों मारने को घूम रहा हूँ अमोक को? ये क्या हुआ? अमोक तूने मेरे से क्यों बॉल हिट करी? तेरे को पता That नहीं is था? called karma. That is called ये सुसाइड कैसे हो गया मेरा? that is called karma. हेलो देख कन्नू मैं तो कितने प्यार से खेलने आया था बिना बूस्ट के। आई नॉन बूस्टिंग। मुझे डर लगता है भाई, तुम बूथ से आया या बिना बूथ के आया। सागर मैं तेरी टीम में हूँ। मैं कन्नू के पास खेलने जा रहा था ब्रो। वो दो बंदे खेलने आ रहे हो, हद होगी भाई। दो दोस्तों को खेलता अच्छा नहीं लगता है इन लोगों को। समाज को भी नहीं लगता। ठीक है ड्यूस। डाल दे खन्नू ओपन कॉल है। तो कहाँ से सागर कर आ गया। दूँ? ना ओपन। ओपन तो कन्नू कर दिया मैंने। कन्नू मिला एक साथ ही ओपन हो गया मैं। Wait, Easy, सागर easy. व्हाई यू डू दिस? तू मेरे से आगे भिड़ा क्या? तूफान नहीं, ने मैं पकड़ नहीं। लिया। तूफान ने पकड़ लिया। ठीक है भाई साहब। भाई मैंने हार्ड लेफ्ट काटी भाई। अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है तुमने भी कुछ खास नहीं कर लिया, चुपचाप बैठे रहो ठीक है। कम तो कर मैं तो तारीफ ही की आपकी। वही मेरे दो बोले ऑलरेडी। तो बेटर रहने चुरा भी नहीं पाए एक भी दोनों में से। सब कन्नो। अबे भाई ठीक है भाई कन्नू। कन्नू को पावर दी मैंने, कन्नू ने बोला बदला। कन्नू कुछ नहीं बोला, बस बोला कन्नू लेके जा। बदला। लेके जा। ओ भाई कैसे लेके गया ये लौंडा भाई साहब। अरे यार। आ जाओ फ्रेंड। बॉल दी। सागर ऐसे नहीं करते। भाई शकीरा की मारनी चाहिए। शकीरा हमारी मार। सागर को भाई डिप्स ये बॉल हटा। सुकून इट्स अ गोल। अमोक मेरे को मारता मैं कुछ नहीं बोलता है। सब बोई। नहीं यार क्या मिस किया मैंने भी। भाई क्या भाई कन्नू को टेलीपोर्ट किया और फिर कन्नू से जाके टकरा गया। क्या भाई सब बोल। बहुत अच्छा भाई, कमाल है कमाल है। हेलो या अरे नीचे लॉक बॉल पे व्हाट द भाई ये क्या था भाई? ट्राई हार्ड अटेम्प्ट था भाई ये। गोल करो जाओ। मेरे लग गई। भाई अपनी साइड नहीं लेके जाना। आंटी आप Nice. बोल दे दो। मेरा तो स्टारशिप। हेलो फ्रेंड्स, कोई चैट में कुछ लिख दो अगर चैट चल रही है तो। 7 वॉचिंग आ रही है, 0 चैट मूवमेंट सिंस 30 मिनट्स। चलो या आईसीआर लेटर। चैट चल जा प्लीज, चल जा चैट प्लीज। रेडी कर दो। हाय है लिखा है तूने? हाय लिखा है। जीएस आ गया ब्रो।
ओ भाई ओके, जीएस पहले से आया हुआ है, रुको आज डिस्कॉर्ड ने फिर नशे किए बड़े दिन के बाद। ठीक है। भाई गुल्लू की आई थी तो मेरे को लगा कि तेरे भी आई है। नहीं नहीं, ये क्या अपना कस्टम चल रहा है ना वो। हाँ हाँ रंबल चल रहा है कस्टम। भाई गोल रोक दिया भाई ने, नाइस नाइस दमन डिप्स, मजा आ गया भाई देख के। अरे गोल गोल घुमा रहा है। गोल गोल। आओ फिर घुमो सब गोल। वेलकम वेलकम। जीएस भैया को तो उठा के ले जाओ आंधी में। अरे भाई कंट्रोल। हेलो अमोज, बदला लिया जाएगा। मैं बॉल के हेलो भाई। में अच्छा अगर एक टीम में सारे निकलते ना मैं पागल हो जाता भाई। भैया की साइड चल रही है, भैया की साइड चल रही है। थोड़ा भाई तब भी इसका प्रॉफिट है यार, ठीक है भाई। बहुत नहीं हो रहा जी सागर को पीछे ही पकड़ लिया मैंने। जीएस कैसा कि रुक आगे कैसे जाएगा। हाइलो हीतेन। फूक दे। अरे यार थोड़ा जल्दी शॉट। Me going to confirm my good. नो इस कौन था ये लौंडा? अच्छा शुभम था तो होना ही था ये। अभी हेलो भाई गोल जा रही है सीधी। नो जीएस ए भाई कंट्रोल। भाई इसको कौन इनवाइट किया भाई? कौन? जीएस को। तो जीएस के पास आईडी पासवर्ड है, जीएस आ सकता है। क्या है रविंद्र भाई सोनू? अबे आओ जीएस। हेलो जी भैया वेलकम। इजी इजी ब्रो भाई निकाला किसी ने, टेलीपोर्ट कर दिया। मैंने इजी गोल स्टील, अरे इजी गोल स्टील। मैंने वो भी कर दिया गोल था स्टील ना रखना। भाई। ठीक है बंदा भाई भाई ये था भाई चिंदी चोरी भाई, इसने लिटरली चिंदी चोरी करी भाई गोल की। मी गोइंग टू कॉल इट आउट फॉर व्हाट इट इज। हेलो कौन आ गया मेरे पास, ऐसा मत आएगा। अरे नाइस। और अब जीएस सही है, ये भी सही है। तूने मेरे को फोड़ा था साले पिछली बार, ये भूल गया था क्या? ठीक है भाई, कितनी बारी बर्फ जमानी है तुमने? लग गई। कम ऑन। हाउ अबाउट नो? How about no come on? भाई Hello लाभ। क्या हो रहा है शुभम? बोल जा रही पीछे। निकलो पहली फुर्सत में। भाई ले गया जीएस, लेट्स गो। जीएस ऐसे पॉइंट पे था, मैंने कोई पावर लगा के फायदा ही नहीं था लिटरली, ऐसे खींची जीएस ने। अरे नाइस ट्राई। वही जीएस ने बहुत सही खींचा भाई, मैं वही बोल रहा हूँ। अरे मैं शुभम को नाइस ट्राई बोला। अच्छा अरे नहीं तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, जीएस ने अच्छा खींचा। भाई हटा दिया ये अमुक ने। अमुक तेरा बहुत नहीं हो रहा, उठा दूं तेरे को यहाँ से? नहीं कब से हम रॉकेट लीग खेल रहे हैं, मेरा रूम गर्म ही नहीं हो रहा है। रॉकेट लीग से जीपीयू नहीं यूज होता।
मुझे एपेक्स खेलना पड़ेगा। हाँ हाँ आई नो। बदला हुआ है फ्रेंड्स। भैंस क्या खट। उफ। दंगे हो रहे दंगे बता रहा हूँ। वही देख रहा हूँ। तंगे हो रहे दंगा करना ही ई लफड़ा बॉयज, ई ई लफड़ा। लफड़ा। ओए ई लफड़ा वगैरह करना है क्या तो बता दे। दो हेलो। सागर रे फिर जमाती बदतमीज है। हेलो क्या चल रहा है? बहुत हो गया भाई। अरे लेट्स गो। यार कौन जमा दिया उधर? बच गया भाई सागर बाजी में आके। अरे अरे अरे। भाई हम कितना गलत हो रहा है तेरे साथ। बहुत। बिंदा हमारी टीम में ही खेल रहा है ना। ओ भैंस क्या। अरे गया क्या वो वापस लाया क्या कोई उसको? यो जीएस कैसा लगा? काहे धक्का मार रहे हो फ्रेंड्स? आ जाओ। अरे मिस कर दिया। गोल लग गया बच गया। नाइस। हेलो इसको हमारे यहाँ से हटाओ। लॉक्स लिक्स। अरे भाई लास्ट। अरे बच गए। उफ। भाई चॉइस गलत बचा भाई। लास्ट मोमेंट में बड़ा सागर का। ब्रो शॉट ही नहीं बन रहा था। मैं तो 5-6 सेकंड से होल्ड करके बैठा था। बॉल हमारे बहुत पास चल रही थी ना। ठीक है बॉयज थैंक्स। सब घुमा Have लो fun. इधर उधर। हेलो जीएस। हेलो ओके जीएस, ठीक है सागर ठीक है सागर ने बोला मेरे को। ठीक है जीएस। ओ गलत आदमी को मारा भाई। अबे भाई ठीक है भाई इतने से मिस हो गई। इतना बढ़िया उनको गया था। जीजीस। अरे रुक जाओ। अरे यार लफड़ा बॉयज हियर। लफड़ा बॉय। अरे मेरे साथ ही हो गया भैया हेलो। लफड़ा हो गया उल्टा। डाल दो गोल, डाल दो फ्रेंड्स, क्या कर रहे हो? हेलो हमने बॉल पकड़ लिया हवा में। अब मैं बंदे पकड़ेगा बहुत हो गया। अरे भाई भाई कहाँ तीसरी दुनिया में भेज रहे हो मेरे को? रुक जाओ। सागर बहुत गलत किया। सागर बहुत गलत किया। सागर ये नहीं करना था तुझे। सागर ये नहीं करना था। मुझे सब दिख रहा है पर मैं कुछ नहीं कर पाया। डर्टी प्लेयर। नो 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 नो। नो हम के साथ भाई गलत किया मैंने बहुत। ये टीम बढ़िया है, यही टीम रखो अभी। हाँ ये हार्ड चला गेम भाई। अमोक के साथ बहुत गलत किया मैंने। आई वुड लाइक बहुत। अरे यही शुभम टीम को बोलो को इधर बोल आने के। को। तू उधर जा शुभम को इधर। वो शुभम इधर आ जाएगा। तू और अनिकेत उधर जाओ। अभी जीएस की मारा के खुल के। वो पहलो ये गलत शौक रखता है लौंडा। मेरे को पता था वेंद्रा तू बाहर गया तो वहाँ पे ज्यादा वो आ जाते हैं जेंडर्स। बट ठीक है भाई ओ ये भी भाई, सही शौक है। मतलब इतने सारे जेंडर थे तू अटैक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं बना? Why were you not Apache? I am. वो चीज भी है। भाई। ये मौक। उठा दो आग लगा दो सब में। I am. भाई Hi, स्पॉन GF. तो होने देता। स्पॉन तो होने देता। ब्रो मेरे को तो पावर मिली हुई थी। मैंने बोला लेट्स गो सबको आई बोल के आएगा। हैं 3 में से 2 बंदे तो मार दिए मैंने। लेट्स गो। अरे यार चोरी करते हैं लोग।
गो शकीरा What? शकीरा हेलो क्या हुआ है यहाँ पे भाई? इतनी मेहनत हुई है ना लॉन्डो, देखा मैंने। अरे पहले पिछवाड़े में आग लगा तो फिर फोड़ दे तो ठीक है भाई। अरे भाई ठीक है भाई। जीएस भैया दिवाली है जीव हटा दे मुझको, पहले मेरा था। हैप्पी दिवाली जीएस भैया। मार दो बॉयज, नाइस डिप्स। ठीक है डिप्स, ये कर ले भाई तू। डिप्स भी लाइक गोल तो मेरा ही है, मैंने चुराना ही है, मैंने सोच लिया है। भाई डिप्स ने ना कुछ नहीं किया, डिप्स कहता गोल मेरा है, मेरे को पता है चोरी करना है मेरे को। Calculated as fuck. ककूलेटेड। हेलो पीछे हटा दो भाई। ये अजीब अजीब से मत उड़ाओ, दूर करो। भाई ये क्या हुआ है? भाई ये क्या हुआ, क्या है ये? क्या गलती आ गई? भाई कितनी पावर लग गई एक साथ। बैन करो इसे। मुझे कैसे मिला अभी तक नहीं पता चला। GS को मिला ना? सत्य को मिल गया। मुझे मिला। इसकी माँ की। क्या हो गया वेंदर, ज्यादा तेल लगा लिया क्या तूने? निकल। ठीक है भाई। ये हुई ना बात। मैं मिस कर गया, बताइए क्या वो? ये हुई ना बात। मैं चिपक जाता तो बॉल निकल। वही ब्रो, फिर तो मैं तेरे पीछे भागता ना दिए। मैंने लिटरली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देने निकाले। आजा आजा अमोक, तू आजा। और भाई अमोक तेरा सीधा शॉट था, तूने मिस किया मेरे साथ मजे लेने के चक्कर में। नहीं मेरे को बूस्ट चाहिए था। भाई क्या ही हुआ है ये? ओ भाई गोल गोल। अरे भाई ठीक है, सब पे मुक्के हैं। चल बंदा पीछे, गोल सागर डिफेंड करना है। की टोकरा बंदा डिफेंड करना है ब्रो। किया डिफेंड। नहीं हुआ ब्रो, ये डिफेंड कहलाता है। उई उई उई, लेट्स गो। जीएस भी आओ, आओ जीएस भी आओ, चलते हैं। अबे बुला, अरे वो तो लेने दे पावर। थोड़ी देर घूमने दूसरी चलते नहीं हैं। है मेरे पे। थोड़ी देर घूमने चलते हैं। भाई साहब भाई किसी के वो निकले हैं, पर निकले किसी के। बेंजा गए थे। बेंजा अपनी टीम का है हग्गू। जीएस पे नहीं अबे जी क्या बे यार, मेरे को भाई चिपकने वाला था, किसी ने पीछे खींच लिया मेरे को। जीएस भी कॉल चुरा लेते। मैं घुसाने वाला था अंदर वो। वाह दोनों ने मारा। तुम दोनों ने मारा। पीछे आ गया। भाई डिव्स ने मारा है ब्रो, मैं तो हटाई थी। देखो मेरे वाले से बॉल आगे आई थी, डिव्स ने पीछे डाल दी वो। मैंने मारा है, पर मैंने जीएसबी को गोल नहीं चोरी करने दिया। ठीक है भाई, हरा दिया भैया को। ये जाओ। हेलो ठीक है भाई, ये कर लो 1v1 कर लो तुम अपने भवंडर लेके। भाई डबल भवंडर हो गया यहाँ पे, मैं भी घूम रहा हूँ। बेंजा और मैं दोनों एक साथ घूम रहे। अरे भाई और थैंक यू बेंजा। स्पाइडरमैन चिपक जाते हैं ना दीवार से। लीडर बार को भाई अपना डिफेंस क्या ओपी डिफेंस है भाई। बोल तो ऐसे रहे तेरे नाम पे एक से वो। नहीं है नहीं ना, तुम लोग डिफेंड कर रहे हो। अरे यार अरे नो देख रहा है डिफेंस, देख रहा है तू डिव्स। डाल दे ओपन गोल है। हाँ, जा जा डाल दे। मैं तो डाल के आया हूँ ब्रो। अभी 2.5 किलो का हाथ आया था सबको बोलता जो भी आएगा डिफेंस करने। 2.5 किलो भाई, 5 किलो की लात नहीं थी वो डिव्स। नहीं हाथ तो 2.5 किलो का आता है ना जो फोड़ता है जो। अच्छा फोर्स, ओके गॉट इट। अरे यार मतलब वाह नाइस भाई, रुक गया मैंने। अरे ये वाइस गम अप।
जीएस फोड़ने आ रहा था, मैं देख रहा हूँ। अरे नहीं, मैं पूरी ताकत बहुत से बढ़िया बॉल को मारने आ रहा था बहुत भाई। बढ़िया। वो फोड़ने का काम बेंदा का है। अरे ये क्या हो बॉल गया? पकड़ पाएगा बेंजा तो आज की तारीख में? ये पता है बेंजा ही एक अकेला भाई, बंदा ये है देखिए भैया। जो मैंने देखा है कि हवा में ना वो चालू करके घूमता रहता है। स्पाइक्स। व्हाट हैपेंड सागर भैया? अरे वाह! गेट जू। अबे यार थोड़ा सा द सेफ फीलिंग यू गेट व्हेन यू सर्वाइव, बट व्हेन यू रियली, भाई ठीक है भाई। ओहो, सेव्ड। फ्रेंड्स का गोल बचाया फ्रेंड्स, मजा आ रहा है भाई किसी के चिंगारी निकली है। मारो 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 मारो। यार मार क्यों नहीं खींची है ये? मार के मेरे भाई ये खींची क्यों नहीं है? मेरे को कोई बताओ एक बंदा। भाई मैं उल्टी गाड़ी लेके गया हूँ मुख हटाने के लिए। ओ अनिकेत वहीं पे था बिल्कुल। उल्टी गाड़ी लेके गया हूँ। भाई रुक जाता अगर अनिकेत नहीं होता, भाई रुक गया था भाई। भाई सीधा आ गया। हेलो, गोली कौन है? शुभम है, ठीक है भाई। डिप्स तो बस अपना नाम लगाने शुभम के सामने खुद गया। वो 50 पॉइंट लेने की बात थी तो मैंने कहा वो लेट्स गो। क्या कह रहे? बेंजा फालतू पकड़ कर रहा था। अब पहले तू भी निकाल के घूम रहा है, तू भी निकाल के घूम रहा है, हैं? बेंजा का छोटा भाई। सच्ची कहाँ फेंक दिया मेरे को। हेलो, अनिकेत उड़ रहा है बॉयज, अनिकेत उड़ रहा है। हो गया गोल क्या? हो गया भाई, हम ओवर अनिकेत भाई। ये जिस हरकतों में उड़ते हुए आए थे ना दोनों, समझ आ ही गया था मेरे को। बेंजा ने वैसे कर दिया था ऑन गोल बट कोई नहीं। यार मैं क्लियर कर रहा था यार। नहीं बेंजा कोई बात नहीं, हमें पता है। बेंदा को पैसे दिए थे मैंने। कितने दिए तूने? जीएस हैं? उसने मुंह खोला, मैंने दे दिए और क्या। जितने मांगे उतने में। उसने बोला था वो। भाई लीव कर गया भाई बेंजा। हेलो हेलो भाई, बेंजा लीव कर गया भाई, ज्यादा हो गया भाई। बेंदा पूरा कल मान गया। हाँ ज्यादा हो गया आज के लिए। चलो मैं निकलता हूँ, बाद में आता हूँ। बेंजा का बाद में मतलब? सी यू लेटर एलिगेटर। बेंजा का लेटर मतलब सुबह 6 बजे। भाई जीएस कल तो डिस्कॉर्ड ऑन करके सो गया था। क्या डिस्कॉर्ड? तू डिस्कॉर्ड ऑन छोड़ के ही सो गया था। हाँ रे, कल मैं सो गया भाई, वो मूवी देख रहा था। भाई जीएसबी को ने गोल के पास ही बता दिया। नो इशू। अरे भाई बॉल क्यों नहीं आई गोल के अंदर? तुझे पनिशमेंट भी दिया, तुम्हें अंदर ने डाला इसलिए। कैसा पनिशमेंट? ये बम फोड़ दिया मैंने। उफ, ठीक है भाई। नहीं भाई पे। अरे भाई क्या चल रहा है भाई? नो नो प्लीज, नो प्लीज, नो डोंट डू दिस। पनिशमेंट दे रहा था। अनिकेत अंदर जा ही रहा था। अनिकेत अंदर गया था, अनिकेत अंदर गया था, मैं उसके बाद मारा है। प्लीज नाइस ट्राई। ठीक है भाई सागर, अच्छे से साले वो जा ही रहा था अंदर। चुप बैठ नहीं, तो। जो भी है। फिर रोने धोने पे वो जाना बंद कर देना, वो बात ही है फिर तो। अनिकेत क्यों नहीं बंद कर देता उसके रोने धोने पे? तो ये सब हेलो, अनिकेत रास्ते में खड़ा हुआ है भाई, मैं देख रहा हूँ शुभम क्या कर रहा है। क्या मूव हर बारी, सेम स्कैम एवरी टाइम। अरे
कभी कभी काम भी आ जाता है ना। बॉल तो हम ले गए थे। बॉल तो हम कहाँ गए थे। बॉल आजा प्लीज, What the लेट्स hell? गो। सागर भैया देखो अब किसने मदद करी है वहां तक पहुंचने में। ब्रो तो भाई इजी ब्रो। टेलीपोर्ट कर दिया था सागर। क्या? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ। ने तो दबोच लिया था तेरे को हम बिलाई की तरह। मैं वो पता है मेरे इसीलिए को हमेशा वो ना मेरे को हवा में उसका उड़ थैंक जाता यू। हूँ ताकि बॉल जाए, पता है जमीन पे रह जाती है ना तो इशू हो जाते हैं। मैं भी उड़ के आ रहा था फ्रेंड। लेट्स गो। सनी अबे यार सनी देओल खत्म हो गया एकदम से। हेलो भाई इनकी कैसे बर्फ में आ बॉल रहा है? कैसे हिलती है, कोई मेरे को बताओ। अरे यार क्या मो चैट भाई, नॉइज डिस। Let's go। मैं तो गेट तक से आया। यस भैया प्लीज पकड़ा दिया। अरे अरे नीचे गिर गया, चिपक गई थी। क्या था भाई, जमीन पे ही लात मारी मेरे को उछल के। अरे चलो मार दो भाई, अंदर ही जा रहा था। नाइस शॉट। ओपी टेलीपोर्टेशन। नाइस। सागर की गाड़ी उल्टी पड़ी है। हेलो ड्रंक एंड ड्राइव का केस लगा दो। हेलो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लगा दो स्ट्रिंग भैया को। उल्टी करके खड़े हुए थे, गाड़ी पे उठा दी। सागर भैया कहाँ चले गए थे? उल्टी पड़ी थी आपकी गाड़ी ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लगा। भाई वो देख, वो मारने आया मेरे को जबकि मैं हार रहा हूँ। अरे यार क्या ही बोलूं मैं तेरे को। मेरे को क्या बोल भाई, ये क्या कर रहा है? क्या कैलकुलेट कर रहा था? वो एफ की Lag. एक्टिंग कर रहा है भाई सागर, में बता रहा हूँ तुम। लैग हो गया था मैं। लास्ट मोमेंट पे डिव स्ट्रीम देख लियो। पाइथागोरस भाई और ये क्या अभी करके गया था? सागर भैया बस आप एफ के गए वरना तो
गेम अच्छा चल रहा था, ये हकवा दिया आपने। सही बात है, सच बात तो है ही, मैं तो कह ही नहीं रहा। तो मैंने तो बोला ही नहीं गलत है। कहना कहना भी मत, मर्डर कर दूंगा। अरे कहाँ जा Nice. रही है, कुछ भी नहीं मिला, स्कैम हो गया भाई। हटस कर भैया, 3 मैग्नेट दिखे मुझे उस पे 3-4 हजार मैग्नेट मुझे तो। सेम। सागर मार दो। बूस्ट ही नहीं था, बिना बूस्ट के कितने आगे लेके जाओ। ऑल्टो दबाना, ऑल्टो आ रहा हूँ। ऑल्टो से टीम सिलेक्शन करना है आपके। 3 2 1 ठीक है जीएस भैया। नहीं मैं ऑटो कर दिया मैं पहले ही। सेम सेम टीम भाई, ऑल्टो दबा। ठीक है भाई, चलो खेलते हैं। नो मोर नूबजिला, नूबजिला इज नो मोर। डैम ही इज हियर। अरे यो भाई ये क्या मारी है, किसने मारी है ये? पता नहीं, वो सागर भैया। भाई यार खींच ले शुभम ने। मैं खींचा था। अच्छा, पंच मारा था मैंने। एक जैसी गाड़ी दिखते ना, क्या ही बोलूं मैं। नाइस नाइस जी। सॉरी ड्यूस। वो भी भाई, सॉरी माय बैड। व्हाट द हेल? भाई क्या हो रहा है ये? रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया अबे यार मैं रुक गया। नाइस नाइस, लेट्स गो। मैंने वैसे भी कितना 2 बंदे तो पकड़ के रखे थे ब्रो। भाई किडनैप पावर है यार। ओह ओके। लेट्स गो भाई ठीक है भाई, गॉड प्ले था ये वैसे, देख। भाई, ठीक है भाई। मैंने तो ऐसे ही मार दिया था, ग्रेड पास हो गया अपने आप ही। भाई टिप्स तो था जब हम शाम को खेल रहे थे और बंदे के पास वो था, क्या था? ब्लैक होल। शायद नहीं। नहीं था नहीं था। डिप्स तूने ब्लैक होल फिनिशर देखा है? ब्लैक होल शायद देखा है। हाँ हाँ हाँ, सारी गाड़ियाँ गायब हो जाती है ना। हाँ 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 हाँ। भाई सही लगा मेरे को। भाई ठीक है भाई। जीएस भी आ, जीएस भी आ। हाँ ना। ठीक है भाई, चीज तो कर ले इसमें। हेलो
येलो गोलकीपर हो भाई। भैया मैं, क्यों कर रहे हो ऐसा? यार भाई हेलो उड़ उड़ के बातें हो रही हैं यहाँ तो सामने से तो। उड़ा दिया अब तो मैंने अनिकेत भैया को। ओ ओ नो शिट। भाई ले गया ना ये अनिकेत, लेकिन यार गोल की तरफ जब जाना तक हमारे चाहिए, पास गोल एक की तरफ एक्स्ट्रा जाना। बंदा था ना डिफ, तब तक सही चल रहा था। भाई मेरी स्क्रीन के सेंटर में टारगेट बना आ रहा है, स्क्रीन खराब हो गया, खराब हो गया गेम। क्या क्या आ रहा है? क्रॉस हेयर आ रहा है क्या? हाँ वो जो वो आता ना, सही हो गया। हेलो भाई तू क्या? भाई कैसे मार जाता है ये वाले 1 मिनट शॉट्स? का मैच तो लड़ देता हूँ, बहुत गुस्सा आता भाई तू बता डिव्स, ये कैसे मारा है, ये कैसे मार जाता है ये वाले शॉट्स? है। ये सीखा होगा इन्होंने, 4 साल खेला है। 5 साल खेला, 4 साल खेला? मुझे नहीं पता, कई साल खेला है, इतना पता है। नहीं साल, अबे यार गोल पे मार देता। भाई अनिकेत बैठा था सामने से, बदतमीजी थोड़ी कर मेरी सकता हूँ ड्राइव मैं। तो कर ही लेता एक बार। देख मैं मुख को मार सकता है, अनिकेत को नहीं मार सकता, देख समझा कर तू। अरे यार यार कुछ ऐसा लग रहा है स्पेशल पावर आई नहीं हुई है। स्पेशल पावर नहीं होती है, स्पेशल में बनाना पड़ता है। भाई ठीक है भाई यार। बना दिया भाई, अनिकेत ने बना दिया पावर का स्पेशल। भाई अनिकेत से मर्डर करवा दिया मैंने अब। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, अमुक बस्टर नो। नो लेट्स गो। क्या कैसे वो- शुभम के ओ कैसे हम कैसे किया क्या तूने? स्पिन किया, वो स्पिन किया वहां पे मैंने। ये देख। ठीक है भाई। मैंने इसे हटाया है भाई, ये चीटिंग है भाई। ठीक है भाई, हो गया। रुक गया, अभी भी मार दो कोई, भला हो सकता है हमारा। ठीक है भाई, नहीं समझती किसी लाइफ में नहीं। What the hell? What the hell? हेलो अबे नाइस। Shit. भाई डिव्स क्यों आया तू मेरे रास्ते? मुझे नहीं पता भैया कि मैं आपके रास्ते में हूँ। मैं यहाँ पे बंदे मारने के लिए खेलता था, को पता नहीं है। मैं वो बंदा हूँ जिसे आप मारने के लिए खेल रहा, ये नहीं पता था। नाइस सेव। मैं रोक ली, ओह नाइस। अरे मुझे चिपकाने देते, चिपकाने देते। डिव्स रात चिपका ले डिव्स। हेलो घटिया। भाई ठीक है, खींचाता नहीं चल रही है। वही देख रहा हूँ मैं भी, क्या ही अलग ही चल रही है लेवल पे। नहीं भाई जीएस नाइस से भाई। नो कैम हो गया भाई। ठीक है। Must shot. जीएस 2 गॉड लेवल प्लेस करके गया। अबे चीफ कहाँ गया बे? उठा लिया क्या दोबारा? भाई नहीं, उसको नींद की गोलियां दी जा रही है सुनने में आया। मैंने लीव कर दिया। ठीक
आगे चलो। चल मैं भी जा रहा है सागर, कल मेरा एग्जाम है, पढ़ूंगा थोड़ी देर। एग्जाम में कौन पढ़ता है ब्रो? But it's pretty darn good. And hello. Hello. The TBM you can find buried under 16 meters of ice in the Arctic ice cap, and as soon as you turn on the anti-ice, you'd be flying in the Bahamas. Guys, now open the ice guard mask. What does it do? Sorry? The red button to the left of the display, the ice guard mask, it says. I'll have to spawn in and have a look what you're talking about. DA62 should have a little silver switch which gives off, low, normal, and then a special overdrive button for high de-ice. I've been having this issue recently where when I spawn in, sometimes it gets the date-time settings wrong. A little bit odd. MSFS time, boy. Yeah. Oh yeah. Yo Amok. Bro, Amok. मेरे को यहाँ पे बोल देगा Now 4 open तारीख the के guard बाद mask. It खिलाया नहीं says जाएगा the ice 20 तारीख तक alternate जब तक switch एग्जाम off में पूरे हो or जाते on. हैं। I don't know what that does. तो याद भी नहीं। Ah, okay. रुको जरा फ्लाइट का Maybe डेटा it's डाउनलोड करने दो। Event if you're, I know there's a backup pump underneath. Alternate de-ice. Oh yeah, perhaps. I don't know. I mean, with de-ice, it's something where you want lots of redundancies, isn't it? You don't want to be caught with your pants down. No. इजी सा गेम हो गया Amok। मेरे को पता नहीं। Oh, the game capture is working. Nice. Yeah, flights in. अच्छा वापस बोलो, सुनने में नहीं आया। मैं कह रहा है कि इन लोगों को पता चल गया, मतलब बातें चल रही थी तो इनको पता चल गया मेरे एग्ज़ाम में यहाँ पे क्या कहते हैं लाइफ की बातें चल रही थी, तो इन्हें मैंने बताया मेरे एग्ज़ाम में। तो दे सेट 5 तारीख के बाद से तेरा आना बंद हमारे सर्वर में, 20 तारीख तक 2 वीक्स का टेम्प बैन इशू कर देंगे नहीं अगर आया तो। सैड सा कैम हो गया यहाँ पे। वही तो वही तो अमोघ, वही तो। अरे पता नहीं गेम नहीं लोड हो रहा साला।
होलसम बुली। अगर कोई आता है ना चैट में, तुम्हें 2 मिनट में आ रहा है, ठीक है? और तब तक गेम भी लोड हो ही जाएगा।
यार पता है मैंने ये सोच रहा था कि साला एनसीएस के पास ना बड़े लिमिटेड गाने रह गए हैं. Like you really have to move some songs if you want to listen to new songs. एनसीएस डेड होता जा रहा है. अब सब कुछ पेड ही चल रहा है आजकल ज़्यादा. देख तो जब ये बात हो रही थी ना तो इसके बाद ना मेरे को इसने मैसेज भेजा, हेलो अमोघ है क्या, वैसे क्वेश्चन मार्क. तो जब मैंने बताया ना तो ही वाज लाइक फिर तो मैं तेरे को बैन कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा. और फिर तभी तेरा और अनिकेत का मैसेज आया था कि आ जाओ. तो आई सेड ओके आई एम लिविंग डिस्कॉर्ड. इसको लगा मैं सेंटी हो गया. तो फिर इसने मेरे को डीएम किया कि दिस क्रैप विल नॉट हेल्प यू, ये वो. मैं बोला इफ एनीथिंग जस्ट ट्राई टू डू द इवेंट्स अ लिटिल बिट अर्लियर. तो देख लो भाई आज 1 बजे चालू हो रहा है, मतलब 1:15 तक चालू होएगा. अब 15 मिनट पहले ये चालू करता. मैंने इसे बोला कि सुबह 5:30-6 बज रहे हैं. तो मैंने इसको बोला देख ले 1 घंटे जल्दी हो सकता है. तो अबाउट ऑफ सो मेनी पीपल आई हैव 3-4 पीपल हु नो मी. ये जो फोटो है ये तो अच्छे से जानते हैं मेरे को. इसका तो मैंने क्योंकि पीसी सही करा दिया, इसका पीसी हागरा था. बाकी एक ग्रांड जिलेट करके बंदा है और एक बो करके है. बो इसलिए क्योंकि बो की मैंने ईगो हर्ट कर दी थी तो वो तो याद रखेगा ही. बो को मैंने बोल दिया था तेरा 5600x 3080 को बॉटल नेक कर रहा है एंड ही सेड नो एंड ही वाज राइट, आई वाज रॉन्ग. आइए लोड पेज आ जा. आ गया लोड. देख 1:28 है वैसे ऑफिशियली देखेगा ना, बट ये चलेगा 2.5-3 घंटा. कौन सा प्लेन उड़ा रहे हैं? DA62 टर्बो प्रॉप से आता है क्या? हाँ ये इसकी लिवरी डाली थी मैंने. कोई लिवरी नहीं डाली मैंने. क्या मजाक कर रहा हूँ इस प्लेन की. अरे देख मैंने ना बड़ा सही सॉफ्टवेयर डाला है, ये इसने ही बताया था मेरे को. हम इसकी लिवरी यहाँ पे देख, ये रहा. आई लाइक 5600x बट आई डोंट हैव मनी ब्रो. मैं तो यहाँ पे लोगों को उधार दे चुका है, वही वापस नहीं मिल रहा है. देखते हैं क्या क्या आ रहा है इसमें. Oof, red is looking good. Red X actually. How's the default red looking? Not that great. Not that great. Green X. Actually no. Gray is looking decent. nah. Oof, ये अच्छा लग रहा है. ये जो सुपर फिनिश्ड है ना ये अच्छे लग रहा है. I'll need to restart game to like use all of these, but I'll do that.
अभी तो वैसे भी एक बार स्टार्ट हो गया ना, तो दूसरी बारी जल्दी स्टार्ट होगा। क्या क्या चालू है इसका? एंटी चीट खेलने तो वाला नहीं, मैं अब बंद ही कर देता हूँ। मैं सोच रहा था इफ पीसी बनवाना है तो मुझे तो कितने में बनेगा, तो 1.3 L का हो रहा था। मैं चुपचाप टैप क्लोज या हम लोग थोड़ा ना इधर उधर पैसा लगा भाई कि कुछ रिफंड मतलब निकले, मतलब रियल लाइफ। अदरवाइज पता है, तू अगर खाली गेमिंग से पैसा निकालना चाहेगा ना, तो अगर जैसे CS का बैटल पास है, अगर तू वो पूरा करके सामान बेचता है, देन ऑल्सो यू आर इन लाइक 3K प्रॉफिट। मेरे को तो नहीं मिलता घर से, तो आई हैव टू थिंक फ्यूचर। स्पेसिफिकली फॉर दिस नहीं मिलता। वैसे भी और हैं मनी कॉन्स्ट्रेंट्स, बट आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट। kills the vibes a bit, so I don't. Okay, let's load this. Finally, वैसे मैंने अपना कैमरा चला लिया, so my camera will now move in game, which wasn't working earlier. Let me turn off display capture. Your game capture is working fine. Nice. मैं जरा ये स्ट्रीम का टाइम, ओ गेम टाइम क्या उड़ गए हैं क्या ये लोग? एक्चुअली आई डिडंट पे अटेंशन इफ ये लोग उड़ गए हैं तो। एंड एक अच्छा, वैसे मैंने कर लिया था जो मेरे को करना था। आई थिंक मेरे को करना है गेम टाइम 1930 UTC। 1930 प्लस अभी कितना हो गया? 4 मिनट 10 मिनट।
थंबनेल और वो अपडेट हो गया क्या? गेम अभी मैं चेक कर लेता है गेम का क्या। गेम भाई अपडेट हो गया क्या? गेम भी हो गया। लेट्स गो पूरी स्ट्रीम अपडेट। Today I tried out a new game. Actually not a new game, it's a game which is older than this. But yeah, I tried playing that. Was fun for the little time that my friend trained me. Do you remember that guy when I first started playing MSFS like earlier in August last year? Around September actually. I had a friend who was yes, a game has effed up for sure. What time are they using? Game time 3 UTC. Okay. Wait, they are using some different. And it will spray a bunch of de-icing fluid. And it will de-ice your windows. How do you zoom out on the map inside the plane? On the screen? On the right-hand side, on the MFD you mean? Yes. There's a ranged button on the right-hand side, and you can spin it and rotate it. Ah, okay, I see it. Thank you. That's right. What's the in-game Okay, time? what? Sorry? What's the in-game time? In-game time is 13:42. Okay. Can you guys hear me now? Yeah, we Yep. can. Yes, we can. Dare I ask what time it is for you, Sagar? How do I turn 1:15 on a.m. Hero Heater stuff? Sorry, what was the other question? So I'm not familiar with this plane. Bro. Pitot heat or anti-ice. Where's that stuff Let at? me go, bro. So pitot heat is underneath your main display. It's a really big white button on the right-hand side. Near the three The- greens. Near the three greens, yeah. The anti-ice is to the left at the top of your PFD. You'll see 3 lights, a white light and 2 orange lights. There is a switch in the middle left, which is currently on. Emog, when you say yeah. No, actually he offered me a job earlier. So maybe he wants me to do good, so that he did offer me a job, but I refused it. मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं उसके बारे में. So maybe he's trying to do good on that. Okay, this is freezing. We're going to be good on the initial ascent, and then we'll be backing it off depending on conditions. Okay, so we're coming up to that time. If we can all set our de-ice to high, and make sure you de-ice your windscreens, that would be awesome. Make sure you're completely clear. There we go. I'm going to give it a few seconds for the de-ice to get along the wings, because sometimes it literally doesn't make it to the end because it dribbles out. We are literally icing up on the ground. That's awesome. Right, taking a screenshot. I think we have some airliners with us. I'm hoping. Wow, is Fly High in a normal aircraft? That is fantastic. Thank you, Fly High. It is much appreciated. Yes.
Where's the de-ice? Cool. Well, I don't see any other airliners, so oh, I see. I've got some glitching going on. I'm going to say if anybody's in an airliner, if you can roll now, everyone else spool up, please. Yeah, there's a 747 in here. Ah, I can't see him. Can you point to the de-ice on your screen for a minute again? Yep, left of them display. Yeah, you're going to put the switch up to high. Okay. Cool. We going on All right. line? We're going to hand fly it initially because we've got quite a lot of heavy cloud cover around here. Okay. So I will be navigating us up, and we'll be rolling in 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go. You may want to check if your flaps are set to 20, because I believe on spawn configuration they are. Let's go, let's go, let's go. यार मैं डिस्कॉर्ड में वो सेट करना भूल गया, मेरे को ना की सेटअप करनी थी. But I got something working. I'll show you. You see, now I have height working properly. And rotating. And the carriage up. Don't forget it. Bro, Flight Simulator official liveries are actually good. Oh, nice. That ground fog's awesome. Let me reduce throttle. वैसे मैंने वो भी डाले थे, क्या कहते हैं, मैंने ना यहाँ पे मॉड डाला था. We should be able to see these pilots, but पता नहीं, it has effed up or something. We could stay behind between the layers of clouds here. That works for the initial section, but when we hit the pink area coming up in front of us, we will be forced to climb or fly straight for it. These guys are maintaining a pretty fast speed. Okay, I am setting my de-ice to normal. Continue my ascent. Dude, this one looks so weird though. Like flying this in first person. So I'm gonna throttle back to 95%. It's kinda just to weird. give you guys some headroom. I think Just wave goodbye to the airport. We were very lucky to land there safely the other day. The conditions we were in. Okay. What altitude? I'm currently hand flying it. I'm essentially climbing, keeping us relatively close to the nav line, avoiding flying through clouds, and looking for a way to get above this upper layer of cloud without turning us into blocks of ice. So the reason we are climbing is, otherwise ice will generate on our wings. It's beautiful. Because of high amount of cloud outside. It's not half bad, is it? And will not generate any further lift. And when you don't generate lift in an aircraft, you know what will happen. Dear, everybody disappeared now. Why has everyone disappeared? Oh, because of a bug. Yeah. Okay, yes, that's perfect. So we're heading for a gap in the clouds up here. Hopefully.
कौन है ये अंग्रेज? We Seven, are yeah. we are in the official flight sim Discord. This is 152 foot now. and mouth. Yeah, He's I can the get back with lead. it, so- Oh yeah, you won't keep up in an icon. Yeah, I have a tuned, the tuned one. There's also this AP and GX touchpad. Yes, I think he. I could suggest it. Welcome to Mother Russia. It'll take a lot of tuning to catch up with these guys. Yes. It's really strange. My live weather looks totally different compared to yours, Footy. Is yours completely clear skies? No, not at all. But it just looks different. I don't have that type of fog that you have. Are you on the same date as us? What? Oh, damn. Are you on January 31st? Yes. It's probably Oh no. I'm February. That's probably why. Yeah, okay. Future time doesn't work for weather sometimes. Yeah, but are you on the 31st or on the 30th of January? He said he was in February. No, I mean you. 31st, I believe. Yeah, 31st. Isn't it live weather? Yeah, but sometimes there's bugs. Okay, so you should. Are you guys seeing a hole in the clouds where I am now? Yes. Okay, awesome. Okay. I don't understand this. This doesn't work for me. I can't go 31st and have it at 3 UTC. You have to spawn in like that. I forgot to switch it back last time. I had to restart the PC. Damn it. But how does the day influence the weather? Classes tomorrow. The live weather. What night tomorrow? Airspeed? Last sim project करना है. Okay. Airspeed's around 120, but you were very, very Bye quiet. boys. Good night. Yeah. I'm just trying to climb and I lost a bit too much speed. This was the hole I was looking to get us up through. I have different weather as well, but I'm on live on the 30th of January. Should be fine, theoretically. I'm super disorientated. I have the same weather as you, Bo. I did some experiments by changing time on live weather, and it made no difference for me. Yeah, same. Is my day weather different than y'all? Wow. Should we go into? Just So going are we into hand some flying or are we doing autopilot? Grant, can you look outside? manual. Currently hand flying. We're just trying to avoid flying through a cloud Yeah, at the you have moment. the same as me. Footy has a different one. Yeah, well, that's how it is. Broken through. 12,000. Wow, 12 already. That's insane. Oof. Hard climb. If we go up a little bit higher, we'll break through the clouds. I haven't actually been in the cloud yet, apart from takeoff. Yep, same. It is starting to look nice up here. Yeah, I'm backing off on my throttle again because I did punch it to go up through that hole. Right. So I'm going to set cruise to 15,000. Flight level 150. I'm going to climb up to 15,000 at 800 feet a minute. And I'm going to resume the nav line. Okay. On left, I guess. Yep. And heading off. Sorry? And your heading will be? Whatever the nav line is, what's that, 113 roughly, depending on wind? Oh, what's your airspeed? So you guys going with nav?
We'll be hitting the nav line once we resume it. We're obviously a few miles off it at the moment, but we're just trying to find a way through the clouds. So my airspeed is currently 143, climbing at 800 feet a minute. But it's Currently, in ground speed is. Where is my ground speed? Oh, it's underneath. There we go. Ground speed is 153 knots. He disappeared. Really? Yeah, I've still got. I think it's Oh, I'm skydive on behind my you. way. Must have been when I clicked outside the game to move my windows. There we go. I just zipped in front of you again. I think backspace से वापस आता. Oh, that is so cool for screenshots. Taking a bit of getting used to this VR. Try not to get dizzy. You in VR tonight, Sky? Yeah, got an Oculus alive today. Oh, well done. Do you feel sick yet? My eyes hurt a bit earlier, but getting used to it. Yeah. So you won't be flying inverted this evening? I think it'll make it easier though, because for things like formation, when you've got these pillars in the aircraft, you can just look around them. Yeah. And also, I think you judge the distance much more accurately. Yeah, and I think the plane's more stable as well. My son, he's much more used to being in a real aircraft than I am, finds absolutely no sickness with VR at all. But I can only last an hour. Biggest thing I noticed when I first put it on was just how much smaller the cockpit feels. Yes, it wraps around you, doesn't it? I found that every time being in a plane in real life, but it's, yeah, you just forget when it's on a Okay, I screen. do you not look want at to a be picture, going up. it looks Please, bigger. we're gonna hold Yeah, 15. yeah, big telly. What's the barrel set to? Sorry? The Barrow. Barrel 30, 30.19. 30.22 for me at the moment. Yeah, 22. That's the worst thing about VR. I can't see my keyboard. Oh yeah, that's a pain. Yeah, I've mapped all my important functions to the yoke, I'm here, okay, so I'm I here, don't have to problems use on the low keyboard. friend. I also found that there's a couple of different zoom options. I think there's a center and a zoom, or something. They're very important to set up because they can really make things much easier for you. I mostly use the move commands instead of the zoom. We're going to have to do some more climbing, guys. I'm going to climb to 17,000 at 1200. There's no mixture to worry about in these aircraft, is there? Yeah, my auto weather's completely different. I'm full of clouds everywhere at your same height. Same. Mine too. Ditto. I'm above the I will clouds. Yeah. descend because, yeah. What altitude do you guys need to climb to get clear of the get clear of the clouds? I have no idea. I'm trying Looks to figure like it out. 20 at least, but yeah. Let's for me. let's try it. Let's push it up to 20,000 and see if we can get everybody into clear skies. Steve, Let's so you go, know, keep you'd have going, to do keep mixture going. Or props either. It's all computer controlled. Fantastic. Thanks, Guy. It's literally you just have a power lever and say how much power you want. Perfect. That is one heck of a 152. My God. Yeah, it does pretty good. You Nice, get out cozy of the plane. clouds above 17,000. Like from 17,000, you slowly get out of it. But the air is a bit rough up here. Yep. I've got a 27 knot headwind at the moment.
Yeah, at 18,000 you're clearly out of the clouds. Awesome. So let's climb to 20,000 and just stay. Just make sure everybody can see. Alright. Is that first waypoint an airfield? I'm hoping to get past some of the bad weather and then we can descend back down. I don't fancy like flying in the soup, you know. Climbing with 800 feet per minute, right? 1200. Roger. Yeah, when I change it to 20,000, I set 12. I understand there's 40 minutes worth of de-icing fluid. Has anybody ever run out of that in the sim? And how do you fill it up It doesn't again? run out in the sim unless you have the 62 modification, then it runs out then after the time. Okay. And it's 3 hours of low, an hour and a Oh. half of normal, or 45 minutes of max. Right. It's not gauged unless you have the mod update for it, so it doesn't run out. That's the important thing. Good. I'm not going to run out. I used to do these with the mod on it, and I used to run out about 3/4 of the way through it, so I'd always have it on high in the condition the footy took us in. Try to put the weather on the second MFD, but I can't see it. What am I doing wrong? You need to click on GPS, and then you need to click on NextRad. I love airliners because That's not the top they have level. to fly though, so hold on, slow so at such heights. you click on map, It's then like you very click hard for on them to do so. GPS, then you click on NextRad. Or you can view it in a slightly different way. I respect the airliner boys. If you have a look at my screen at the moment, you can actually see that we're skimming above the clouds, and below us is the purple clouds. So that's why I don't want to be down there, because that's just going to be a nightmare, sort of 30 miles flying through junk like that. How do I change it to that? So once you're on the display, the map display, you click on the display button, and then inside the weather, you can change it from horizon, which shows you a 2D map of where all the holes are in the clouds and stuff, to a vertical map where you can actually see it like a cross section of the clouds in the direction you're pointing. I'm getting some problems not with changing. stalling. I can't seem to get up my speed. Yep, same. Okay. What altitude? Stream. 19,000 max thrust, climbing at like 15 degrees and it's 8 knots. And it's warning. Can you share your screen so I can take a look? That's close to the ceiling for me. Yeah. Yeah, if you're climbing vertical speed, you can get to the point where you keep slowing down even though you have mod, but you need to lower your nose to speed up. And then you climb up. And I can like fly super fast. Yeah. I think I need to lower my climb. What's your time put? Because I still don't have clear skies. My time is local time 14:04, so it's 4:04 UTC. Yeah, so yeah, you need to get your airspeed higher. So just level out your plane for now, get up above 120 knots, and then stick your nose up again. Roger, thanks. That's all right. What is everybody's altimeter? Mine is 29.
0.92 now because we're above because whatever is the altitude limit. So I'm at hello just climbing up 747. Hello. the last couple of feet to 20,000, and I've reduced my thrust to 80%. So we seem to become a little bit stretched out. Right, so this I'm is flying into a big bad cloud. Me too. Yeah, me too. What, at 20,000? 20,800. Same here. Jeez. yeah. We definitely seem to be on two different versions of the same weather, don't we? Yes. Yeah, because there's no cloud here. That seems Could awful. be also out of place. I'm well clear of that. Probably I the know date I'm then. February the 1st. I'm on January Yes. 31st. Yes. If you January switch, 31st. if you switch from live to clear skies, then change the date back, then you should be able to switch back to live weather again. Did that? That seems to have the same as. Sorry. Weird. I don't know. If you switch to live weather, clear skies, your plane will start going down. Yeah, because the air isn't as cold, so it's not as thick. So you lose Yep. lift. I just tried it. And you are on 406 UTC? Um, I got the same as you, Grant. The same weather. Yeah, I can't Or find also- it anymore. Why are you on? Okay. Who can't find me? On the right year? Yeah, I have the same cloudy weather too. Certainly very odd. Very odd indeed. When will we be beginning our descent? Nelsie is a waypoint, it's not an airport. Oh. Yeah. However, press on. I'm not here just Have I brought enough fuel though? weather is weather. Whether it's there or not. Oh, prowlers and that. And the barometric pressure is what number? 2992, because we're above 20,000. Or 15,000, or 10,000, or Yeah, 12,000. default's after 15, I think. To 15, okay. So I think it depends where in the world you are. What is your speed? I'm doing 148 through the air, 163 across the ground. I'm at 90% throttle. Should be a flight plan in event text, yes, but it's still there, it hasn't been deleted. Dude, ये क्या था? Okay, I need to get Steam off. Steam was causing issues maybe. Not too Hey, this sure, is but I this is turned it nice off. for Prowler. He actually gets to fly almost at a normal pitch. I still have to fly full flaps. Oh yeah, of course, because you're doing 140 knots. Yeah. How's that 152 going so fast? It's probably tuned. They put a Viper engine in it. Clues in the title of Turbo Extreme. How far is Nelsie out? Nelsie is 25 nautical miles. That puts us in the middle of the soup. And after that, we seem to have a lightning of bad weather at low altitude. Then we have another bad bit.
And 150 nautical miles probably puts us close to destination, so it's not going to help us very much. Actually, we're gonna get done with this one, I think, by 3:30. Because this one's going down fast. So we're stuck up here, that's what you're telling us. It's... I think so, yeah. I'm looking at the terrain, and I think it's probably a little bit too mountainous and tricky for us to fly down there on artificial horizon. Or no, you know what I mean. Yeah, sort of virtual vision, whatever that's called. Yeah, Synthetic vision. Synthetic vision. So, I'm looking at it. The terrain, apart from obviously being beautiful and Siberian, actually, I think there's one bit. Okay, so there's a river running from Usin to UHMS that is probably wide enough and flat enough for us to be able to fly down. So I think that maybe even from UAG. Yeah. So what we'll do once we get to the first airport, we'll then try and stay low in the valleys and fly the last two legs. But I think on this particular leg, we're just going to have to stay high. It's going to be tricky for the people that don't have the synthetic vision, though. Well, why would anybody not have synthetic vision? Because they like steam gauges. Oh, I see. I mean, people didn't bring the suggested... The suggested airplane, yeah. Just saying. Well, they just make it harder for themselves. I can't cater for everyone. Oof. It's like when you turn up in your Morris Marina to your Formula 1 race and be like, oh. Where they all gone? Whoa, one wing really tipped up then. I saw that. Was that just like an updraft? Yeah, it wasn't me. I got the same. Wow. Bobbing around here. We are heading over some mountains at the moment, actually, with some ridges and stuff, so it's entirely possible. Are you guys in a cloud as well? No, we're well clear of clouds. Yeah. No, we're in clouds. That's really strange. You guys get wing turbulence from the 747? Sorry? You guys are in You get cloud. wing turbulence from the 747? No, we're not in cloud. The guys that are in clouds at 20,000. Is it worth you having a quick look at the vertical weather radar? Break just above. So shall we try climbing to 22 and see if that gets you clear? 25 is clear weather. Okay. According to your radar. Yeah, I'm at 24, that's okay. Alright. Flight level change. I'm going to climb at 130 knots. Are we going to? 25,000. And I have pushed over as well. Oh, hello boys, get away. I'm Are we going gonna go down and touch and go on the next airport, or? Nelsie is a waypoint, not an airport. After Nelsie, there's an airport, right? Yes, yeah. Is there fuel available there? We don't know. That's why I said top up on fuel before we leave. Okay. Yeah, it has fuel. I'll check now. Well, what altitude? Ooh, there's no fuel at the next one. Luckily, we got those Orcs tanks. Yes, actually, fuel that's at the second one either. Oh, so I've only used 5 gallons from each tank so far, and I've still got
essentially 20 gallons per tank left. Yeah, I had 11 in each of my aux tanks, so I just pumped that into the main. Right. Maybe my on that map, but there's no fuel at any of them. And I see fuel on little nav map for the next airport. Can you? Sorry, Sky, I didn't hear what you said there. I was saying that these can fly across the Atlantic. Oh, really? Oh, I mean, wish this flight should be fine. Yeah. How far am I from this line? I don't think they can. They might be able to go the Greenland route, but they can't. They can't take off from Miami and fly to London. Not from Miami, no, but Scotland to New York. Wow. Against the winds. I thought these only had like a 1700 mile range, so. Oh well. Maybe at 50% tank. Right, but is anybody starting to pop out the top of the clouds now? We're flying at 22,000. At 22. Okay, well, we're continuing to climb. Though the rate of ascent has slowed somewhat. We're What's holding the 22 ceiling? or 25? We're climbing to 25. Okay. Of the ceiling? On this, 20. What altitude are we flying to? 25,000. Flight level 250, Angels 25. I have some bad news. What is it? Oh, don't want to know. My computer is not being really upgraded by sponsorship deals. I am not being sponsored by Coca-Cola. Oh my gosh. But I should be. Oh, I just went through some really bad turbulence and changed my vertical speed by negative 1,200 feet. Oh. Yeah. And again, this is getting rough. Yeah, Got a 35 knot headwind. Why पीछे से तो I'm flying above Monster. Hey, Monster. Hey, how's it going? How's the weather up there? Cold? How's the weather down there? A little bit warmer, but got about the same amount of wind. Negative 41 up here. Oh my. That's negative 41 is how cold it was when I last went skiing. When I got to the top of this mountain, and it was a case of I wanted to enjoy the views and then ski down casually. I was skiing to prevent myself from freezing to death. Oof. I could feel myself dying, and it was horrible. It really was like the worst. When I go skiing, usually it's about 10 degrees C. We go in the April or so. We go to Voriaz, and it's so warm. It's like you have to take off your jumper, your coat, and all that. It's like, yeah. I would think at negative 41 it'd get to the point where it just hurts. Collisions with things really hurt. Thing is, negative 41, because your body is made up of so much water. You'd literally just turn into ice. Mhm. Whoa. What happened? Like, if you stood there for like 10 minutes. I don't know what the hell just happened. You're on your side. Yeah, I know. Maybe you got one of those updrafts? Ooh, there's something windy here. Holy shit. You guys are hitting that wind I hit earlier. Are you behind us? Oh my god, everyone is in a formation. Oh my god. Where are you flying from, guys? We're just kind of clustered here. Where are you flying? We are flying. The next waypoint will be Uniform Yankee Alpha Golf. I don't know what the hell just happened. Or the pilot glitch, was it?
It may have, because I don't think headwind or turbulence would have done that. I saw you fall from the sky. When was the last time that the MSTCA side stick was like in stock? We're in the vent here. We can talk about stock of hardware later, I'm afraid. Yeah, sure. I just want it so bad. Off topic is off topic. Yeah, good point. Coke did a side stick. And I just pop into off topic then. Anyone for a touch and go at Uniform Hotel, Mike Hotel? Uniform Hotel, Mike Hotel, where's that? I have it kind of halfway between here and the next waypoint. Okay, I don't see that. Where's... Where is it? Is it above the line or below the line? I believe it's above. Yeah, I can see a couple of waypoints. Simul, dig me. I don't see anything else. Have you got any mods installed? No. I'm looking at just the maps. In-game map or? Little nav It's there on Little Nav Map, just not registering. Hey Foot, could you look at my stream for a second? Don't worry, I'll land at the last airport, that's fine. Okay, what's up? Whenever I press nav mode, watch what happens. Okay. Well, first, catch your plane and put it back flight level. He's low right now. Get your plane so it's again level flight and not losing speed and climbing at 4,000 feet a minute. We'll try a couple of things. I must admit, you've got a great view back there of all those labels, but you really need tiny labels. Yeah, I know, I meant to download that, I didn't get over to it yet. But I will. Okay, so zoom in on the autopilot controls. Okay, click on HDG. And then click it again, turn it off. And click on Alt. Altitude. And click it again. And again. Okay, now turn on autopilot. Let's just see. Let's just see what it does to you. Can you move your screen left a little bit so I can see the compass? No. Dude, I'm getting nauseous by looking at the plane. Yeah, I don't know why it's doing this. It seems like when we hit that waypoint, it started doing that. Click on HDG and change your heading to be 120. Oh god. Have you got overspeed damage turned on? I do not, which is a good thing. Yeah. Have you turned on heading mode? Yeah, Can we look at the outside of your plane? So your rudder's not hard over.
I don't see any major deflection on your ailerons. Can we go back in? Can you look down at the hover over the rudder wheel there above the throttle? Can you zero that out? Can you now level out your plane? Have you got rudder pedals attached to your computer? I do not. Have you got a twisty joystick? I'm using an Xbox controller. There's a problem. Have you Peter here, Tom? What was So that? he's got airspeed showing, so it's probably on. That is an odd one. Yeah. What's the elevation? What's the elevator trim? Well, hold on a sec. I don't know. Your autopilot's not even on now. Look, your autopilot's disabled. I don't know why it's doing this. Can you click on autopilot again? Return your trim to 0. It's at 100%. Before you engage anything else. Ah, you Yes. see? Your trim is doing strange things. So, autopilot is on at the moment. Yeah, get yourself into stable level flight again. Just press Y actually to enter slew mode. I've found in the past that slew mode screws up the autopilot. You can put the AI control pilot on, and that normally levels it out as well. Can you pull up? Dude, that's fast. I have to Trim adjust my down. trim. Yeah. Oh my If autopilot God. is off and you can't steer your trim, you might Look have at that some. descent though. It has some control map to it. Yeah. Slew yourself up to get yourself out of the clouds. Okay, so get into level flight. You've got heading mode engaged, yeah? Turn off altitude mode. It is off. Okay, click on VS for vertical speed. And set it to plus 100 feet a minute. No, 100. I don't know what FPM means. Foot per minute. So that would be... Yeah, no, so don't look at that. On the right-hand side, there you go. You're minus 400 at the moment, so click on nose up 5 times. Okay, perfect. Now, level out the plane again. And get it pointing towards the heading that you've got programmed. So if you look on your compass, you need to point it towards the blue marker on the compass, which is where your heading is calibrated to. Put your nose down, you're climbing too fast. Okay, get above 120 knots. Okay, and try engaging autopilot. Hey, look at that. Me who doesn't know how to autopilot. It's doing it again. Awesome. Wow. Oh, yeah, Why is it doing this? You have to manually fly, that's probably needs a restart. Do you have a is it red text above in the MDF panel? Oh, the autopilot's off, yeah. Autopilot? Yeah, it automatically turned off once I took control of the plane. Yeah. Oh, okay. So I would manually fly. Do you have any G1000 mods installed, or any mods at all? I do not. Yeah, I mean, I try restarting the game. If that doesn't fix it, then
I would empty the community folder anyway. I'm gonna probably just get in a new plane, like, while I'm still in the game, using the toolbar thing, and see if it does it to any of the other planes. Have you tried unplugging your game controller? I could try that. One other thing with the controller, if you go to the sensitivity page of the controller, check it's all centered. Some Xbox controllers have tendency to drift. Yeah, I'm not sure. It just froze once I disconnect my controller, so give it a second here. Yeah, that's normal that it froze. From what I can find with another guy that flies with only the controller, he had a problem with the left joystick. He need to pull that joystick just upwards instead of clicking it down. Just do the reverse, and the autopilot resumes its course. He says. So try to pull in the left joystick to make it go up. Yeah. Okay. I'm going to descend. To descend to 5,000. And I'm going to descend with a flight level change mode, in fact. 130 knots. Yeah. And I'm throttling back. Yeah, I'm just getting under the clouds around 6,000. I don't know what the best speed for descent is, but 130 knots is what I've picked. What are we going to? 5,000. On Thank you. the 5 flight level. Flight level 50. Roger. Do not forget to engage your de-icing pumps if you've had them off for a while, because it's likely we're going to go through some icing. Will not put it too high. Yeah, I will once I intersect with cloud, but And approximately when will we start descending? At what distance? we're descending now. I'm waving at you all up there. Hello. And we're descending down to 20,000. 5,000. And the descent rate at 130 knots with no throttle. Okay. How do I change my vertical speed In what? I don't see the dial that changes the vertical speed here. There isn't a dial. There's two buttons next, just above the altitude button on the right hand side, or the altitude knob. So it's nose up and nose down. So to decrease or to put negative vertical speed, you click on nose down. For positive vertical speed, you click nose up. Yeah. Okay, I see that now. Cool. I was going to say you're a bit low there, Steve. just trying to hang in there. I decided instead of trying to make it through this hole, which I obviously wasn't going to make it, looks like there's another hole just up front where Monster is. So I just put a little bit of throttle on just to see us over this next patch of cloud.
Man, this is a good distance. Sorry? This is a good distance. Oh, what? To the airport? Yes. Yeah, there's not very many airports in Siberia. Once we hit Alaska, airports are everywhere. In fact, I think it was round. I forgot the name of the place, but within about 15 miles wide by about 10 miles high, there's about 50 airports. I was like, I'm glad I'm not controlling that airspace. Crazy. Yeah. Near Anchorage, that's what it's called. But I gotta be honest, I've seen documentaries, and Siberia is a really nice, untouched country. Yeah. It isn't just a region rather than a country. Yes, region. Sorry. It'd be like calling Alaska a country. Or I was going to say. I was about to say or Canada, but. ठीक है भाई, सबको रोस्ट कर लो भाई. रोस्ट सर्वर बना दिया इसे. Descending. Who is the guy dropping or flying below you? I've got Neo CO801 I've just penetrated him from behind. Oh, you guys are descending. Yes. I see. Descending. We're landing at UVAG. Uniform Yankee Alpha Golf, yeah. Okay. Well, we should do phonetics in Russian phonetics. That would be much more fun. Oh, it's a short flight after that. Ha, But that would be this J, switch right? was actually wrong. And like you're still like 40 minutes away. Russian phonology. Oh my word. This is not as easy as I thought it was going to be. You can really tell who's got the same weather here. Just like I'm flying with you and move up and down at the same speed, but whenever you fly past someone, it's completely different. Full and raised Bazi, yes. Yeah, I think weather's bugged today. By Two sets of Brandon live ने क्या weather. dive मारिया. Yeah, I wonder why that is. Hello Pauline, don't go Teda. आज मैं पीछे उड़ रहा था कि मैं 33 भगा सके थोड़ा सा. Spawn in with the right day. We didn't spawn in with the right day, unfortunately. I'm not on the right day, and I've got the same weather as him. हाँ, Yeah, दिवस I'm भाई, on I'm the not right day and I have tomorrow. की हाल चाल? I think it's that all the Brits have one set of weather, so it might be that we're on a different server, weather-wise. Ah, हमें yes. पता नहीं है वो भी चल रही है क्या कहते हैं racism बाजी. Same server though. Yeah, but your weather is. भाई डिव्स तू पता है कल सुबह नहीं था ना भाई सुबह इतनी BMW वालों की बुराई हुई है ना. No. कहते हैं कि BMW वाले ना हाई बीम पे चलाते हैं. Just no, I have the क्योंकि same वो setting as footy. टर्न इंडिकेटर की पावर Exactly सेव to the करने minute. कहीं तो लगाएंगे ना. Nah, कहते हैं completely they different. don't use turn indicators because they save power for their high beams. I'm on the 31st. January. That's क्या ही Maybe it's बोलूं मैं? depending. क्या ही Mm, बोलूं no, मैं? I was going to say I wonder when it mattered if we spawned in, but I spawned in really late, and I've got the same weather as Footy, who was in quite early. I think
You know, actually, somebody who's got different weather to me, could you go out to your menu, go to data, and turn off multiplayer online live weather? No way. Come back into game. Or resume flying. Set your weather to clear skies. And go back and turn on online services multiplayer live weather. Then come back in and turn it back on again. Because I'm just wondering, maybe there's like a group of weather servers it can talk to, and depending, well, maybe it's just luck which one you get. Couldn't you get the same effect by going to clear skies and back to live? I'm not sure, because it might be maintaining a connection for the weather service. Maybe. Very strange though. भाई यार पता नहीं मेरे को ना क्लाउड का टेक्सचर थोड़ा सा अजीब सा लगता है And the server that you're downloading. बाकी दूसरे लोगों को मेरे को क्लाउड का टेक्सचर अजीब सा नहीं लगता. Well, the weather is done via the data menu. That's the live weather trigger, and that doesn't matter which server you're on, I don't think. मेरी स्ट्रीम पे सही दिख रहा है भाई. जिस मेरे दूसरे मॉनिटर पे क्लाउड मेरे को बिल्कुल सही दिखता है. मेरे को अपने गेमिंग मॉनिटर पे ऐसा लगता है क्लाउड में छेद हो रखे हैं. Maybe. They could be out of sync. भाई क्या ही चल रहा है ये. Maybe they're normally in sync, so nobody cares. And on this one particular day, they're just out of sync for a bit. I think, well, it's happened several times now. I think probably what's happening is there's not enough group flights, large group flights, where people are actively flying through garbage weather that care about is the cloud at 20,000 feet or 25,000 feet. ठीक है भाई इनके सर्वर में बैठ के इनके गेम के वेदर को गार्बेज बोल दो. Yeah, sure. The time is 05:42 UTC. 15:42 local. वही तो टाइम है. And outside air temperature is -20 degrees Celsius. भाई देख डेज हमारा ना गेम एक दिन आगे चलता है क्योंकि ये साला UTC से पहले एक दिन पीछे चलता We're है. currently flying over some restricted airspace. Don't tell anybody. That's you know about it. Foot, I'm pretty sure you're gonna fly right over that airport I was mentioning. Really? Be curious if you, I still haven't seen it yet. So my map doesn't. I mean, you can see on my Twitch stream. I've got my map up. ATC doesn't say there's any airports near me at all I can tune into. I got that secret Siberian airport info. Is Russia's Area 51, isn't it? He's a Russian spy. That's what he is. He used to live up here when he was training. I didn't realize it wasn't supposed to load up that flight data in Flight Simulator. Sorry, somebody was asking a question? What airport was it again, the ICAO? We're heading to Uniform Yankee Alpha Golf. We are currently 47 nautical miles out. भाई लंबा हो गया भाई ये डिप्स पता है. I think by the time we reach this point ना डिप्स we'll be near for because I 1 full wanted hour. to descend. Expect नहीं किया था मैंने. एक पूरा घंटा उड़ेगा ये. Right. फ्यूल की हालत देख ले. 50% ही लेके उड़ा था. Yeah, -31 now. It was -20 a couple of minutes ago. Yeah, you often get inversions where it gets warmer up, but not by that much. That quickly. हाँ ये भी वे पॉइंट है. ये वो है लैंडिंग. Okay. This cloud coming up. I need to somehow get underneath it. Okay, GPS tracking zoom. Bye, skydive. You just flew straight past me and up over my wings. I skydive आज तो मिस से चला रहे हैं. लोगों को अच्छा ही Well, नहीं you लग seem रहा to भाई. speed up an awful lot. Left us behind. They were like And then पहली slow बार down. सीधा Brilliant. उड़ेगा.
Well, I was trying. There was a puff of cloud I was trying to get over, and now I need to descend to get underneath this cloud in front of us. I'm not sure if 5,000 is low enough. You just put the air brake on. Air brake? भाई डिप्स देख रहा है एरिया कैसा है पूरा ब्लैक एंड वाइट फील हो रही है I'm gonna have to take over manually, I'm afraid. I'm sorry. We're gonna die. If it was that random on auto. भाई we are all gonna die Oh, okay. Foot's got the stick. I feel like a JU-87. ये रुको जरा मैं थोड़ा सा ना माउस हिलाएगा JU-87. A dive bomber. Okay, now I have better Stuka. Yes. Oh, where's he gone? Doing pretty well on fuel. Yeah, I'm at 44%. I'm at 50%. I started with 70. There is a mountain coming up, so It's okay, I have a plan. you're only gonna die. That makes me run even more. Oof. कितने नीचे उड़ रहा है ठीक है भाई Too late. मैं 160 की स्पीड पे उठा रहा है भाई ये तो उठ ही जाएगा मैं ही रह जाएगा यहाँ पे Oof. Currently at flight at 3,900 feet. मैं भी जा रहा हूँ नीचे ऐसी कम तैसी स्पीड बढ़ा के आएगा You reset your performance settings coming down. Good point. I'm currently at 4,000 feet. Oh, that looks like some bad weather in front of us. Yeah. That's what purple means. You mean those clouds to the right of the mountain, the left of the mountain, above the mountain? Over the mountain. In front of the mountain? No good choices. Unless we can find a valley. Everyone's a critic. Everyone's a critic. These backseat drivers. I know, right? I'm flying us into the eye of the storm and giving us fun and entertainment, and everyone's complaining. ठीक है भाई ये कर लेते हैं ना Who's complaining? Just stating facts. Yeah, all the people that died last Following time. here now, footy. Complaining is the wrong term. More like being. B word ing. Griping. That's what we Americans call it. Griping. Let's have a grope fest, bro. Anybody fest. said cheese Oof. for the win. That's something different. That's something completely different. Hello Trump fans or what Okay, I think I'm going to turn my de-icers on to high before we get to the cloud. What do you mean before? We're in the cloud. I'm not in clear skies. Well, we're heading towards some gloop, but we're not in it. I guess this is a two different sets of weather problem again, isn't it? I'm in heavy IMC. So, did this get sponsored on the farms too? Because this got way bigger. What got bigger? You said like the Pilots of the Caribbean one got sponsored. Did this one get, or not sponsored, but featured on the farms? No. I don't think so. Nobody's told me that it has anyway. Thought one of your events did. Yeah, it was one of the Pirates of the Caribbean events, and it didn't really get any larger. This event has got a little bit. It contracted a bit post Christmas because obviously less people are on holiday. Oh yeah, probably after everybody got their Christmas rigs. vertical climb करा रहे हैं And then we were down to like mid to 30s to low 40s. Where you flying थोड़ा सा They're like इनपुट दे दो 45 अरे now, sorry so यार a little bit better than it was. we are flying in Say Siberia way मैं bigger तेरे को than what it perfect was location before दिखा Christmas. सकता है एक बार ही ना ऊपर आ जाने दे so that I know कि हम At least the last Christmas, we were still pulling 30 to 40s, so
भाई इसकी I स्पीड do कैसे know कम Pilots of the हुई? Caribbean really took off like crazy ever since that one feature. Well, इसकी our स्पीड कैसे busiest कम day हुई was मेरे को before कोई that बताओ. feature actually happened, and that was 65 people just after Christmas. That was Climb kind of दिख रहा है crazy. Devs. Climb दिख रहा है तो Whoa! climb. Somebody just went past me in Mach 2. Didn't see. Crazy chicken. Some good turbulence. I will always be such a when I hear You got Fly High behind you, struggling to stabilise out. song comes into my head. मेरे पास एक ऐप है Oh, वो wow. चालू करेगा Yeah, मैं उसके बाद से अच्छे से देख पाता है कि कहाँ पे. I popped out facing the mountain. That's fun. Yeah, it just popped out too as well. How do I get my nav line purple again? You probably need to change the active leg on your MFD. Yeah, it's probably you're probably either set to VOR 1 or 2. Any crayons? What aircraft are you guys in? G1000, right? Yeah, G1000. Click the CDI button on the G1000. There's a soft key underneath it that's labeled CDI. Click that until it shows FMS. I think they've already got that. I think this is a case of it didn't trigger when we went past the last waypoint. Is that right? Yeah, correct. Okay. But like the line's white instead of purple, like it's supposed to, or pink, whatever. Yeah. So on your MFD, your secondary display, you want to click the button which says FPL, which is flight plan. And then you want to use your FMS knob to not crash into this mountainside. To scroll down to the destination that you want the active leg to go to. So भाई देख रहा है Devs spin it बकर till देख you रहा है get तो to the कहाँ right पे उड़ one, रहा है. and then Alright, I lost you at the FPL, so I hit FPL. Devs तेरे को ना मैं What was सब after छोड़ एक that? चीज बताता हूँ. So you use the ये पता है FMS अपनी knob, so you screen पे click in the clouds के center to ऊपर make उड़ा it रहा है. start flashing, and then और you बाकी spin किसी the को नहीं large दिख रहा cloud के FMS ऊपर. part of the knob to ये literally move it cloud down पे through float the मार रहा है. waypoints. I think I should be out of cloud. And then once you get to the, I'm assuming you want to select uniform Yankee Alpha Golf. At the bottom of your screen will be something like act leg or something like that, which is activate leg. Nothing is showing up. अब तो समझ रहे हैं इसने ये DI skill क्यों कराया था. I'll have to show you once we touch down. Okay, that sounds Hello, good. Kange. Little busy man, you'll be flying at the moment, I'm afraid. Yep, understood. Fuel जल रहा है मेरे पास fuel नहीं है. Carving a cloud for myself. Seem just to have a lot of problems today. Like usually I don't have problems with these flights. Has been a little bit buggy as of late, especially with the weather. I don't know why people have been having problems with the bugs lately. I haven't had a crash in over a week. It's not bugs, it's crashes. It's bugs with not accurate this or that, the other thing. I mean, I haven't even had that problem in a while now, though, either. It's a feature. Buddy, is there like a big break in the clouds for you right now? The game character. No, so I've been flying very carefully in valleys between puffs of cloud, trying to keep myself out of the cloud layer. And at the moment, I'm just at 8,000 feet, skirting on top of the cloud, heading towards, or heading around this mountain towards our waypoint. Okay, we do not have the same weather anymore. Ever since I restarted my game, I guess we don't have the same weather anymore. It's weird. Yeah, interesting. And I think I've synced up since then. I'm going to set mine to clear skies and then set it back to live weather. Oh yeah. Dips पे आप यहाँ पे हो? ये बताओ पहले. Are you here, Dips पे? I found that if you don't set it to live weather at the flight plan screen and then set it to live weather, once you've actually loaded the flight, it seems to stick better. Yeah, but most of us that's do what that. we did. That's what we did. चलो. We just have two अभी different lots of थोड़ी live देर weather. ये Live weather's सीधा working, चलाता it's दिख just रहा है. differently for different people.
to allow people. I think they to said that catch they up. were preparing He's a at fix for the next 89% power, so the next we'll sim catch update. up. If I keep it around 90. I heard on the stream that they didn't even know live weather was a bug. Really? Yep. Uh-oh. I heard that. Actually, we'll catch up. No, it's a feature. Exactly. It's what gives the game character. Yeah, live weather needs to have randomness to be fun. Troll कर रहे हैं bro Microsoft को. Microsoft उठा लेगा इन सबको. What if this is actually how the aircraft actually respond in real life and we just don't know? There's enough pilots. देखो, अरे सीधे चलने हैं यार भाई. Whereas actually it kind of does. They just think that the way other sims have done it is better. Yes, what they mean is it's not what they're used to. Yeah. देखो डिप्स भी है. अब ये डेटा आ रहा है, इसमें लोड हो रहा है. जैसे लोड हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ. उड़ रहे हैं. In the cloud tops in the distance are all like cauliflowered for me. Yeah, me too. The one directly ahead of us looks like a massive storm cloud to me. It might be underneath the airport. Great. भाई Underneath. इसने हाइट गिरा ली, क्या किया इसने? Going back. ये हाइट गिरा रहा है अपने. Yes. We're used to being upside down, right? Display capture. देखो डिप्स भी है. We are flying over here. I'm down to 71% Mother power, Russia. so hopefully you can all You see, stick with. if we keep going this way, we reach USA, Canada, USA. But world is flat. See, this proves world is flat. It is. Oh, we're gonna land at this देखा कि airport. world flat नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं. Or is it just a waypoint? World is flat. It's an airport. There's an airport, but I can't see it. I can't see anything. We're supposed to touch down on it. Negative contact. I'm at 3,300 and I don't see anything. It's just pitch gray from clouds. Want to go up to 7,500? You're skirting the tops of the clouds. It's beautiful. Gotta get up there with the cool kids, bro. What is it that the new kids are saying these days? Is it like be good or something? A 9. Get good. Get be good. Get good, bro. Get good. Wow, that you just gave me a freaking aneurysm by saying that. मैं तो कह रहा हूँ डिप्स वही बेस्ट है. I've never been That's very just as good. bad as Ratchet, bruh. I've never been very good at cool kid speak. I must admit. I just Yeah, flew what up an altitude airport is at 3,000. What altitude is the airport at? The good thing about मेरे Footy, though, दोनों he is monitor बंद होने वाले हैं dreadfully अभी. honest. बदतमीजी करके. Should be at अगर हम 1,600. मॉनिटर में एक बारी बटन दबा दूं Roger. तो कहेगा I'm honest मैं if you जा like it रहा or not. Hey, Yeah, that's yeah. not necessarily a bad thing, though. Too many people coat it with sugar these days. People come at me with information coating it with sugar much more. I'm gonna end up a diabetic. Are we gonna do a false stop and landing or touch and go? That's a full stop here. We need a break. Yeah. Yeah, we need to figure this out. Crash and go. Are you following the autopilot, or you're manually flying over there? I'm manually. Does anyone have a visual on the runway? No, no way. Okay. Have this airport light? IMC to the ground, so I don't understand. We're gonna have to have an alternate airport. Well, I mean, if you got a G1000, you can see it. ठीक है भाई. I'm not entirely sure we can. ये कह रहे हैं इस डिस्प्ले से You लैंड can करो. kind of at least get a general idea where the flat spot is. On the I'm at 3,000 and I can't see it.
I don't know where I'm at. Aim for the smooth area on the G1000 screen. You'll be fine. That's what my flight instructor says. Just aim at the flat spot. That's what your flight instructor. Aim for the flat Yeah, spot. yeah. You'll be fine. That'd be funny if he added that at the end every time. Mountain Just land right there. You'll be fine. If he says that though, and you're flying into, I don't know, Lutla or Caraval or wherever it is, it's not going to work, is it? Or if you're about to do a water landing, just go there. You'll be fine. It's flat. You'll be fine. Oh, we're horrible sometimes. What are these Yeah, lines through the touching clouds and down. stuff? Has anyone noticed them, or am I the only one getting them? I've had that glitch. No, but Yeah. I know what it is. Or I don't know what it is, but I know what you're talking about. Yeah. Oh, sorry. You have above 10 feet of visibility above the ground. I just nearly hit a tree. Oh yeah, the only reason I just saw a bunch of trees on top of a mountain was because it was obscuring someone's nameplate. Oh, up. Is this river an airport? Terrain. I'm gonna skip this airport. He's like, I'm just gonna do a holding pattern and wait for y'all. I'm not even gonna do that. Pauses the game. I might do that. Pause. Grant, what line Oh, do you that mean? cloud is still burning fuel. I'll show you It's in a like, little bit. we don't have to land at this airport, just pause the game. Real life, too. Alright, runway 14. Looking for runway 14. Do this place has to run? No. Should be runway 30, shouldn't it? Yeah, I'm going 32, sorry. 32. Runway 32. Runway 32. No way. तो बहुत तेज गिर रहा हूँ मैं. Come on, live on the That's a edge. hard refuse. And if you crash, we'll build a memorial. The response should not be no way, it should be unable. Unable. Visibility 0. Grant, there is one horizontal line in this one. It is the horizon. Talking about vertical lines or slightly diagonal lines. I'll show you. I'll give you a screenshot here. I get color banding as I enter a cloud. I get like this banding effect. But that's Take a just look at my screen. There's one right below me. I see it. Yeah. It's like, and you can follow it all the way to the ground. It's crystal clear in that line. Yeah. Oh, It looks wow. like somebody cut it with a knife. Yeah. That's super odd. Man, I can literally see nothing. इसमें लैंड करने वाले हम. Let's go, devs. Skin in the treetops. I don't even know how close we are. I saw the tree. I crashed into it. We're 5 miles out. Oh, I can see the ground. And my speed is not showing. Nice. I'll turn on your pitot heat. But these clouds are moving like heck. It's called the Yeah. wind. Well, I didn't actually thought, they moved along in the game yet. Oh yeah, they do if you have the graphics setting right. Do you remember in Japan when I couldn't fly over the mountain because I got my DA40 iced up, and then when I tried again 40 minutes later? Oh, we remember. They fixed all the elevation data there. Yeah, they get hamburgers here. Even at 100 above the ground, I can't see anything. ठीक है भाई, क्या हो रहा है ये? क्यों जा रहे हैं हम इसमें? There's an airliner on my 6. Rest in peace. It looks like McDonald's here. You guys already landed? No, not yet. What direction is the runway facing? I'm going to come in on 3-2. I am going to overfly the runway on the way past though, just to have a good look at it.
It's just Short white. man. You can't really see anything, and it's rather short as well. Nice. Okay, here we are. What kind of... Foot is showing the same kind of weather that I have. Touchdown! I'm right at the end of the runway, with my lights on. Smack in the middle. I am tempted to be lazy and just bring it in here. Yeah, let's try. Swag, you're way too much to the left. Oh my god, how did I do that? I think you overran that. No. Don't forget your gears. Good night, baby. It's okay. You guys can line up on either side of the runway. That'd be real helpful. Dude, I literally didn't see anything. 11 feet per minute. What's the current airport you're at? We are just stopping at Uniform Yankee Alpha Golf. Uniform Yankee Alpha Golf. Love you, baby. I might hit 10 feet per minute, but I hit it really hard. Yeah. Yeah. What was that airport code again? Uniform Yankee Alpha Golf. And there is fuel here. Yeah. Nice. Yeah. I don't actually need any. I have enough, so. Nice. Comiste land हो गया Yeah, I didn't make it. once you get a minute foot, then could you help me sort this out then? Yeah, let me take a look. I'm just getting myself lined up on the runway while everybody comes and refuels. There's a refueling stand. Right, show me what your problem is. Honestly, I just don't know what I'm doing here. Okay, so what are you trying? Okay, It was about the click on the FMS button at the end of the knob. Yeah, no, toggle cursor selection. There you go. Now spin the big FMS knob, the one closest to the screen. And you want to scroll it through to Uniform Sierra India November. There you go. And then at the bottom there's something act leg. You click on that. No. You got to go. Okay, and at the bottom of the screen, separate button where the map, like along the bottom of the screen, there's act leg. Oh, okay. There you go. Okay. Alright, and that's it? That's it. Now you've activated that leg. See how it's gone purple? Thank you, yep. No problem. Right, I'm going to do a quick check. Can somebody share their MFD with the GPS weather data turned on? Yeah, look at mine. Okay. Yo, thanks for fuel. I pay you mine. You on West Europe or East Europe? North Europe. I asked Dave. It's the only stable server. Do this much. Could you change your weather display to be GPS rather than weather? Your friend कोई नहीं. Okay, now everyone's loading in. You mean next, right? Yeah, the next rad stuff. नहीं बिल्डिंग में कटेगी भाई. So click on the display. There we go. Right. So can you zoom in one click? कटेगी क्या? काट दो कट रही है तो. No, too much. Zoom out.
Okay, perfect. That looks almost identical to mine. Do you have the same weather as me or not? At the moment, yes, but above this clouds, that's totally different. Okay, so where are some differences we can highlight on this? Okay, who has different weather to me that I can look at their next rad map? Mine. Look at mine. He'd be like, mine. I wanna get Mine's up for you then. What times are you the in? clouds to ultra. Can you zoom in a little bit, please, Envy? And texture resolution to ultra. Oh, too much. Look at mine. I'm right above you. Okay, hold on. That's perfect. That's exactly like mine. So that's almost exactly the same as mine. Are you at 1610? Let's see. Let me see the You've got a little bit more of a green bit sticking up. What is UTC? Decent amount of usage on GPU. Local time should be... Oh, hold on a second. I think my time's out. We started at 3 AM, didn't we? And that was at 19:30. So we should be 1 hour, 40 minutes in front of that. So we should be 4:40. I'm 30 minutes out. Yeah, so am I. It's weird. So, should it be 4:38 UTC? Now we have the same weather, I think. What was UTC again? 4:42 for UTC. Okay. 04:42 AM if you've got 12-hour clocks. Yep. Yeah, we've got the same little gap in this green patch off to the right. Okay, maybe that was it. Maybe I just messed up my time, and then you guys didn't. And Check, mic check. Yeah, loud and clear. Thank you. Right. Anyway, 1 second. Let me just check the advert because the advert's gone again, isn't it? So 0300 UTC is the game time, and that was at 19. So it's almost 2 hours. So it's almost 5 o'clock. 4:40. Yeah. Okay. I was 30 minutes out somehow. I don't know how that happened. Yeah, but me too. I think we all had that problem. No? Maybe. Anyway, let's get on the runway. Let's get ready to roll. If everyone can line up, please. And we're going to spool up. And airliners, go, please. And everyone else in 5, 4, 3, 2, 1, go. Release the hounds. Get to the chopper. Okay, full forward thrust. Hello, कूड़े की तरह उड़ लो friends. What's the rotate in this plane? About 9,500 knots, I think. Let's go. Okay, so taking this round to the right. Fairly hard bank. Landing gear up. Yo, am I inverted or what? Seems like I am. Don't tell me I'm going to hit something. Yep, I'm going to hit the ground. Snowing hard here. Oof. Let's go.
Nothing happened, bro. Nothing happened, bro. Back Nothing happened, bro. 65%. Realised I was going a bit too quick. No one saw this. When you say snowing, you Because mean no at one home watches or my in the stream. game? Yeah, at home. Yep. We were meant to get snow today and yesterday, and we didn't. Yeah, we're supposed to get close to like 2 feet here by tomorrow. That's we're supposed to get here in New Jersey as well. Yep. I'm in PA right next to New Jersey. There you go. You following the nav line? Nope. Now that we have speed, we won't die. You following the river? I'm in chat. Trying to find, because as we fly down here, in the next couple of miles, the weather should start to break a little bit. Okay. You're pretty close to the ground. Yeah, 1,800 feet you can actually see the ground and the trees, which are a couple of hundred feet below you, so I'm going to try and float in this kind of band of distance while keeping an eye on the synthetic vision to make sure I'm not missing anything. I'm backing off to 55% as well, trying to slow the plane down a bit, give me a bit more reaction time. At the moment it feels like I could be flying into a wall and not see it. Well, Steve's still with me. It's a challenge. What, to stay on my wing or not to crash? Yeah, well, being slightly below you and not hit a tree. Does no one see their own stroke? What happened to skydive? Okay, you don't see your own stroke, but others Might can be see Christmas. Nice. it. Weird. That's Is it river Gregorian underneath. Christmas? Sorry? Is it Gregorian Christmas? It's the reason he disappeared yesterday. He had a sort of late Christmas thing. Hey, there's something running on the. Oh no, it looks like cars or something on the road. Is it? You can see a road. It's either a road or animals running along the ground. You guys can see? What? You guys can I can see some trees now and again. Yeah. I think the ground. Yep. Yeah. We were just asking about you. In some gloom. Yeah, we're flying along a river. East or west? South. If you fly into a mountain, I will probably too. Don't follow me because I did twice already. Watch out for that tree. So what exactly is the weather here right now? I can't tell if it's just foggy, raining, snowing. I think we're in the middle of a cloud. Ugly. Bad. Terrible. A cloud? Okay, let's just say a weather system. You happy with that? Big cloud. Oh yeah, there's cars driving in this. Oh my god. What, in the river? Yeah. Oh, I Oh, see yeah. a bus. There's a damn bus there. It's a water bus. We are about Well, to we have drop. Airbuses. We're about to drop into a valley, so get ready for rapid descent. I just can't see any of your nameplates. Reload the server. Go West I Europe can back. see Unreal. Oh. There's only so many that show up at once. Yeah, because very low. we're also pretty low as well, so Yeah, Could be in a different valley. Yeah, we are fairly tight to the ground here.
I wonder if somebody's going to take a plane and drive it around the world, like on roads. Oh, that just sounds like so much fun. Sign me up. A plane? A plane. So in this game, you drive it on roads around the world, and when you hit like, the ocean, you obviously have to fly, but pretend you're on a boat or something. So go from port to port. Next With event. the icon, then you can Next event. you can drive on the water. Yeah, that is pretty cool. Oh, yeah. I've done that a bit. Icon can't steer in the water though, can it? Not well. It's got a water rudder. Yeah, it's not bad. Yeah, but it you doesn't know? work. Okay. Yeah, you Does. Well, if you're on the water for 2 months, you're not gonna steer much. You may need unlimited fuel, yeah. And zero wind. I took the Icon jet skiing around Venice, and I was doing like 70, 80 knots and doing power slides around the corners and stuff. It was awesome. Are you guys Yeah. turning into snowballs too? Sorry? Are you building eyes on your plane? No, Oh, yeah, 'cause I am. I've still got DI set to high. It's hard to track this river, isn't it? Jeez. Feels a little bit more like DCS than Microsoft at the moment. Well, we can't see anything. DCS doesn't have weather like this. No, but you end up having to do high G turns at 0 feet to try and catch the bloke in front, which is how it feels at the moment. That's fair. I've never played DCS, but I've seen people playing it. Yeah, it's cool. Hey, you missed something. Okay. We have got a bit more visibility. I'm not sure if you've noticed this, but Yeah, I got it clear as well. Cleared up real nice for me. I think we've probably got about 500 feet worth of visibility below us now. So Yeah, it is a little better there. in fact, I think the horizon is starting to open up in front of us. Yeah. It's going to do that for a little bit, and then it's going to close back down. Oh, and we've got a beautiful sunset off to our right. Oh, clear skies. Woohoo. Now it's really opened up for me. Yeah. It is shockingly beautiful. Let's see the external view. Nice. GPU at 100%, I think so. What is it? Yep, GPU at 100%. In fact, it's so good. I think I'm just gonna trim out to 1800 feet. And set myself a heading. Missed. Oh. Did he crash? Is it live?
Well, it was a bit of tough flying, but we've made it. At least it's going to close in when we land, but like for now, it's okay. It's very nice now. Have a look what the. So we're going to be touching down in 14 miles, which is before the weather gets bad. So actually, we're going to get relatively clear weather when we touch down, but then we're going to be in garbage weather again. बड़ी मेहनत हो गई यार ये वाली फ्लाइट तो. Wow, whoops. I hit autopilot and it banked me really hard to the left, rolled me over, and crashed me to the ground just now. That's exactly what happened to me. Like, violently crashed me to the ground. Mother Russia friends, this is what happens. You fly manually. I'm going to dial back de-ice to normal. In fact, I'm going to set de-ice to off, try and save some fluids. Yeah, I'm turning it off until we get back into the actual clouds. The leading edge on this plane has got lots of tiny little holes punched in it, and that's where the de-icing fluid comes out of. And it's some sort of alcohol-based fluid. There's 80 holes per square inch, lots of tiny little perforations almost. And the fluid obviously picks up the wind and just gets blown or like pushed back over the surface of the wing, and it melts all the ice. Okay. Hold. Hold flight level, hold. I think this cloud formation is moving with us. I guess it's got a 6-knot wind blowing it. Sorry? After I lost you, I had meant to crash the desktop, but back in now. Ah, cool. Okay, maybe it's not going to be clear by the time we get to the runway. It looks like it's just inside this wall of hell. ठीक है भाई, आने वाला है फिर से वेदर. Yeah. I think it is just inside. वो पीछे का कुछ रेंडर हुआ है अभी एकदम से. Nice. Runway 3 or 2-1? 3.
Oof. Speed 40%. Hmm. 30%. Dropping flaps, dropping landing gear, throttling up to 40%. Down. Autopilot off. Okay, checklist. Undercarriage, flaps, engine. Stability, negative. Emergency plan for lack of visibility. Bible, check. Coca-Cola, stoned. Yeah, that stuff will explode if we crash. I think it's okay. I think we've got a couple of 100 feet of visibility. I think we can do this. Goodbye to child and wife. Check. It's completely clear for me at the airport for some reason. I think the Russians have got a cloaking device on the airfield. Cloud, the other side of the river for me now. What's the What time? time? It should be 1602 or 602. 1602 local, 0602 UTC. My time jumped an hour forward again. It's weird. Stall warning. Make it up as you go along, mate. I don't have a stall warning. I'm not struggling to fly this over treetops. I'm down. I almost thought I was going to overfly the runway and was about to shove my nose down when I realised it was an optical illusion of the trees. Here we are, backing off. Oh! 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 Good. That is not good. Oh my god, that's got to cause damage. That was a fair bit before the runway. Yeah, I throttled off and I just fell out the sky. Just even though I was still in glide speed. Well, that happens if you're close to stall. Did you hit the tree? Yeah, I saw no. I saw the angle when you let off the throttle, and I was like, I don't know, but I'll trust him. And then you were like, kapow! And I was like, Jesus Christ! Well, it stopped my blades from spinning though. Yeah. You had a prop strike? Full damage too. Let's. Oh, fuel low. Oh, did I run out of fuel? No, I didn't. Okay. Let's turn on the fuel pumps. Let's see if I can start the engines. Are we back taxiing? Yeah. Yeah, we'll take off on the same runway we just landed. Is there fuel here? Oh. Yeah, there is. Right by the runway where we landed. My engines won't start. Oh, it's probably because I've got low volts. Because I've turned the pumps off. Let's turn those pumps off. Okay, pitot heat off. AV master off. Oh no! Continue. Okay. Okay, there we go. How did you manage it? I had to reduce my power draw, so I had to turn off the AV master, the pitot heat, fuel pumps, and then I was able to get enough juice for the starter motor. See the fuel pumps.
So it's between the two seats where you'd plug your seatbelt into. There's an aux pump. How much fuel are you putting in, Footy? Yeah, that's a good point. I need to get to the. There's no point using the aux pump, so I'm going to refuel here. So I need to get to the refueling spot. How much RPM will it build, like on just little bit on? A lot of private jets here, aren't there? Right. How far have we got left to go? Oh, my VFR map closed. Nice. 61 miles to the next airport. What did you turn off? Sorry? Hello. What did you turn off? To whoever is I watching the turned stream. off AV Master, Pitot How you heat, doing? and the auxiliary pumps. Are you struggling to start your engines? Yes. Let's have a look. We need to have de-icing now. Turn off the right engine master. And try and turn over the left engine by hitting the big silver button. You gotta hold it. No? Try turning on the fuel pump. I don't know. Yeah, why maybe I'm we just have getting- less. Oh, it's USS, Maybe have not less volts. US. I'm gonna go up to 50% fuel. Turn off the fuel pump. Inside your cockpit. We don't have. Can you hide the flight plan thing? Or the alerts? Turn off the alerts. Yeah. Maybe you just have to do a Control-E. What's he having issues with? Seems to have to reload. Have you tried a Control-E? Yeah, doesn't work. Oh man. What's your screen? Got it. Sleep mode. Nice. Right, let's push back, get back on the runway. How is your push back so fast? I turned off my parking brake. Whenever I use pushback, it goes like so slow. It's ridiculous. Even with the handbrake off, before you ask. Hey, look at my front wheel. I push back. Oh, I won't push back again now. Oh, it's calling the man, isn't it? Shift speed. Yeah, but the man's coming over.
Right, I'm just gonna ignore the man and get out of here. My wheel looked like it was flat. So it's okay at this view. Oh, maybe it's just optical illusion. Okay, taking off on runway 3. We're going to be departing straight out. Oh, jeez. Sorry. To be fair, I'm surprised I didn't crash when I touched down at this runway. I had to do it with the dark because for some reason I jumped an hour forward again. Oh no. What's the correct time? It is 14. 0612 UTC. Right, here we go. Funny, This that's looks awesome. exactly an hour later than it was just a few minutes ago. 612 or 512? Hold on, let me go into. Oh, have we crossed it? It's 5:12. Oh. So at the start of the flight, there was a 10-hour difference between local and UTC, and now there's an 11-hour difference because we've flown across a Time zone. time zone. Yeah, so, okay. Local time has changed, therefore I was giving you the wrong UTC time. So it is 0512 UTC, sorry. My bad. I do, however, what's our current airport here? Uniform Sierra Indigo November. Okay, awesome. I just need to plot in my next airport because when I turned off my AV master to get the power to start my engines, it took out my my doodad. Yes. So Uniform Hotel. Down the brightness on displays. Not in this plane, I'm afraid. Yeah. That's Uniform Hotel Maria Sanchez. Come on, you're gonna fly. Okay. You're gonna fly so high in the sky. We're sticking to a nav line. No. I just want to have something telling me lucky on the direction. There we go. For the Sanchez Airport. Right. Boom. Let's get back outside the plane. Let's spool up. Everybody, please. Let's hope my plane still has working undercarriage after what I just did to it. Airliners, go. This is our last chance to have a can of Coke. Yeah. Can, not a line. Somebody say line of Coke. Everyone else? In 5, 4, 3, 2, 1. What? Go, go, go. You right there, bro? You gonna share? I'm so glad that's not being streamed on Twitch. This is why I don't stream Discord audio. Well, with what gets actually streamed on Twitch at times. What actually gets displayed on Discord in some places. What's going on there? It's trying to dip me down.
Pushed down pretty hard as well, just a second ago. Lindbergh, your gears are still down. Everybody I just make pulled sure them your up. flaps are up and your gear is up. Let's go. Oh yeah. Hello. It's actually quite cool because now all the clouds aren't quite at the ground and they're all turning orange. Oh, the sun behind us. Nice. The river is white. It's iced over. It's not technically a river at this point, is it? Isn't it a glacier? I don't know. No, there's a bridge there. No, but what's the difference between a glacier and a frozen river, like which is frozen solid? Is the river big enough, even if it was frozen to the bottom, to flow? Big rivers, I guess. A glacier is flowing ice. Yeah, I think it Revolved literally from comes down convection snow. to the fact that the erosion from a glacier happens from ice, and the erosion from a river happens from water. Yes, it is. How did I word that? How do I word that better? So, are you arguably saying that a frozen river, even if it's frozen solid, unless it is actively moving up or down the landscape, it is not flowing ice. It is just solid water. I think yeah. I think that's yeah. Did you say the glacier was compacted snow? Sometimes. So it's ice from compacted snow rather than a frozen river. Yeah, glacier is never frozen water, or does not come from frozen water. Huh? How did I say it? It's snow, which is compacting. Which is frozen water on little. Yes, but not in the same way. It's hardened steam. Hardened steam, yes. Hardened steam. So you're taking water from phase 0 to phase 2. Well, if they were frozen year on, they wouldn't be disappearing, would they? Ooh, got him. Wait, glaciers disappear? Okay, so Only recently. Oh. So here we go. So a frozen river does not become a glacier. A glacier can become a river when obviously it melts. I think this is a chicken and egg question. But I think because of the way that a riverbed is formed, and if you was to put water in there and then freeze the water, it's got too many points in which it's locked into. Whereas if you compress lots of snow and ice on top of each other, this is how you get avalanches. You essentially get layers that could slide on top of other layers. Yeah. But a frozen river wouldn't be able to do that because it's not layered. It is just a solid block of ice. Avalanche, is it a fallen glacier? Sorry? An avalanche, is it the same thing like the glacier is falling? Well, the avalanche is layers of snow sliding over other layers of snow. And that's essentially how a glacier
moves, apart from the glacier is much thicker. So instead of just sliding down, at 100 miles an hour, it slowly creeps down because it's connected to all the stuff behind it and it's slowly pulling. And usually glaciers are not quite so steep, but I guess they can be in certain areas. Sure, that's not fake news. It could be. It could be. How dare you? Easy trigger. Next, you'll be pining for the fjords. The tremendous weight and pressure of ice on top of, say, 20 or 30 meters of compacted snow and ice deforms the ice at the bottom and actually causes it sometimes to melt because it's producing heat under pressure. When does a bush become a tree? Oh, come on, bitch. just no. God, someone's PvPing me. Damn it. What speed are you flying at? I'm going 175 and I can't catch up to you guys. Okay, I'm gonna fly this thing to bits. I'm gonna fly this thing to bits, and I was doing 174 at 70% throttle, but I've just backed off to 55% throttle to give you a chance. In fact, if I dial in my heading 350, I tell it to preserve my altitude of 170. now I hear an airliner. Yeah, there's a A320 above us. Crazy chickens playing us a visit. Nothing up over here. I appreciate all members who can't come to the event. It's just I wish some would bring different planes. We have to understand that some people find it harder to adapt. So, flying a single plane all the time is all they can manage, which is perfectly fine. We're not here to judge anyone. Except for when you have anime profiles. Lol. If you have anime profiles, you will be judged. Unless you're a mod. If you're a mod, then you judge people. Some people you just can't reach. What we have here is failure to communicate. I don't like it no better than you. Some people you just can't reach. So you have here what we had last night. What the heck are you saying? You don't know this quote? What's going on? It's probably one of the most famous quotes in movie. In movie? What we have here is failure to communicate. I don't like it no better than you. Some people you just can't reach. So we have what we had here last night, which is the way the man wants it. It's the Sheriff Model 2. Well, he gets it. Well, he gets it. Don't eat too many boiled eggs, man. It's also used as the beginning to Guns N' Roses Civil War. It's the movie's Cool Hand Luke. Is it Robert Redford? No, it's, Paul Newman and James Dean, isn't it? Or eats 50 hard-boiled eggs, right? Yes. They killed Lou. They made him run too hard. Shaking the tree, boss. Shaking the tree. I haven't seen that movie in a long time. I haven't Good seen news. it since I've been in the States on AMC channel. I've got some good news. I believe it's on Netflix right now, Cool Hand Luke. I have just read that flu has been almost completely wiped out this winter.
Really? I wondered if you would be. I wonder why. Probably because all flu is now being called COVID. No. If you can't catch COVID, you can't catch flu. Ah. And because of everyone in lockdown, I mean, we're not spreading it, and a lot of people who would have been susceptible to it have already succumbed to COVID. Or hidden. They also vaccinated a lot more. Survival of the fittest. Yeah, it's. I mean, if the outcome for this is we actually get rid of COVID and flu, that'd be pretty awesome. That would be a result. That actually might not be a great thing. Oh, because then it's going to make us unimmune for some other future super virus. No, that Yeah, maybe. I don't know. means us be more taxing on the environment. There's like several different strains of flu, though, and I feel like, we might have eliminated one. I don't. It changes every year. That's why they make you get the shot, or try to get you to get the shot every year, because It seems dubious that we've beaten all of the strains of the flu. There's a lot of them. Many of those strains Well, are to do with more variants of the 1918 pandemic strain. So in a sense, we're kind of still living in the era of the 1918 flu pandemic with their descendants. That's the Spanish flu. Right. Interesting. All the NH That's just a paper that I stumbled on once. 1990. I'm good. I drank from the garden hose as a kid while I played outside, and I'm immune. Yeah, we did. We all, I hope. That's why none of us and I smoke bud. So there's this funny. Do you drink? Meme. Get. I do drink. Do you smoke? Get. I do. Right. Those lyrics that you wrote. We're re-entering purple. We are re-entering purple, yes. Actually, if you look, the purple is on the high ground either side of a river, and the river path takes us through this zigzag of red zone, which is where we are now. I see it. Beautiful. So I think the altitude keeps us a little safe of that denser cloud. I'm hoping so, anyway. Here's a suggestion, Crazy Chicken. Why not reduce your sim rate so that you don't have to run your engines at Toga? Because all I've got is a squealing noise in my ears. If you do that, then you don't have to create a squeal anymore. No, they're not. They're 40%. I'm just telling you what I'm hearing. It's like, oh wow, that cloud in the sun, stunning. I don't know about stunning. I just see orange soup in front of me. No, to our right from behind, it's just lit up all the clouds with this beautiful orange. Noise. Okay. No. Black to the 2 o'clock. Now it's more like 5 o'clock. Yeah. As we've flown past, that mountain's kind of blocking it now. It was beautiful back there. I'm probably going to turn on my de-icer now because, yeah. You want to fall down to this ground? Because reasons. I don't want to have too much ice. And looks like the weather may be closing in a little bit. Look. That's what I'm talking about. Oh my god, it's like It is pitch black. Yep. that's like scary. What the hell? Black in front of us. I can see shit. We went from heaven to hell, boys. Heaven to hell. I don't know, this flight has not been particularly picturesque, has it? So what about I feel like clouds. Yeah.
Well, besides flying around with the angry swarm of bees. Well, all I can God, say, it just turned black. is, we knew we were going to be in Siberia, so Siberia in the winter is going to be a bit garbage sometimes. That went from orange to black so quickly. Yeah. Terminus knocked. Dude, how is he not in? And back to orange. Okay. If you're flying directly over the river, gives you a little bit of orientation. What? I have no sense for where the ground is except for from my synthetic vision. I can see the ground clearly at this altitude. I see black. I cannot. I see people's. But he's seeing different weather lights. than us. I can see like trees directly here and down. there, but like, that's it. But What's he your has local orange time? game right now. Yeah, you have totally different weather again. The black part here at the right is a mountain. Yeah. Oh, it's getting black now. Raindrop. Nope. It's gone very black. There comes your black. I know I'm streaming live, aren't I? Are you guys showing local time on your PFD as 1632? Yeah. Hey, firm. Affirm, and I am all black. I see all I see is name tags. That's all I'm following at this point. Wow. Maybe you've all got AMD graphics cards. Oof. I have NVIDIA. Well, my landing lights are doing a great job lighting up the ground. And you guys are... I see your landing lights, but I don't see no ground. I can see the ground now, just barely. Look at Crazy Chicken. He's being lit up by all of us. All of our lights are shining off the top of his aircraft. That's awesome. Okay, he's in similar. No, it's not anymore. He's not underneath us. This is so dark. This is crazy. Well, I'm assuming you got nameplates on so you can follow me, yeah? If you're the right side of the mountain. Well, I'm not racing. I'm just doing 150 that's knots. Oh, it's not so. Oh, it's light. Oh, nice. Maybe We we're have in the shadow. lights. Lane had turned red. Might have been in the shadow of a Yeah, mountain. the maybe. black has turned red with the purples in the middle. I'm just flying in Garmin. Welcome to Microsoft Color Simulator. Nice. This is the RGB gaming area of the world. I just witnessed an A320 completely murder foot. And all colors comes from the cloud. And we're back in black again. I like that song. Some Amy things here. Yeah, I heard the comment in my head. What's that low tone beeping I get sometimes from my aircraft? That's the shoculator? What's that? Does it say 50 feet, 30 feet? Sync rate. It does not, thank God. Sync rate. Sync rate. Do we have a warning? Yeah, actually, everybody, check your fuel to make sure on your MFD, bottom left corner, make sure that your fuel isn't about to run out because you might need to turn on your auxiliary pumps. Finding them in the dark. I grabbed fuel at the last station. I got 97. That's why I'm so heavy. Ah, I'm at 44. Currently at 29.95 at 1500 feet. Tempted to try and descend a bit more.
Okay. Yeah, I'm gonna try 1400. Scream, don't follow me down. I'm at 1400. What you talking about? Are you at 2995? Press B. I'm at the whatever the current. Ooh, how far? How far we gonna go down? So be very careful up here. The side of a river is actually higher than 1400 feet. I've lost foot, anyways. See the light. See the light. See the light. See the light. Go into it. No, it's not that kind of light. It's the good kind of light. We are It's the going light to you have. say hello to your friends. When you're flying at this altitude above a sunken river, you don't want to see the river terrain glitch where the water level pops up, do you? Oh, that. Yeah, like in the Grand Canyon. No, don't want that. Please be there are no spikes. Yeah. What are those spikes that they seem to show up mid-range and then disappear as you get to them? Yeah, that's water. But not yet. We are going to have beautiful print shots to post. Sorry? I think all of print shot will be amazing. I'm following Commander Keen, V-Sync, and Lieutenant Colonel Penguin. Skydive, man, I see that. I don't see no foot. He's right in front of me. I'm hoping I'm with that anyway. Yeah. Could be anyone. I can see Steve Solo, the Colonel, the Penguin, Sealind, Ryo, Nico, Yoda. Yoda's right behind me. I'm having to take great care of this navigation not to kill us all. You realise that? It's really quite. From my side, you guys are kind of following me, but from my side, this is really tough. Yeah, at the moment, we're on the reciprocal course. Is that a problem? On what? Reciprocal course. We're going the wrong direction. Yeah, so we're staying low near the river, and if you look, the river's about to bend to go north, then south again, and then it wiggles north. Okay. It literally goes past the airport, doesn't it? Yes. And black again. Welcome back. Too black, Hope I'm bro, not the too only one black. flying manual right now. Nope. I mean, I will be eventually. I'm on my descent, but I'm using approach mode. I'm manually changing my heading, but letting autopilot fly the plane. No wonder you're flying so smooth. So that's usually what I do. Yeah, I need to be close to the ground, but I don't trust myself to do turns and not fluctuate my altitude enough. So you know how you're having issues with the 10-degree increments and 1,000-degree increment thing on the Airbus with your panel? It only happens very occasionally. Well, what I noticed that makes it stop happening, or it happen even less, is when you're actually in the cockpit, you have to click heading select mode, altitude select mode. You have to activate those on the panel with your mouse, and then they work. Okay. Yeah, it's pushing the dial in and pulling the dial out. Yep, but I mean, I'm talking. Him and I have the same flight panel that controls our autopilot. But if we use just the flight panel buttons on the Airbus, it won't recognize heading mode as heading select mode. Right, because you then have to, after you dial it to, you have to either push the tab up or pull the tab out.
Yes. That's what it does in real life. But if you click the tab down to engage the selected mode before you do anything, the flight panel will automatically take care of everything after that. Like, we have external flight panels. Oh, okay. We got the Logitech flight panels that we're talking about. Food is descending to 1300. Okay. My wife was going to get me a RTX 3060 Ti for Christmas, but there was no stock, so I got a £80 autopilot panel instead. I'm still waiting for my. There's going to be a shortage of RTXs all the way until the fall time. It's going to be a shortage until the 40 series comes out, to be fair. Still going to be a shortage. I don't know how I did it. I just went online and there was one. I mean, they're going to be a little bit easier to get in about 6 months, at least at a reasonable price. Well, I heard yesterday by one of the tech news channels that Intel has just signed a supply order for the 3 nanometer technology coming from TSMC, which might gazump the AMD's stock of 3 nanometer chips, and they still plan on building their own chips as well, but we could be seeing Intel leapfrog from 14 nanometer plus to 3 nanometer, which could have a huge impact. So yeah, watch this space. Tail end of second half of 2022, and we could be seeing 3 nanometer coming out of Intel. I also read something on it, I forget which tech it was about Intel, but soon we're going to be able to order our graphics card direct from the factory, and they'll be tracking it like 1 per IP address or some shit like that. Wow. Hey, I can see trees. Can you guys? No. At You 13. can see him a little bit. Very vague. Yeah, but since everybody wants to do some business with TSMC, there will be a shortage for a long time. Yeah, well, I think Intel getting in there early might really damage Nvidia, and hey, maybe it's Intel going to TSMC to get their GPUs made, because Intel's like about to release gaming GPUs and stuff. It might be nothing to do with their processors at all. Well, I mean, worst case scenario. NVIDIA's technology is almost at the very end of its development cycle. They really need to get a whole different setup. I know Nvidia and AMD are both looking at more modular cards. Oh yeah, that new Threadripper they just released though too. Ooh, I want it so bad. Well, since There's the some Intel older Threadrippers that are now becoming available from used stock. Right. I think I read something about the Intel retired architect in shipping architect. Well, Intel's brought an architect out of retirement. Yeah. Yeah, they're but old one. Yeah, there's retirement. I mean, Pat Yep. Gelsinger, which was head of construction. No, he is now CEO, but he worked in the good times of Intel there, and did The a golden few of the days. good things. The golden era of Intel. Yeah. To be Back there fair, at the Core 2. He Core was 2. CTO and now he is CEO. Yeah. to be fair, I know Intel's had a lot of security bugs that have caused them to patch stuff and update the microcode that's hurt performance. But part of me thinks, like, especially with the gaming community, just give people the choice and be like, hey, you can disable this and get an extra 15% performance. You know,
Oh, Are shit. we, are we I have no idea flying where into I a am. I have mountain? no idea where I am. I'm about to very crash. dark. Terrain. Well, up. Oh, yes! I made it. That was a really sharp corner. Sky, you with us? I have no idea where you guys are. I had to pull up a void and System. So if you look on a VFR map, we've just turned around the river and we're heading south again. see you now. Stole my slot, Steve. Okay, you go ahead. I'll take That's that. getting closer. It's a bit fried. I might lose him. I just didn't trust him around that corner. Yes. Did I make the corner without touching the stick? If you go in there, Sky, I'll go left echelon on you. Altitude है इसका 1300 ठीक है भाई 1300 feet. Yeah, hopefully. As of this year, I'm going to massively reduce my monthly outgoings. So it's going to be slashed in May, and it's also going to get slashed in September. Nice. So maybe I can start thinking about getting some new computer parts. Yes, you were very helpful with that. I We think, spent a good 3.5 hours last night. yeah, my wife was not happy at what time I went to bed. Tell her I'm sorry. I think I actually crawled into bed at 4:30 a.m. Oh my gosh. Did she give you a nice tap on the jaw for that? No, she was actually she was quite understanding this morning and let me sleep until 11. And then I came down and I tried to help out as much as I could with our son. You got yourself a good wife, man. Well, sometimes she explodes for no reason, but a lot of the time it's great. Women. That's just women. I think I give her enough reasons, and she kind of lets them build up. And I think she's forgotten about them, and then one day she's just like, "Nah, that's it. I need to say something." ठीक है भाई. It's going to be an interesting landing at this next airport. I'm confused at which airport we're going to. We're heading to Uniform Hotel Micah Sierra, but because of the bad weather, I'm not wanting to climb too high, so I'm actually following the river. Oh, okay. Yeah. Yo, on the left-hand side, that's a pretty sharp hill. Yeah, Between me yeah. and you guys, I can't see you. We're quite low, I think, is the main issue. Yeah, we were at 900 feet at one point in time. No, I haven't descended below 1,300 yet. This plane could do with a radar altimeter the way we're flying. That would be nice. I don't think it's meant to be flown this way. मजे हो रहे हैं यहाँ पे अलग ही On जगह. final. Oh, you've made it already? Yeah, and it's not any better over here. So I can see the trees and snow below us. I'm not sure if there's enough headroom there to drop another 100 feet. Only one way to find out. I hear you. It's safe. Are you flying at 1,200 I at was the watching moment? American Made last night, and when they're out running the DEA. I'm flying at 1,180 feet. 1180. Yep. Okay, I am descending to 1,200 feet. Sharp turn coming up. Yep, I can see it. That's why I moved a little bit to the right so I can get an angle on it. Every time that jet's behind us, I'm just getting blinded. It's so bright. Yeah. That looks like the water might be slightly higher than it should be in front of us.
Good. Yep. That's just the edge of it, isn't it? That's it. That's a bridge with an obstruction underneath it. Yeah, actually, we're about to pass through a prohibited area. Is that a bridge? And it's prohibited airspace. Yeah, looks like it. Well, I'm climbing. This is real sketchy. I'm staying at 1400. I'm climbing. I don't know if there's a bridge there or not, but I'm not taking that chance. And it's a little bumpy here by the airport. I just went clear skies for a Flying second. in It's the a blind. cliff, so I wouldn't. Okay. You're gonna get some turbulence by the airport too, just to warn you. Never a tiny village. There's light Wow, on the look at ground. that. That's probably going to be the easiest place to land. What, is the street of the village? Mm-hmm. First time we saw streetlights in like a while. Looks like a Yeah. runway to me. Oh, that's fine. I don't see no airport marked on the map. It's a little bit north of the end of this valley. What was the name of that autopilot system you mentioned earlier, the panel thing? The Logitech Flight Panel Pro or something. I can send you a link to it after if you like. Pro, if you just go to if you go to Logitech.com and just go to their flight section, you'll find everything you need. I got the Find 80. it all sold out. I got the £80 one. You can find it on Amazon. You'll just pay like $20 more. Yeah, I got the £80 one. There's one on there for like 250, and it looks identical. So I don't know what the difference is. And it's a placeholder price. Oh, They don't have it. Oof. If you're so inclined as well, there's instructions online to make one with Arduinos and so on. Just buying your own switches. very nice. Yeah, I've built my yoke myself. It's all nice design for some 3D printed pedals. I might do. Copy of the 500 quid Thrustmaster ones. Whereabouts do you go for information about the Arduino stuff? Mobieflight.com. It's pretty easy. Do quite a bit with ESP, but I've never done Arduino before, but it couldn't be too much different. Oh, it's the same. People have done it all online, so you just have to wire it up and install software people have done. Oh, that's not too bad then. Not sure if you noticed, but since the last airport, we've been following this river. Our cruise altitude started at 1800, and we could just about see the tops of the trees. And we've had to keep dropping down. I'm now cruising at 1100, and I can just about see the tops of the trees. Yeah, the last airport we're landing on is at 637 feet. Nice. Touch the ground.
Skydive hit the ground. It looked like he did. I Was might that be awake. skydive? That must be someone else. And I saw somebody else on the ground. It was just a touch. How are 40 people enjoying doing this? It's new. This is not new. Look at the graphics. They're It amazing. is. When did I pick up this series? Just after Christmas, eh? Yeah, probably around that time. 26th, I guess? 27th? Yeah, something like that. I started it at the start of October. Oi, this weather over France right now is nasty. I got low cloud cover. You have no idea what low cloud cover is. I'm in the same boat with you guys right now. It's all the way up into France. I mean, they break it about 1,500 feet, but still. We're about 200 feet off the ground, and we can barely see the trees. If you look at my stream, you'll see how bad it is for us. I've never I found the road. Bad in the game. Yeah, there's a Oh, geez, it's like when I was flying in the hurricane a few months ago. It doesn't help that the sky is white and the ground is white and Yeah. And there's no light on any of it. The road on the left has lights. Almost guarantee the runway won't have. No lights on the runway. You know me so well already. Yeah. I'm so close to these trees, I can barely see them. Navigation through valley in Siberia in minus 32 degree temperatures. Landing lights required in normal flight. Actually, the road leads directly to the airport, so I will follow the lights of the road. You trust the road more than Footy. I think I've done pretty well keeping you guys safe through here, haven't I? Yeah, only touched the ground a few times. We're alright. Without the landing gear, by the way. He had an itch on his belly. Leave him alone. Landing gear is fundamentally optional. It's not really. What's your throttle setting, Footy? Because I think constantly faster or slower than you. I was 50%, but I'm just dialing it up now because we're about to hit a more open area. So I've just pushed up to 70%. Okay. Oh, I love this road. It's fun to follow, actually. Speed is 160. Cool. Low fuel. Nice. Turn on your auxiliary pumps. I did, and I did that like 15 minutes ago, and it's still popped up. It's weird. Maybe your auxiliary tanks are empty. Yeah. That's not good. Go to your control settings and set a control binding for repair and refuel. Too much work. We'll just wing it. If you want to check, you can click on the fuel menu and you can see how much is left in your aux tanks. Yeah, let's see. Because when you empty your aux tanks, you get an error that they're empty, just to let you know, until you switch your... I have about 10 gallons for each one. Have you turned... There's two switches to pump the fuel from your aux. You've got to press them both. Yes, I did. Well, in 15 minutes they should have emptied. Huh.
क्या ही नशा चल रहा है, क्या ही नशा चल रहा है भाई, क्या ही नशा चल रहा है. Oh, don't tell me I could lower this brightness. Hold on. Are you turning on the fuel pumps or the aux pumps? I did both. Okay, so you don't want to turn on the fuel pumps because, yeah, just don't do that. Okay. I'll turn those off now. They were already on though. I didn't actually turn them on. They were Okay. like just already on by default, so I should turn those off. Yeah, and if you look down to the right-hand side of you, behind the pitch trim wheel, behind the fuel crossover feed controls, there's two black switches. I'm showing on my screen at the moment, and you've got to put those both to on. Okay. So, Footy, I also got a lead on a Logitech. Apparently, they're re-releasing the flight panel, or autopilot one, and the knob is going to be a dual knob like on the radio panel. Ah. So for 1,000 feet and 100 feet, or by 10 and by 1. Thank God. They should have done that to begin with. That's annoying, because I've already bought one. Well, I've already bought one too, but this is designs whatever. Wait a second. It's on the one that they were selling this fall. It's that way. It looks like it's two knobs, but they're not separated. No, it describes it in the description. I know Sorry, that you much. need to come down. I have it sitting right in front of me right now. It's not separated knobs. Come down, Czar. Scheiße. Only the radio panel has the separated knobs. Did somebody say he was down? No, he's low fuel guy is out. Oh no. Didn't you find the fuel button in time? I told you to hit Control Shift F, man. It's like so Tony now. Not too bad, Czar. So I'm looking to join late. Whereabouts are you guys? We are about 12 miles out from Uniform Hotel Micah Sierra, which is going to be the final airport. Siberia, almost certainly. In the middle of a bowl of pea soup. Oh wow. With the lights off. I'd like to add that it's pitch black. We're flying 100 feet off the ground, and we can't see the ground. Occasionally you see a tree fly past, and sometimes it's high. An eye level. I don't like it when I can see the ground at the moment. I see. Follow the road. It's so easy. Yeah. Yeah, we just What fucking road? The one that's on your left. Over here. That's a road? Yep. We just lost the street lights. If it has street lights, then it's a road, yes. So you guys are flying Russian flight rules then? Czar, come over here. Stolishная. RFR. That's right. This is sketch, Another number. 970 feet. No Russian. You know you're in trouble when you're sitting there on autopilot, and about every 20 seconds it says 50 feet. I just scrape the trees. Why are you sitting Hey, on autopilot? I'm on autopilot. Let the guy rest. It would be no fun if I had to actually fly this myself in the pitch black. I think it makes the experience more fun. More No, fun. I'm the trailblazer. I'm finding a safe route for you guys to then know that you're safe if you follow me, because I'm not dead yet. But those people that are right on your tail, I mean, they won't have enough time to react, and they'll be dead Oh, with you. They would. I But mean, not we still see skydiving, it coming. but like people further back, there's a lot of people who are plenty of time. Okay, would anybody like the ILS frequency for this airport? Now we're I gonna think take the we just visual. want to land at this point. It's 66.6. Okay, the road ended.
So you were preaching about your road for so long. We're following something that's easy to follow. It's called a river. Yeah, it is. Every time one light disappears, another one appears in the far distance. Yeah, there's little And cars just- on there. Probably Well, a this lot is more amazing. cars that are actually on this road in real life. This river is actually going to set us up on a perfect final. Kind of midair with the other Massive. Okay, I'm slowing down, guys. I'm reducing throttle. Oof. Airport in the distance. Okay, I am dropping flaps 1 and landing gear. There is some turbulence, so be careful. Runway is at about just off to our right. I'm going to throttle up a bit. I'm going a bit too slow. Monster, you already landed, or? Yeah, I'm at the end of the runway, kind of trying to help it line it up. Nice. I'm gonna do a Garming landing. That's how I did it. Is this on graph? 600 feet. Oh, so we should be 1600 really then. Sure. Okay, where's the airport? Monster, can you just validate the altitude for me? 573 feet? No, 673. 673 at what pressure? Yep, Okay, game showed me wants it to be around. I ran out of fuel. Yay! Good timing. 2 miles away from the airport, yeah. Oh, that's miserable. 29.94 my Have you turned on your speaker alt? stuff. I did, and it didn't work. So I am now upside down on the ground somewhere in Russia. We'll send out a search party. we'll, Look out for the wolves. we'll call them Dancing on Ice. Second stage flaps. Reducing speed. No flaps for We now. got Zara lighting up the runway to do. Reduce speed but no flaps. Increased rim. Increased rim. Maintain altitude. Yeah, aligned. I definitely did not cheat my way here. Ooh, good luck, everyone. What would the French say? Matt. Bon appetit fatal? What do you want to say in French? Happy fatality. Bonne chance! I'm down, it is down. The eagle is landed. Here we go. Don't forget your undercarriage, guys. Look at that, it's butter. Oh man, that was beautiful. Apparently, even though I put it down gently, 1,270 feet per minute. Call that a win. I think that was my smoothest landing yet. Nice. Probably because you were fully focused on it.
Wow. I went through like 20 trees, but Well, I think on this flight, I'm afraid, I slightly misjudged the timing, which is why it got so dark at the end. So, my apologies about that. Well, now we're It's been going. dark for the past hour. But it's okay. now we're It's going fun. east. We're sort of chasing the grey line, aren't we? We meet the grey line quicker. Yeah, I spawned in at each of the airports at the time I expected us to get here at the flights, and then calibrated the time so we'd still have some light, and then rolled that backwards. But of course, my flight length prediction for this was about 1 hour 50, and it was more like 3 hours. So, but part of that is because we were staying low and flying through the valleys because obviously cloud. And we could have just climbed above the cloud and just shot over here really quickly, but just wasn't in the mood for that. That's a good one. Oh, A little bit exhausting. yeah. Well, wasn't it? All my shoulders, my back, everything's hurting. Right, I'm out, guys. Thank you very much. Good night. Catch you later. Good night. Good night. Yeah, I gotta go as well. Video will be up as usual in about a few hours. Awesome. Thank you very much for coming, everybody. This is the end of the event. If you stuck with it till the end, then I would consider you a hardcore simmer, because not many people would do this for enjoyment. Yeah. So At least today's weather. yeah. Tomorrow is going to be a continuation from this airport. We will be taking out on leg 48, apparently the DA62. So if you are one of those hardcore simmers, remember your fuel levels so that you can put the appropriate fuel in the morning. And thanks for coming on the flight. Please post any great photos you have in response to the forum thread. And hope to see you tomorrow or next weekend. Just a reminder, there is no Pirates of the Caribbean on Wednesday, because this is now going to be February, and I agreed with my wife not to fly on Wednesdays anymore. So it'll be flights on Monday, Thursday, which are World Tours, Saturday for the final stage of Pirates of the Caribbean, and then on Sunday, back to World Tours, as per normal. So 4 events. Only one more chapter pilots left. Yep, this will be the final one coming up next Saturday, and then we will hopefully get the UK content, and I will be doing a UK tour, which hopefully I'll be able to add some value to. I might come up with something to do on Wednesday. I might collaborate something with you too and try to do one around the United States with you. Exactly what I was thinking. Excellent. Well, feel free to post on the forums and stuff, guys. And if you need an event channel setting up, just talk to the mods. They are super helpful. And thank you very much. I will be dropping down to the passenger lounge as per usual, answering any tech questions and just chatting and whatnot. So if you've got any questions, please feel free to jump down. And thank you very much. Thank you. Thank you very much. See you guys later. Bye bye. See you. Good night. Thanks, guys. Have a good night. Thanks, guys. Thanks for it. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Okay, did my engine die? I turned the fuel pump off. Ba-doom, 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 ba-doom. Especially guys with Xbox controllers, like thumbs are hurting me. Oh man. Yeah. Need to learn to use the autopilot more. Every time I use autopilot, I just can't stay with you guys. Like I'm always just banking off somewhere else. Oh man. I need to practice that more. I tell you something, the flight control panel has helped me with autopilot so much. What is that? Because let me share my screen. Alright. It's really like a radio panel, like a physical radio panel. Yeah. I think they call it a multi-panel, autopilot multi-panel. Okay. It's this thing here. Oh, okay. And basically, if I want to change my heading, I spin this selector down to heading, and then I just spin this silver knob here. Actually, my silver knob's a little bit different to this one, but I just spin the silver knob,
and that just this is the expensive one though. Oh Okay, man, so so how much do they usually cost? let me gaming keyboards flight. Here we go. Does yours say Zytec or Logitech on the bottom of it? I wonder if you have an original Zytec. I have a Logitech, but there's two Logitechs. There's an expensive one and a cheap one, and the difference is the button at the bottom here on the expensive one says CRS and mine says APR. Mine says Logitech, Zytech, multi-panel. Here we go. So, this is what mine looks like. Oh, yeah, okay. There we go. And those prices are ridiculous. I didn't pay that at all. Anyway, so ignoring the minor differences on whatever model I bought, maybe it's contraband. I just spin this dial here, and I can change my heading really rapidly, as you've seen. I can spin it for my altitude and everything else. And in fact, if you look in my cockpit, so you see here the blue marker is heading north, right? That's my heading. If I want to change it, I can just literally spin it around really, really quick. Instead Which means of me when I'm turning the dial, it takes like freaking forever. Yeah, and if I want to change my altitude, look, the current destination is 900 feet, but I can just crank that up to 10,000 in a couple of seconds. That's and awesome. It makes it's such a huge difference. It really is such a pain with the mouse wheel. It goes very slow. Yeah, it does. Sometimes I just drag, I forget about the mouse wheel, and it just takes forever. You know, on the altitude though, that there's two knobs, right? The little one is per 100 feet, and the big one is 1,000 feet. Oh, for this aircraft, I did not know that. Because it's Yeah. different on all aircraft, correct? Correct, yeah. The heading knob as well, if you mouse scroll fast, it does end up jumping 10 degrees at a time. Oh, okay. So if you do it really, really fast, then you can actually make it go pretty quick. But you don't have the accuracy. The problem I always face when doing that is, the plane's moving around, and my cursor will fall off it, and then it's just so annoying to keep having to do that. You know what I mean? Yeah, and then you're zooming in and out. My advice for that is to zoom in, because and then do it on the center of the knob. You don't have to make the icon change. It finally saved my ass. And but you're right, it's a pain. Having this little panel. I eventually want to get myself a flight stick and everything. It was already a big investment, buying Just this a damn game. computer. Oh yeah, computer. Well, and the sim itself and all the components of the sim are also expensive. Yeah, computer itself just to run this thing pretty good. $1,500 I spent for it. So this is what I bought. Look, but it says temporarily out of stock. But this cost me 80 quid. Oh, that's not bad. Hello, There's a radio panel here for 80, but now the new. Bye, good night. It doesn't say Cytec in it. It's just the